listen in to this conversation that Republic TV has had with Akhilesh Yadav. अखिलेश जी, मैनपुरी का ये बड़ा चुनाव है और क्या इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव नेताजी के ना रहने पर है। पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। जो विकास दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, सड़कों का, बिजली का या और तरह का, सब समाजवादी पार्टी और नेताजी का कराया हुआ है। इसलिए मैनपुरी की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, ज़रूर डिले कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हो सकता है ये ब्रीफिंग रही हो या किसने ब्रीफ किया हो कि जिसकी वजह से एक एक व्यक्ति जो वोटर है, जो वोट डालने आ रहा है, उसकी कई बार चेकिंग हो रही है। अगर इसी तरह चेकिंग होगी तो वोट कितना पड़ पाएगा? कई बूथों से ये शिकायतें आई हैं। पीसी में आपने कहा कि लोगों को रोका जा रहा वोट करने से, और प्रशासन जो आपके कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ा हुआ है, क्या शिकायतें मिली? अभी घिरोर में जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, गुप्ता जी, उन्हें पहली बार उठाया, फिर कहा गया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। जो व्यक्ति 70 साल का है उसे बार बार क्यों उठा रहे हैं आप? जहाँ पर शिकायतें आई थी, कुछ जगह ठीक हो गई, कुछ जगह अभी भी है इस तरह का कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, अगर बगल का बूथ देख के आइए, सेंटर फोर्स चेक कर रही है पहले आईडी, फिर अंदर चेक हो रहा है आईडी, फिर एक और चेक हो रहा है आईडी। अगर 3 बार आईडी चेक होगा तो वोटर अपना वोट कब डालेगा? तो आपको लगता है आईडी चेक नहीं होना चाहिए? नहीं, जो नियम है उसके तहत होना चाहिए। जिसका अधिकार है उसको चेक होना चाहिए। अच्छा, चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। या फिर इसकी देखिए, जो बेईमानी हो रही है रामपुर, वो सब देख रहे हैं कि जहां पुलिस प्रशासन की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए, निकले और पड़े, वहां कोशिश ये चल रही है कि वोट ना पड़ पाए। कर्फ्यू सा लगा दिया डेमोक्रेसी में। अगर आप वोट के दिन कर्फ्यू लगा दोगे तो आप डेमोक्रेसी को हिला रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। और ये जाना किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? एक आखिरी सवाल, नेताजी की विरासत है, एक तरफ उनके शिष्य कहे जाते हैं रघुराज शाक्य, और एक तरफ उनकी पुत्र वधू। देखिए, नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है समाजवादी विचारधारा जो हमको दी है। नेताजी ने जीवन भर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं के जो अपना पक्ष रखा और जहां ऊंचाई तक पहुंचाया लोगों को। मैं समझता हूं समाजवादी विचारधारा नेताजी यहाँ तक लेकर के आए हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल तक इस विचारधारा को और कैसे मजबूत किया जाए। चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अब आप क्या करेंगे आगे? धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को निगरानी रखनी चाहिए, और पूरी निगरानी इसलिए रखनी चाहिए कि जब सरकार और प्रशासन मिल जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पिछले उपचुनाव के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहते, इस उपचुनाव में क्या उम्मीद है? कई बार उपचुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, और पिछली बार भी बेईमानी हुई थी। मैं समझता हूँ इस बार वोटर बेईमानी से नहीं डर रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकले हैं। We are right now at Delhi's Karkardoma, where outside this hotel, that is the Ginger Hotel, a massive fire was reported at the 3rd floor of this very hotel at around 9:15 a.m. As you can see in the visuals, 11 fire tenders at that point of time were rushed to spot. Total chaos was witnessed. Right now, we do have some ambulances and some fire tenders. We are getting to learn that nobody so far has been injured in the fire, in the mishap that took place in this very hotel so far. However, the rescue operations right now are still underway. The people are telling us that the reason for why the fire broke out has not been known yet. However, the situation is now under control. Remember, it is to be noted that it is a hotel, and the fire was at 9:13 a.m. in the morning at the 3rd floor, and the 3rd floor is a banquet hall, so it is likely to be said that the fire took off from the kitchen. But however, nothing has been confirmed by official sources as well. We have few people here who were there at the rescue op. Sir, आप वहाँ पे थे जब आग लगी थी? हाँ जी। क्या सिनेरियो था वहाँ पे? क्या हो सकता है वहाँ पे? क्यों आग लगी थी? इसके बारे में तो पता नहीं। हम बगल वाले होटल से आए थे, जब हमें पता लगा आग लगी तो हम तुरंत आए। उसके बाद हमने अपना किया। कितना ज़्यादा फैल गई थी आग? आग तो पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। काफ़ी लोग गैस एक ही फ्लोर पे लगने की वजह से पूरे गैस फ्लोर पे भी धुआं हो गया, इस वजह से लग गई थी आग। एक ही फ्लोर पे लगी थी आग। लेकिन सारे लोग Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism,
And essentially the fact that, we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues, but the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism. And I think there was understanding from the German side in this regard. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned. Viewers, the second phase of polling is underway in Gujarat. The voter turnout has soared to 34.74% now. And a short while back, the Prime Minister had cast his vote in Ahmedabad. And he also said that everybody, whether it be men, women, everyone from the first-time voter to the senior citizen should come out and vote in large numbers. Here's a full story. At around 8:50 a.m., Prime Minister Narendra Modi's grand convoy left from Raj Bhavan in Gandhinagar. The convoy headed for Nishan Public School poll booth in Rani. Thousands lined up and cheered for the Prime Minister. Huge crowds were seen on both sides of the road outside PM's poll booth. And the cheers grew louder as the crowds caught the first glimpse of the Prime Minister's cavalcade arriving. Prime Minister Narendra Modi greeted the supporters and waved at the crowd. Prime Minister entered Nishan Public School and greeted the officials at the polling booth, stood in the queue to cast his vote. Shortly, PM Modi got his finger inked, participating in the festival of democracy. PM was welcomed by his brother and after spending some time with him, he stepped out.
and greeted the supporters who had been waiting for hours to get a glimpse of PM. Prime Minister Narendra Modi lauded the Election Commission and people of Gujarat. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। And as Gujarat counts down to December 8, Prime Minister has risen the temperatures in battleground Gujarat. The Modi factor is undeniable. Bureau Report, Republic TV. Viewers, Modi chants reverberate in Gujarat, but Congress politics is on. They're calling the Prime Minister's walk a violation. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Chair Visuals right now for Pakistan drone which has been shot down by the BSF in Amritsar, and this is not the first time Pakistan drones are being sent across the border again and again by Pakistan. And Gursimran is joining us live. Gursimran, now one more case of a drone being shot down by the BSF in Amritsar, and our forces acting fast once again to make sure a Pakistani drone which is being sent across the border is shot down and stopped in its tracks. भाई आवाज नहीं आ रही। Goswami, can you hear me?
Goswami, if you can hear me, I'll just repeat my question to you. All our viewers can see the Pakistan drone which has been shot down with the BSF, and the drone is clearly on our screens. Not the first time Pakistan has sent drones. Multiple times this year Pakistan has sent drones across the border, Goswami. Yes, this is another such attempt of Pakistani side to push in drones into the Indian territory, and this quadcopter has been brought down by the BSF. It is in the Amritsar sector where this Pakistani drone has been brought down. And what we are getting to know that late last night, this drone tried to enter the Indian territory in the Rodawali Kala area that falls in the Amritsar sector of international border, and the BSF troops fired at this Pakistani drone. And later, when the searches were carried out in the area, they recovered a quadcopter drone with one packet of heroin. See, this is not a small packet of heroin. This seems to be a huge consignment of narcotics that was being pushed from Pakistan to Indian territory along the international border using a drone. Yesterday, we also saw that in the Taran Taran, there was a Pakistan down in the Fazilka sector. So time and again, the Pakistani drones being brought down. Right. Well, Gursimran, hold on for a second. We're getting some more breaking updates coming in at this point of time. Now, the Supreme Court has gone ahead and taken cognizance of the drug menace. The Supreme Court has pulled up the Punjab government this time, viewers, asking what is the police doing about this. Supreme Court has also warned the Punjab government and says clearly, curb with the drug menace or the youth will be finished. Gursimran, we know for a while right now that the problem of drugs persists in Punjab. The Supreme Court, the Apex Court, taking note of that and clearly putting the message out right now. Why is the police not acting fast enough to curb the drug menace, Gursimran? Amandeep, can you hear me? I know Amandeep is joining us right now. Amandeep, Supreme Court making a very, very clear stance right now, asking the Punjab government, pulling out the Punjab government about drugs. Drug menace continues there in Punjab. Supreme Court taking note of it. Well, absolutely, Shivaji. The point is that Supreme Court has made certain kind of observation, quoting that every mohalla in the Punjab is having its own illegal bhatti. That is leading to making the illicit liquor. And in fact, now they have pulled up the Punjab government and seeking a report, a detailed report, in fact, on this. And even this is a very serious issue, just because Punjab is suffering from the drug menace since years. Not only now, since years, and they are reaching to no problem. Every second day, we are receiving the videos from several parts of the Punjab that people are hanging up after overdose of the drugs. And in fact, they are not in position in their own senses as well. And that all the videos, especially from the youth platforms, though Punjab police has also run a campaign against the drugs, but that was not fully materialized, and even the drug menace still is the issue in Punjab. So that is the reason. So now the Punjab government will file a detailed report that what all action is taking against those who are supplying the drugs and those who are consuming the drugs. And in fact, what is the present situation on the ground of Punjab regarding the drugs? Either they are able to de-escalate the issue, or the issue is still sustaining in the same ratio. So now the Supreme Court has directly intervened into the issue, and there is a tough situation for the Punjab government as well. Right. Yes, Shivangi. Amandeep, hold on for a second. I'm being joined right now by our executive editor, legal, joining us, Ridham. This is a very, very important point which has been raised by the Supreme Court. Well, absolutely. Today, the top court of the country comes down very, very clearly on what's been spoken about in the drug menace case. The Supreme Court has said stern remarks being made. Youth will be finished otherwise in Punjab. So the Justice Shah has also said every mohalla there is a bhatti. What is the local police doing? They've asked questions. They've also said this recovery of penalty is not the option. How many FIRs are filed? Why is there no charge sheet? Are those people even being charged? So the Supreme Court, taking very stern note of what's happening in the drug menace in the state of Punjab, makes these observations. The bench of Justice Ravi Kumar and Justice Shah hearing a matter over the Punjab drug menace.
Right. All right. Well, thank you so much, Vridha Bhardwaj, our executive editor, legal, for getting us all the top updates right now. Supreme Court has made a very, very big warning right now, saying that why had there been no charge sheet on drugs, pulling up the Punjab government on the drug menace which persists in Punjab. I think first we need to establish the facts very clearly. The European Union, between February 24th and 17th November, Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone Station. It's the final fight as voting is underway for the second phase of the Gujarat elections. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। Amid the Modi chants, PM casts his vote in Ahmedabad, lauds the Election Commission for conducting peaceful polls. Congress to complain to the Election Commission over Prime Minister's walk before his vote, calls it a road show and hence a violation. Home Minister Amit Shah, along with his family members, casts his vote in Ahmedabad, appeals to first-time voters to step out. It's a prestige battle in Uttar Pradesh's Mainpuri. The seat left vacant after Mulayam Singh Yadav's demise is what people are vying for. And viewers, catch the biggest and most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team starting 5 p.m.
Well, a very good afternoon, viewers. Second phase of polling is on right now. The voter turnout has soared from around 19% around 11 a.m. Now it is 34.74%. And Ankit is also joining us right now. Ankit, we have been seeing a lot of big political leaders today. We have seen Amit Shah voting today. We have seen PM Modi voting today as well. The Prime Minister urging everyone to come out and vote in large numbers, Ankit. And it's going to be a very, very significant election. The first phase we saw, which happened a few days ago. Now the second phase will also decide the political trajectory of a nation, as general elections are also coming very, very soon, Ankit. Yes, Shivangi, we are most certainly in the lead up. And I think what's helped in the phase 2 of the Gujarat elections is, like you mentioned, the senior leaders going out and voting. It doesn't get any bigger than the Prime Minister and the Home Minister on their home turf in the big cities in Gujarat, going out, voting, setting that example, and also the Prime Minister's mother going out and voting as well. It just tells people to go out and exercise their franchise. We've had a frenetic day of voting so far. There are about 3 hours to go before the polls close, and then we can bring you the exit poll. But let's take a look right now at what the various leaders have said and what they indicated as they went to the polls today, Shivangi. Right, so let's have a look at this report. At around 8:50 a.m., Prime Minister Narendra Modi's grand convoy left from Raj Bhavan in Gandhinagar. The convoy headed for Nishan Public School poll booth in Rani. Thousands lined up and cheered for the Prime Minister. Huge crowds were seen on both sides of the road outside PM's poll booth. And the cheers grew louder as the crowds caught the first glimpse of the Prime Minister's cavalcade arriving. Prime Minister Narendra Modi greeted the supporters and waved at the crowd. Prime Minister entered Nishan Public School and greeted the officials at the polling booth, stood in the queue to cast his vote. Shortly, PM Modi got his finger inked, participating in the festival of democracy. PM was welcomed by his brother, and after spending some time with him, he stepped out and greeted the supporters who had been waiting for hours to get a glimpse of PM. Prime Minister Narendra Modi lauded the Election Commission and people of Gujarat. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। And as Gujarat counts down to December 8, Prime Minister has risen the temperatures in battleground Gujarat. The Modi factor is undeniable. Bureau Report, Republic TV. So we just saw the Prime Minister voting earlier today, but a party that was watching very closely and appears to have taken an issue with everything he did today is the Congress, which wants to file a complaint with the Election Commission because he took a bit of a walk before he voted. They're saying that it was another road show which is not allowed as per the model code. Now, a person who has weighed in on that is West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee. Let's listen in now to what Mamta Banerjee had to say amidst this election taking place in Gujarat. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent for cent. That Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent for cent. That Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused.
This is the basic difference. Well, viewers, Mamata Banerjee is saying that special treatment being given to some people, and as a Congress is saying that there has been a violation of the model code of conduct. Congress clearly on a back foot right now because Congress has been counting on anti-incumbency, but the BJP this time has fielded a lot of fresh faces. My colleague Priyanka has also been on the ground and she is filing this report. She has spoken to Dr. Yamal Vyas of the BJP. Let's listen in. Basically, first of all, I would like to say that the Congress has seen a huge defeat before it, and therefore they are now actually in panic, and that is why they are making this kind of complaints. Not only that, but the Congress has somehow always been anti Mr. Modi and anti Gujarat also, and when they see Mr. Modi's popularity of this kind, when people turn up on their terraces to see him, I think it's only a jealousy and probably dislike for Mr. Modi and Gujarat, which is making them make this kind of complaints. But are you saying then that there is no... Viewers, getting some breaking news at this point of time. Viewers, getting breaking news. Police seeking stringent law on forced religious conversions. The Supreme Court hearing has begun, viewers. The last week, the Gujarat government has filed an affidavit in the Supreme Court supporting steps to curb forced conversions. The government is calling for a national law to ban forced conversions. And of course, we are getting a lot of information as well on the Supreme Court hearing forced conversion plea. Now, this is happening right now as we speak as well, viewers. And this is, in fact, happening as we speak. As we speak, the Gujarat government also telling the Supreme Court that district magistrate is not for religious conversion, a precautionary measure. It protects women and backward classes. So let's go across to Rhythm Bhardwaj, our executive editor, legal. Rhythm, women and backward classes are people, the section of society is very vulnerable to forced conversion. Supreme Court really putting ahead and putting out some statements there. Take our viewers through the significance of what's happening right now. The Supreme Court is hearing a plea filed by Ashwini Upadhyay, who's seeking measures to control forced religious conversion. This has caused a huge uproar with the Solicitor General in a 9-page affidavit for the central government telling the Supreme Court that they believe forced conversions is a grave matter. Cognizance needs to be taken. All the states will be filing their replies in the case. They have been impleaded. Earlier, Justice Shah's bench had very clearly made a statement. They believe this is a matter that can harm national security and democracy, and hence the security of the country is of immense importance. Therefore, action needs to be taken. Today in the courtroom, as we are speaking, Solicitor General did say we are getting information from the state. They've also given details of what Gujarat in a 28-page affidavit has said supporting a law on forced conversion. However, the bench said every time we ask for any information, it is said it's a serious matter. And therefore, the Supreme Court is trying to state that they want to quickly hear the matter and pass some sort of a law on this case. This will only happen once everybody has given out great details in the court. As of now, Justice Shah and Justice Ravi Kumar's bench hearing the matter, where the court has said we are going to take a look at what happened. Solicitor General did say that there are several ways of conversion. One is a change of heart, but it's the allurement, deception, fourth aspect which the court needs to decide on. So a high-octave hearing in the Supreme Court on the post-religious conversions case, where we are still seeing what the court will do. It's obvious that in one hearing they will not come out to an order, but a crystal clear hearing in which the Supreme Court means business, where they want post-religious conversions in the country to stop. Now, Rhythm, if you'll stay with us, another aspect is, of course, like you pointed out last week, it was the central government that has filed its affidavit. Now, are we looking at a potential for states also to be filing their responses, or will the centre collate their various laws, like the Solicitor General is referring to Gujarat's stringent law, is what we are getting to hear. So what is going to happen further? Are there other parties who are going to be involved seeking inputs?
Ankit, good question, because what we are hoping for is that all the states will file replies in the Supreme Court in this case where they have been impleaded. Gujarat had also been impleaded, and Gujarat has filed a 28-page affidavit in the top court where they have very, very clearly stated they had a law in 2003, I believe, in which they had said post-religious conversion should go. It's 2003 or 2013. I'll recheck those facts. But clearly they said we have an act, and that act had also said post-religious conversion should go. Now we are waiting to see what and how soon this will happen. As that is also happening, the court has now been told by the Solicitor General in a 9-page affidavit for the central government that we have already passed a lot of, we've already said several states have already passed this law. So we have to see how soon will this law become a central law for the entire nation. The Supreme Court in one of the first hearings, I think in November, had stated that this is a matter of national security and democracy of the country, which is of immense importance. Keeping that in mind, they had stated we want to go ahead and quickly pass a law to ensure that post-religious conversions don't become the time of the day. As we are speaking, the Supreme Court hearing continues. The government of Gujarat had said in 2003 they had passed a law to stop religious conversions in the state. We're also hoping, Ankit, that the others also file similar applications and affidavits in the post-religious conversions case before the top court. The bench has said charity and social services are good things, but there should not be any wrong motive behind conversion, which frankly, we've done several shows on Republic TV as well. We've shown all across several villages and states that there is post-religious conversion, and the bench is absolutely against that. The central government also against it. Hopefully, once this hearing is concluded, we should have a law on post-religious conversions in India. Right. Vidam, so right now there is no federal law on forced conversions. There's no national law, but also Supreme Court, and if you could tell our viewers as well, Rhythm. On that note, I think we will, of course, stay on the story. What we are learning so far is that Supreme Court on conversions pleads a serious matter. Earlier, Supreme Court had remarked that forced religious conversions is a threat to the independence and sovereignty of the country. Thank you, Rhythm, for joining us. Vidam Bhardwaj, our Executive Editor, Legal, getting a top updates as the hearing is happening right now. A couple of important points being made. Please seeking stringent law on forced religious conversions. The Supreme Court hearing has begun on that. Right now we are in Jammu, the Resident Commissioner office, where the Kashmiri Pandits are staging protest, and this protest is against the threats that have been issued by the terror group, the Resistance Front. The terror group has issued a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. We'll try to speak to some of the Kashmiri Pandits, because this Kashmiri Pandit community has been on the target of the terror group for a long, and yesterday itself they have issued another threat to these Kashmiri Pandit employees. Time and again, day before yesterday when we spoke, you said that we have been demanding, but no heed is being paid to our demand. Absolutely, sir. You are quite right that we are demanding for right to live since May this year, but our demands are not being heard. In respect, the government has stopped our salaries. Giving a respite to our reviews, the government has stopped our salaries, and now a recent list of 57 employees of our community has been issued by TRF, and they are threatened to be killed. So this is the breach of security in respect of administration, and we demand the administration to take a quick action regarding our demands and relocate us to Jammu as soon as possible. So this is the Kashmiri Pandit community that have come here in the Relief Commissioner office demanding that don't rehabilitate us on the cost of our blood, don't orphanage our childs, and they are being punished because they are the nationalist voices. They say that the only solution they have is the relocation of the Kashmiri Pandit community, and this has been their demand for quite a while, that they are sitting on a protest for over 200 days, and the new threats from the terror groups have made a sense of fear among them. This has increased a sense of fear. Let's take a look at some of the top stories from across the nation now. Like you just saw, as the Lashkar released a Kashmiri Pandit hit list, the Kashmiri Pandit community are protesting in Jammu, demanding a transfer out of Kashmir. The Pandit employees staged protests in Jammu, demanding that they be transferred out of the region.
Two people have died as a truck collided with a car in Madhya Pradesh. Police immediately rushed to the spot as the locals informed them of the incident. Pro-Kannada activists staged a protest in Chinnamma Circle in Belgavi against the visit of Maharashtra ministers there. With the interstate border row still simmering, the Karnataka government has requested Maharashtra to not send its ministers to Belgavi tomorrow. A suo moto case has been registered in connection with painting walls with joint CFI at 9 places in Shivamogga. Searches are on for the accused is underway. PM Modi's brother Somabhai Modi got emotional as he talked about the Prime Minister who visited him earlier in the day. He said that people cannot ignore the kind of work the centre has done since 2014. सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट हैं। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते हैं। काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। Tensions prevailed in Chittoor, Andhra Pradesh as the house of industrialist and Jan Sena leader B. Ramachandra Yadav was vandalized allegedly by the YSRCP supporters. Jana Sena leader has alleged large numbers of supporters came and attacked his house with stones, rods, sticks and other weapons. In a big development on the death anniversary of former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha, OPS has hinted to Republic about his intention to reunite with Edapadi Palaniswamy. OPS says that peace will prevail in the AIDMK only if they are reunited. Well, thousands gathered on streets to mock former CM and AIADMK leader J. Jayalalitha's 6th death anniversary. Sasikala too marches to the memorial. And we are also, viewers, getting news from the national capital where a 4-story building has collapsed in Shastri Nagar in North Delhi. Rescue operations are underway, we are told, in full swing. A day ahead of the 50th founding day of the AIADMK, Shashikala broke into tears as she paid tribute to former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha in Chennai. This was Shashikala's first visit to the memorial since she was released from the Parappana Agrahara prison in Bengaluru in January after serving a 4-year jail term in disproportionate assets case. Shashikala's last visit to the memorial was in 2017 before surrendering herself as a convict in the disproportionate assets case. She had then taken a vow by hitting the marble slabs of the memorial. Scores of party workers and supporters gathered at the memorial in Jayalalitha's memory. As Jayalalitha was being remembered on her 6th death anniversary by scores of party workers and supporters, rival AIADMK leaders too paid tribute separately. Bureau Report, Republic TV. Viewers, Farooq Abdullah was re-elected president of the National Conference for another term just a short while back, but he has made a controversial comment yet again. Here's the comment, just listen in very, very closely, viewers, which has been made by the National Conference leader. और सुनाओ, मैं वज़ीर आला इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ। जो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा, जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी। और जब मैंने वहां पूछा यहाँ क्या हुआ, कहा यहाँ कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चला था। गांव की तरफ पहुंचा तो एक वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी बीवी की दुकान। मैं बैठ गया, मैंने मुझे चाय का डाला। मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ,
लोग किधर गए? उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमें फौजी ने कहा, खबरदार मुस्लिम के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिए। आपको भेजना होता है। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिए। मैं हुकूमत से भी कहता हूं, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिए। So, viewers, you just heard there, re-elected to the presidentship of the National Conference, Farooq Abdullah making a completely objectionable statement. He is recounting a story where he says that people told him that the polling stations were empty because the Indian army had made a threat, and then he counter-threatens the Indian army that there better not be anything of the like this time or there will be a massive storm. We've seen how Farooq Abdullah had first ruled himself out of contention for remaining the chief of the National Conference, but apparently the party wanted him and only him, and not even his son Omar Abdullah, who apparently has been rejected by the party, at least insofar as this election goes. And now, after being re-elected, Farooq Abdullah has jumped straight into the attack, targeting the forces directly. Shivangi, what do you make of this statement that has come in a whirlwind series of events in Jammu and Kashmir insofar as the National Conference goes? Right, well, we are seeing another comment being made by Farooq Abdullah. This was the first time, Ankit, because Farooq Abdullah has sparked a row again and again as well. Couple of comments being made. This time he says that Doda voters were threatened by the army. Ankit, we are getting a guest as well on the phone line. We can take that. So we have former Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister Kavinder Gupta joining us. Mr. Kavinder Gupta, your response to this statement by Farooq Abdullah. अब क्यों याद आया? शायद इलेक्शन होने वाले हैं। Mr. Gupta, can you hear me? लगता है कि yeah, I am speaking. Hello. जी, continue. Yes, please. Continue, sir. नंबर एक तो फारूक अब्दुल्ला को अब याद क्यों आया इस वक्त? ये घटना 15 साल पहले या 20 साल पहले की ये सुना रही है। क्या कहना क्या चाहते हैं? दरअसल इनकी पार्टी आज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लोगों को अब विश्वास इनसे उठ गया है, तो उसका एक बहाना बना करके एक फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर रहता है वो यूनिफाइड कमांड का हेड रहता है, तो जब कोई सुरक्षा का काम होता है, बॉर्डर की सुरक्षा होती है, हालात लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, तब तो इनको आर्मी वाले याद आते हैं। इनको ये भी याद होना चाहिए कि 2014 के सैलाब से भी आप सभी लोगों ने सभी लोगों को इन्होंने ही बचाया था, आर्मी उस वक्त हमारी ने। लेकिन ये जो लोग अपना बलिदान देकर के काम करते हैं, उस प्रकार की भाषा बोलना उन पर ये सरासर शर्मनाक है, और मुझे लगता है इसे माफी मांगनी चाहिए आर्मी से। और आर्मी के कारण से ही आज कश्मीर में यहाँ पर आतंकवाद खत्म हुआ है और उसके साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा हो रही है। तो फारूक अब्दुल्ला की ये फ्रस्ट्रेशन बताती है, और खुद जो पार्टी का बेस खत्म हो गया उसके कारण से इस प्रकार की बातें क्या पड़ी। जी बिल्कुल, that's Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, hitting out at Farooq Abdullah and demanding that he apologize to the army for his statement that he has made right after being re-elected as the chief of the JKNC. Same Farooq Abdullah had earlier asked for China to intercede in the matter of Article 370. Now he's making threats and warnings against the Indian army and false allegations to boot. We are tracking this very closely, viewers. Let's also, in the meantime, listen in to some of the reactions as Gujarat went to the polls earlier today. गणतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े
इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते, काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। Viewers, Gujarat is polling today in the second phase. Coming up on the other side as well, much more coming up. It's a prestige battle in UP's Mainpuri. The seat vacant after Mulayam Singh Yadav's demise. And then viewers catch the biggest and most accurate exit poll on Republic with India's #1 news team for these recently concluded elections in Gujarat and Himachal Pradesh today evening starting 5 p.m. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for
The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka, now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the 2 states. It's the final fight as voting is underway for the second phase of the Gujarat elections. Almost 35% voter turnout till 1 p.m. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं. Amid the Modi chants, PM casts his vote in Ahmedabad, lauds the Election Commission for conducting peaceful polls. Congress to complain to the Election Commission over Prime Minister's walk before he cast his vote, calls it a road show and hence a violation. Home Minister Amit Shah, along with his family, casts his vote in Ahmedabad, appeals to first-time voters to step out and vote. It's a prestige battle in Uttar Pradesh's Mainpuri. The seat that fell vacant after Mulayam Singh Yadav's demise is up for grabs. And viewers, catch the biggest and most accurate exit poll on Republic today evening with India's #1 news team. Viewers, getting some breaking news coming in at this point of time. Viewers, where there is a hearing which is happening on forced conversions. A lot of pleas being heard on forced conversions as well, viewers, at this point of time, where Supreme Court has directed government to file a detailed affidavit. This is a very, very big topic as well because a lot of talk has been happening. The Supreme Court itself has been saying that the time has come right now to stop forced conversions. Ankit, this is a very, very important hearing happening right now.
Absolutely, and from what we are given to understand, Shivangi, the Supreme Court has directed the centre to file a detailed affidavit to provide complete information on the laws made against conversion in various states. The Supreme Court will hear the matter on Monday. Let's listen in to what the applicant in this case, the petitioner Ashwini Upadhyay, had to say. ऑब्जर्वेशन ही बोलना है सर। रोल हमारा नवी नहीं कर रहे सर। आज धर्मांतरण में कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी की, क्या कहा कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है, जो कन्वर्जन है वो धोखे से हो रहा है, चाहे लालच दे के हो रहा है, बहुत सीरियस मैटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आज आपने अभी तक इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या आपने राज्यों से बात किया? तो सॉलिसिटर जनरल का कहना था उनको थोड़ा और टाइम चाहिए राज्यों से बात करने के लिए और फ्राइडे तक वो राज्यों से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्जन को रोकने के लिए क्या स्टेप लेने जा रहा है वो फ्राइडे तक सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। कुछ लोग आज आ गए थे, कुछ केरल से आए थे, कुछ तमिलनाडु से आए थे और देश के अलग अलग राज्यों से हमारी PIL का विरोध करने के लिए। वो कह रहे थे ये PIL मेंटेनेबल नहीं है, ये PIL डिसमिस होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि हम आपके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं होगी, पिटिशनर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो कन्वर्जन के ऊपर होगी। अगर आप कन्वर्जन का सपोर्ट करते हैं या कन्वर्जन का अपोज करते हैं, आप जो स्टैंड अपना लीजिए कन्वर्जन पे लीजिए, पिटिशनर के ऊपर या PIL की मेंटेनेबिलिटी पर कोई बात नहीं होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कह दिया है। फ्राइडे तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देंगे, मंडे को इस पे सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है उसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, लेकिन वो कानून पूरा ठीक नहीं है। धार्मिक भावना भड़काना, धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, क्योंकि IPC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं अलग से कानून बनाने की बजाय इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है उसी को बदला जाए, जिससे कि FIR दर्ज करना आसान हो जाएगी। स्पेशल एक्ट बनते हैं तो FIR ठीक से दर्ज नहीं होती। IPC में जब प्रोविजन होता है तो FIR आराम से दर्ज होती है। पुलिस के जो सिपाही होते हैं आराम से FIR दर्ज कर लेते हैं, या 100 नंबर पे कॉल करिए, 112 नंबर पे कॉल करिए तो आ भी जाते हैं। स्पेशल अगर एक्ट बनेगा तो पुलिस उसमें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसलिए हमने कहा है IPC का जो चैप्टर 15 है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसी को अमेंड करके उसी में 2 नई धारा जोड़ दिया जाए, जिससे धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। आपकी एक इकलौती पिटीशन पड़ी थी, अचानक जब नोटिस हुआ उसके बाद उसके विरोध में कई पिटीशंस आ गई। आखिर वो विरोध किस आधार पे कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारी PIL का विरोध करने के लिए इतनी सारी PIL आई हैं और उसमें बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वकील खड़े हो रहे हैं जो एक बार में सुनवाई का 10 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसका मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा था, अगर कन्वर्जन बंद हो जाएगा तो उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। चाहे वो खाड़ी देशों से हजारों करोड़ रुपए आता है हवाला के जरिए, या वेस्ट कंट्रीज से जो FCRA के जरिए आता है हजारों करोड़, वो आ रहा है कन्वर्जन के लिए। जब इंडियन पिनल कोड में कठोर कानून बन जाएगा, लोग 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। वो सारे लोग परेशान हैं, वही सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आके मेरी PIL का विरोध कर रहे हैं। ठीक है। That was Ashwini Upadhyay, the petitioner in this matter, which the Supreme Court is taking very seriously. The Supreme Court has asked the centre to now file a detailed affidavit with details of what all the various states are doing, the laws and steps that they have taken to curb this threat of forced conversions, and it needs to submit this affidavit to the Supreme Court before the next hearing. Meanwhile, from what Ashwini Upadhyay said while speaking to the media after the hearing concluded today, it appears that the court has said that there would not be a discussion on the maintainability or on what anyone has to say about the petitioner. The matter that will be taken up is forced conversions. He also mentioned how there needs to be a law under the Indian Penal Code because as things stand at the moment, there is not enough reason for the police to go after someone who is conducting forced conversions. We'll try and get Ridham Anand Bharadwaj, our Executive Editor Law and Governance, to join and share more details on this, to elaborate on what we can expect next and what's gone on in court. But clearly this is a topic that the Supreme Court is hearing with all seriousness. Last week, the centre had filed an affidavit, a 9-page affidavit, in which it had spelt out that it views religious conversions that are forced in a very strict manner.
it views them as a big threat, and it had also listed the various states that have taken law into their own hands with regards to framing acts against this. We'll track this story very, very closely, viewers. It's a big story. The center is to file an affidavit in the Supreme Court. Viewers, it's the second and final phase of the Gujarat Assembly elections today. Just a couple of hours remain before the polling booths close. And one of the first people to go and cast their vote today was the Prime Minister, who voted in Ahmedabad. Now, while he was there voting, the cameras got a good glimpse at him. He posed for a couple of photos. But the Congress appears to have taken an issue with this. The Congress says that this constitutes a model code of conduct violation, and hence now it has filed a complaint, the copy of which is now on your screens, with the Election Commission. The Congress party is of the opinion that the Prime Minister, with his walk before he cast his vote, violated the model code of conduct. They have equated it to holding a roadshow, which is no longer allowed after the final polling concludes, the final campaigning concludes just a few days before the polls take place. And the Congress in this manner has filed a complaint with the Election Commission. We've also heard a number of people who have spoken about this matter, like the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. We also have Priyanka now joining us from Gujarat. Priyanka, the Congress taking the matter to the Election Commission, what are they hopeful of? What are they asking for in this complaint against the Prime Minister's walk before his voting? Well, Ankit, a couple of points that have been mentioned in this complaint copy, and I'll read that out for our viewers as well. Since, of course, the first and foremost, the point of that complaint is about the Prime Minister carrying out a quote-unquote roadshow. Now, apparently it says that there was several BJP flags as well that had been put up near the polling booth, which was 500 feet near the polling booth itself. And they have also said that why did the Prime Minister, in fact, was walking in that entire route where the BJP flags had also been put forward. That is one point of the complaint. This is in Gujarati, so I'm just quickly translating for our viewers to understand as well. We're putting out that copy of the complaint exclusively accessed on your screens right now. And of course, the other is talking about several attacks that have been made on Congress candidates that are the allegations that are being leveled by the Congress party. Apart from that, they are also another point of this entire complaint where they say in Ahmedabad, in Ghatlodia, in Vejalpur, several such areas, there are hoardings that have been put forward. There are BJP flags that have been put up, and that's why they're saying that this is another violation. So that's point number 3. And of course, point number 4, they're talking about Bapu Nagar booth, and they're talking about Bapu Nagar booth. That's another area in Ahmedabad. And they have said that in that one person in fact was trying to create ruckus there, and that was supposedly a BJP person as well. Apart from that, of course, these are some of the 4 complaints that are being made by the Congress party in the Election Commission. The first and foremost being the most important one that we see, that the Congress party is claiming that this is the Prime Minister who has violated the model code of conduct by walking. So essentially, even in this complaint, they have stated that he was walking in that entire route where there were BJP flags that had been put forward, and that is what they have taken an objection to. And of course, this is an entire complaint copy that has also been sent to the Election Commission, and we're being told that there was a verbal complaint that had also been made to the Election Commission. There is a delegation, in fact, that had gone to the Election Commission, and even last night we were being told that the Congress party has confirmed that there was a delegation that had gone to flag off this entire event of the Prime Minister, is what the Congress is claiming. And they have also said that particularly about the Prime Minister's going to cast his vote, they have particularly stated that he was in fact walking
He was walking, and that has been mentioned in the complaint. And they have also stated that he in fact got out of the cavalcade and he was walking 500 feet near the polling booth, is something that they have mentioned by themselves. So this really also brings us to the question about why the Congress party has in fact been raising this kind of a question over the Prime Minister merely just going and walking and voting as any normal voter would. And that is what the Congress in fact is now claiming was a violation of the MCC, Ankit. Absolutely. Priyanka, clearly the Congress party has a number of grumbles which it has put into this letter which it has filed as a complaint with the Election Commission, most notably being the Prime Minister's walk before he voted. A person who appears to be backing the Congress on this, at least in spirit, is the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Let's listen in to what she made of this controversy over the Prime Minister's walk before his vote. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent for cent. That Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. Basically, first of all, I would like to say that the Congress has seen a huge defeat before it, and therefore they are now actually in panic, and that is why they are making this kind of complaints. Not only that, but the Congress has somehow always been anti Mr. Modi and anti-Gujarat also. And when they see Mr. Modi's popularity of this kind, when people turn up on their terraces to see him, I think it's only a jealousy and probably dislike for Mr. Modi and Gujarat, which is making them make this kind of complaints. But are you saying then that there is no basis to this, because they are saying that this is an MCC violation, that he was very close to the polling booth and that he was carrying out a roadshow? Is there any kind of response that we will also be looking at in terms of talking to the Election Commission about? Our legal team will be responding to that, whatever the complaint they have made. But I can only say that the Prime Minister is under SPD security, and his security is of first priority for the whole nation. So I don't think that just because Congress makes complaints, his security can be compromised. And that is the prime requirement of the day. And I'm sure his security personnel have been following the rules to the T. So you're saying that this is just posturing as of now that the Congress is doing, that there's no basis for it? Is that what the BJP's official stand is? Yes, the Congress has seen a huge defeat, and that is why they are complaining. I don't see any other valid reason for the complaint. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए।
आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, Mega controversy amid the Mainpuri by-polls. Leveling big allegations, SP Chief Akhilesh Yadav claimed that Uttar Pradesh police are not allowing voters to cast vote. क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। Meanwhile, SP leaders staged protests outside Uttar Pradesh Assembly. Bureau Report, Republic TV. Viewers, getting some breaking updates coming in, and this time from West Bengal. Congress protesting against the state government and the Bengal governor. The visuals of that on the screen as well, viewers. This is what's happening there. We are seeing a lot of presence of the police as well as a protest. A protest is happening there. Now, this is a Congress protest against the state government and Bengal governor in Kolkata. We can see a lot of posters as well, there on your screens as the Congress continues to protest against the state government and the Bengal governor as well in Kolkata as well. A big crowd has gathered outside there in Kolkata. They are demanding answers from the state government. This protest is happening near Raj Bhavan in Kolkata. People coming out in large numbers as well. Demanding answers from the state government, and like we are telling you that there seems to be heavy police presence on the streets of Kolkata as well as the Congress protesting against the state government and also the Bengal governor in Kolkata. We are seeing some people also being detained into police buses right now. On that note, let's take a very, very short break, viewers. Very shortly, you will not want to miss the most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team. Stay tuned to Republic TV. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीमलैंड लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital.
The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। All right, viewers, getting some breaking updates coming in. Let's continue with the breaking news, which has come right from West Bengal. Visuals you can see on your screen, where we can see a lot of anger on the roads of Kolkata, where the Congress is protesting against the state government and the Bengal governor in Kolkata. We're getting some top updates coming in. Heavy police presence also being seen there on the streets of Kolkata. People on the roads holding placards and posters and protesting against the state government. The state government in Kolkata already, the Mamata Banerjee-led government in Kolkata already on a back foot when it comes to some corruption scandals and also cases of scams in the recruitment of teachers. Let's go ahead to Ishandev. Ishandev, take us through what is happening on the streets of Kolkata as we speak. Shivangi, the Congress supporters and the Congress leadership in Kolkata, they are demonstrating in front of the Raj Bhavan, and as they started demonstrating there, protesting the capturing of Jhalda municipality in Purulia district. Police action has been initiated, and all the Congress supporters and leaders who were leading the demonstration there, they have been taken into custody. They have been removed from the place. They have been removed from in front of the gate of Raj Bhavan. And you know that in the municipal election in West Bengal, which took place just 6 months back, around 6 months back, at that time Congress got only municipality, that was Jhalda. Jhalda municipality has got 12 seats, and out of 12 Congress got 5 seats, TMC got 5 seats, and 2 other were independent councillors. But one of the Congress councillors whose name was Topon Kandu, he was shot dead before the formation of the municipal board, and thus TMC took hold of the board. And after that, when Congress brought a no confidence motion, and the TMC chairperson was defeated in that no confidence motion, that now again TMC has planted another person from another councillor of TMC fold as a chairperson, which Congress is saying as undemocratic, and they are now protesting in front of the Raj Bhavan right now against that. Shivangi. All right, thank you, Ashandev, for getting us all the details. Ashandev, live from a Republic Bangla newsroom as dramatic protests are happening. Several Congress workers have also been detained. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests.
YSRTP Chief Vice Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who was using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment in. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. It's a 50.51% voter turnout recorded till 3 p.m. in the second phase of polling in the state of Gujarat. As election in Gujarat enters the final hours, will the voting pick up? The Prime Minister casts his vote in Ahmedabad after a walk to the polling booth amidst Modi chants. The Congress now complains to the Election Commission over Prime Minister and Home Minister's walk outside the polling booth. The BJP begins its preparations for 2024. Prime Minister meets with office bearers at the party headquarters. And we are building up to the biggest and the most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team. A very good afternoon. You're with us here on Republic, and this is our non-stop rolling coverage of the big elections. The big elections in Gujarat. The biggest news team is getting to you minute by minute updates. We are also, remember, building up to that big exit poll with Arnab starting at 6 this evening, and that is where you will see Abhishek and Rhythm,
the first numbers that really come out? Because people have been asking Abhishek that, which party has the edge? So I think, Rhythm, by the evening today, you will have clarity about what happens in Gujarat, not just Gujarat, also Himachal. So we here at Republic, remember, are doing all the number crunching for you. And it's been a day of non-stop controversies. We've seen the Prime Minister, we've seen the Home Minister in Ahmedabad casting their ballot. And Abhishek, as always, you have controversy, the Congress running to the Election Commission, complaining, saying that this was a violation of the Model Code of Conduct. But Abhishek, what is it clearly that we'll be looking at in the next few hours, building up to that big coverage with Arnab starting at 6? For one, Deepthi, the pace of polling has picked up in the last couple of hours. In fact, there were reports that suggested that in the second phase of polling also in Gujarat, like in the first phase, the polling was a little down as compared to 2017. But it seems that some makeup has happened, a makeover has happened over the last couple of hours, and polling has become brisk, and we are told that it has crossed 50% mark by 3 p.m., which is a good number, which means that insofar as the second phase of polling is concerned, it might report little more voting as compared to the first phase. Though I'm still not sure whether this would break the last assembly polling mark in 2017 mark. So that is one. The second, of course, the exit poll numbers that we are bringing, Deepthi, and viewers need to know this. We have our own survey, our own team deployed by way of PMARQ that are going to bring us the numbers. Plus, of course, two more exit polls, the Metris and the Chanakya. All these three polls we are getting. So poll of polls, and of course our own work done by the team of PMARQ, who got all the 5 states right last time that they did with us. So I think in that sense, the viewers should look up to the next couple of hours, led by Arnab Goswami, and of course you, me and Rhythm from the studios, and the exit poll numbers start 6:30 p.m. Yes, I do see Harsha, Madhurima and Priyanka. Remember, our best eyes and ears on the ground, because this is an election that matters, remember, not just for the BJP, Rhythm. This is also a relevance test for the Congress party. This is also about the Aam Aadmi party, whether it actually will be able to make any dent, if it will be able to eat into, Congress's vote. Is that going to be that X factor? No one knows. And before we actually go back to our team of reporters, we'll also have a panel of guests that just joins us, Rhythm. But what is it that you would be looking forward in these numbers? Most good evening, Deepthi, Abhishek, and all our reporters who are joining us, because today we are going to first, Deepthi, be looking at the numbers. Let's just tell our viewers the Republic-PMARQ exit poll is the only poll, Abhishek, also that got the 5 state elections spot on in every state. As Gujarat is completing voting, we are going to stay tuned to all the closest numbers and the real results that will be coming on Republic. And as we wait for that 6 p.m. mark before those opinion poll results are out, I also want to go across to our reporters. Madhurima, if I can first come to you, since morning you've been tracking leaders. What is the sense you are getting? How much voting has happened where you are? What are the issues you've been speaking to people that they've been highlighting today? Well, Rhythm, I have been reporting from Arnab, where the Prime Minister had come and exercised his right to vote. It was indeed, an electric morning. People, even in the chilly temperature early, had poured out to have a glimpse of the Prime Minister, and of course to cast their vote as well. But the issues here, the first being the trust factor. They are all deep in trust with the Prime Minister. When I spoke about the freebies and the Delhi model that they want to bring in, the Kejriwal government, the Kejriwal and the Aam Aadmi party want to bring in, I got very unique answers that they do not want the Shaheen Bagh model, but they are happy with the Gujarat model. That was, that was the Prime Minister's idea when he was the Chief Minister of Gujarat. So this is what I have been hearing the entire day
day. The kind of reception the Prime Minister received was unprecedented, where people from nearby vicinities also poured in, making it very difficult for the security officials as well, because they wanted to had a glimpse of see a glimpse of their Prime Minister and their own leader, like Priyanka has been highlighting. They they relate to him as Narendra Bhai over here in Gujarat, and that is what we saw, Rhythm. Also the issues, one being Hindutva, UCC, and then the security in Gujarat. The women are feeling very safe, and development. As far as when we spoke about freebies, they said that Gujarati believe in earning what they enjoy. This is the sentiment that we're getting from Madhurima, hold on to your thoughts. Where people, we are getting a breaking news development. The Congress party continues to be at it, and Jignesh Mewani, via Twitter, I believe, as of now, that in his constituency, he's contesting from Vadgam, which is a reserved SC seat in North Gujarat. He has said that in Fatehpur village, according to him, BJP workers effectively have captured a booth. They are indulging in voting, fake voting. And this is being reported by Jignesh Mewani of the Congress party. He's a Congress candidate from Vadgam constituency in Banaskantha in North Gujarat, and he is saying that in the Fatehpur village in his constituency, there are BJP workers who have gotten inside a booth, and this is from some back window. Remember, Congress party earlier in the day objected to Prime Minister walking up to the polling booth and walking out, Rhythm. And so it seems a case of sour grapes, is it, that the Congress party keeps finding issues. But of course, this is, if an official complaint is made, the Election Commission should be looking into it. Jignesh Mewani for now has tagged the Election Commission official Twitter handle, as can be seen from the screen. The tweet is up there on the screen, and we have guests joining us to take this story forward. Also, viewers, just to let you know, this is not just about Gujarat. Deepti, we are going to get Himachal numbers as well. Yes. And that's going to be important. Politically significant states, both Rhythm, you know, Gujarat is Prime Minister's home state, as also, of course, of the Home Minister. And Himachal happens to be his Karm Bhumi in many ways. He was in charge of Himachal Pradesh in late 90s. So that personal connect is there. Important states politically for the Prime Minister, for the BJP. And of course, as politics stand in India today, for the fortunes of the Congress party as well going forward. Yes, so let's say good evening to our panel of guests. Sandeep Ghosh is an author and political commentator, along with Dr. Sandeep Shastri, who is the Vice Chancellor at the Jagran Lake City University, Bhopal. He's also a political analyst. Pankaj Sharma is a senior journalist. He's a former media advisor to the Chief Minister Kamal Nath. Ravi Srivastava is also a political analyst, and he bats for the Aam Aadmi Party often. Good evening to all of you, gentlemen. I want to take my first question with Pankaj. Pankaj, why is the Congress already spooked? You know, bang in the middle of the second phase of polling, you say the Prime Minister walking to cast his ballot is a violation of the Model Code of Conduct. Everyone can understand the meaning of his walking. I mean, it was practically a road show. Prime Minister flouting all EC norms. Desperation is clearly seen. So if Congress is raising this with the Election Commission, Congress has a right to raise these points, because never ever any Prime Minister held any road show while polling is going on. So this is something very surprising. Where is the road show? I didn't see any banners. I didn't see any flags. The Prime Minister, got off his car and he is walking. Let's try and put out those images, I think, once for our viewers, Pankaj. And let me see if Ravi actually agrees with you. Ravi, will you join the cause with the Congress party on that? Prime Minister is a serial offender as far as such kind of optics is concerned. Earlier elections, if you recall, he was holding the BJP insignia on his shirt and kurta, and he was walking down the road after voting. It's nothing but a simple emotional blackmailing or an emotional connect
with the voters just to show that what he has done. I think he should not have done it because he is the Prime Minister of the country. He can do it more gracefully and what you call as a proper way. It is not required to make a kind of gestures and all that to the public standing by. They are there just to greet him and all. But I think this kind of creating optics is absolutely unfair and unwarranted. He has been doing it not once, and then before going to mother's place, seeking her blessings and all. I want to take one comment with Sandeep Ghosh and Dr. Shastri, and then we'll go to our reporters. Ravi, just about yesterday, when we had the MCD polls, you had Arvind Kejriwal along with his family, his mother and father walking to the polling booth. Is that a roadshow, Sandeep? Is that a roadshow? Is that a violation of the Model Code of Conduct? He said, "Kattar ईमानदार लोगों को दिल्ली वोट देगी." Is that a violation of the MCC? I'm not sure. Why can't the Prime Minister walk? Is there a necessity that he has to drive up to the polling booth or be taken there? I think it's entirely up to him to walk to the polling booth just like any other voter. And he is not really campaigning while walking. He is not, as alleged by Ravi, wearing any BJP insignia. And so what's wrong? And if he's attracting optics, which you do in any case, okay, the Prime Minister, our Prime Minister today is of a very different order, has a different order of not just popularity, but adulation. He attracts from people in whichever way he will go, from the public, from people like you in the media, media cameras, everybody will follow him. They don't have a problem with, media camera in a different situation, though, doesn't for voting, following a Rahul Gandhi on the Yatra. So, Mr. Modi, whatever he does, it will happen. And you can't translate that into a roadshow, but you just can't call it a roadshow. Okay, we're just going to go through breaking news right now. We come back to our guests as well as our reporters. The breaking news that's coming in as we are speaking, there's a controversy that's now erupted during the second phase of polling. Congress candidate makes a wild charge on a Wi-Fi name. He objects to the Wi-Fi name Namo. Congress candidate says Namo Wi-Fi can be used for hacking. The administration, of course, has rubbished this Congress candidate's claim, who says Wi-Fi to give, and they've said Wi-Fi is there to give connectivity to schools. As this breaking news is coming in, let me also go across to our reporters. But before that, Abhishek, you also, another controversy. Now Congress once again having an issue with the Wi-Fi name Namo. Well, this is coming in from Valsad in South Gujarat, and Raju Marcha is the Congress candidate there, Rhythm. And these are supporters of Raju Marcha or, Congress workers there. Now look at this place. This is close to the strong room where the EVMs are kept in a college. And there is police arrangement there, security there. But then these people are looking for this Wi-Fi which says Namo. And they are saying, oh, this is Narendra Modi Wi-Fi and this can hack the EVMs. For God's sake, they have gone to the collector and the collector has clarified, saying that, come on, this is essentially a government project for providing Wi-Fi to the, public schools in those far-flung forest tribal areas. It's called Namo because Narendra Modi is from Gujarat and this is a Gujarat government project. But then the Congress party really showing jitters rhythm, like in the case of Jignesh Mewani, so in this case perhaps. That is true. So why don't we take one quick question also with Dr. Sandeep Shastri, and then we can continue with all our reporters. And do remember, a lot of breaking updates are also flashing on the bottom of your screens. The election is still on. Remember, the second phase of polling in Gujarat is still on. We are looking at a 50% turnout till 3. Dr. Shastri, why don't you weigh in on this? There has been a considerable amount of debate on the percentage of voting turnout, sir, that if the turnout is low, does it help the BJP? Is it against the incumbent? I mean, is there any kind of an ossified trend that this voting percentage might be able to allude to? There is no empirical evidence as to whether a high voter turnout or a low voter turnout impacts adversely on the ruling party or the opposition. I think there is no empirical evidence on that.
Last time when in the first round of Gujarat voting there was a lower turnout, expression was made of the fact that it could be a result of two factors. You have had the BJP continuously in power for a long time now. So it could be an element of complacency that the BJP is in power, it will continue in power. So there could have been an element of complacency. Some may even argue that it could be an element of disappointment, that there was slight anti-incumbency and that came in. From the perspective of the opposition, it's very clear that low voter turnout is not a good sign, because it means that you have not been able to inspire your supporters to come out and vote. And I think the critical question is, those who voted and those who did not vote, did it signify any important way of looking at electoral choices? So I would say there is no empirical evidence on this, but I would weigh in on these two factors. Low voter turnout in an election where one party has been in power for long could be a sign of complacency. Low voter turnout when a party has been in power for long is a clear indication that the opposition has not been able to get its message across to a large segment of voters that they were looking to hope to bring to the polling booth. Can I make a comment, please? Abhishek. Yeah, actually, I would say, Ravi Srivastava, hold on. You know, Congress party only makes news on the day of polling. Why not during the campaign? That's my question. That would be my question to you. But let me clarify. Conventional psephology says that if there is a lower voter turnout, that typically goes against the incumbent. So in that sense, I think, truth be told, the BJP would be slightly worried. In fact, I can tell you that they were worried after the first phase of polling, and that's why you saw repeated requests and appeals coming in from the leadership that people should come out and vote, particularly the urban areas which are supposedly the strongholds of the party, though of course it has spread quite evenly now insofar as Gujarat is concerned. But the second phase of polling also does not seem to be bringing in good news, so to say, in terms of increase in numbers. There has been a pickup that has happened over the last couple of hours, but if you look at the average, it's just about 1% more than the first phase of polling, and in that sense, not very comforting perhaps for the BJP. Maybe the BJP representative here, or someone for them who's speaking for them can answer that question. Yes, I'm just going to come back with that question to our guests and reporters. Let's quickly break. Republic has accessed the first complaint copy. This, remember, is going to the Election Commission. This is the Congress there saying that the Election Commission needs to step in. You will see that going up on our screens in just a bit. In fact, it is in Gujarati. So why don't, I request Abhishek to just read through it. This is on the Prime Minister, remember earlier, who was walking to cast his ballot. Now, what the Congress here maintains is that this is a violation of the Model Code of Conduct. You see that copy on the right of your screens. On the left, you're looking at images, Abhishek, of the moment where the Prime Minister arrived to cast his vote. And this, according to the Congress, is a roadshow. Well, I can go through the complaint copy, and it's in Gujarati, so if you want, I can read it for you. The subject says, Congress Party's various complaints and action thereof. It is written to the Chief Election Officer of Gujarat, who obviously is part of the Election Commission of India. And this is written by Yogesh Rawani, who is chairman of the legal cell of the Gujarat unit of the Congress Party. And it says that Honorable Prime Minister, when he went for his voting in the morning, he got down about 500 feet before the polling station and walked, and he was taking greetings from those people who were standing on both the sides of the road, and we are writing on that, in that connection. Okay. And then, of course, other complaints. So it's an application or request made to the Election Commission to look into 4 subjects. The first one, of course, being Prime Minister's, what the Congress Party alleges now to be a roadshow. And it says that Prime Minister, Ravi Srivastava, Prime Minister gets down from his car and walks like a commoner to the polling booth and
if you do it, it's okay. If the Prime Minister does it, it becomes a road show. What's this problem with the Congress party? Or Pankaj Sharma, if you could, let's go to Pankaj Sharma on that. I will reply it. If you can answer this, what's the problem if the Prime Minister walks? What's your problem? Abhishek, what did you expect? Should he have taken his convoy right into the polling booth? He had to get down before and walk up to there. Okay, one by one. There is a show of a kind of a road show over there. Yeah, please, Mr. Pankaj, carry on. No, I was saying that he can certainly walk, but why he chose to walk on the polling day early in the morning at 8 o'clock, 8:15? He could have walked at 4:30 in the afternoon, but since he knows that morning walks happen in the morning only, na Baba? No. It was not a morning walk. He was walking to the polling station. He was going there to poll his vote. He could have gone at 4:30 as well. So he deliberately did it because he knew that it would be this walk or say road show or street show, whatever, would be shown by all the media across the country, and it will certainly impact the second phase of the poll in Gujarat. He knew it. He knows all these things. He's a very seasoned politician. He has been doing all this for a long time. So it was not a simple, innocent walk. Abhishek, can I respond on your? So there is a simple and innocent walk. What is an innocent walk? We don't understand. What is a not so innocent walk? What is a complicated and not so innocent walk? I mean, we would like to understand. It was a deliberate. Ravi Srivastava, can you take that question from Pankaj Mishra? Yeah, I'm telling you that this was purposeful and deliberate. He could have taken his vehicle close to the polling booth and got down and made a vote over there. Purposeful walks are signs of purposeful walk. Ravi Srivastava would be a sign of good leader. A good leader walks a purposeful walk. What's complicated and not so innocent about a purposeful walk? You would want the leader of the country to be having a purposeful walk. Rahul Gandhi is having a purposeful walk. That it was a purposeful walk. He's been walking for 50 days now. This is no leadership in it. It's just a deliberate and purposeful roadshow by walking 500 Interesting, Abhishek, is the Congress and the AAP here is fighting. They are fighting for the number 2 position. 1 second, gentlemen, Ravi and Pankaj, you both are fighting for the number 2 position. I just want to, before we go to Sandeep, let's get in Dr. Sandeep. Your perception. What can AAP really do? The very fact, Ravi, Dr. Shastri hasn't spoken. Let's please listen to him. He has a lot of experience. He reads the numbers very, very carefully, unlike a lot of us here. So, Dr. Shastri, why don't you tell me, is AAP just a bubble that you've seen largely on the social media? Because even in a constituency like Surat, you haven't seen an unusually high turnout that possibly could be indicative of a lot of change, in the favor of the Aam Aadmi Party, because Surat again is one constituency, Dr. Shastri, that the Aam Aadmi Party has largely focused on. If you look at, of course, we will get to know what the exit poll says in a moment. But if you look at studies which were done prior to the campaign starting, and I was part of one of those studies, one indication was very clear that the AAP was having some signals of support, some elements of support coming in. They were proving to be a major challenge to the Congress party in the campaign. A lot of the AAP vote was coming from the Congress party. And what our governance study showed was that AAP was not drawing so much from the BJP, but was drawing from the Congress. And therefore, it was more a fight for the second spot rather than a real challenge. Dr. Shastri. Okay, Dr. Shastri, we have to continue. We have to continue this conversation. We are going to have this for a couple of hours. We have to take a short break and then we're coming back. Just stay on. All the guests stay on, and of course, viewers, please stay put with us on Republic Network. We are back right after a short break.
The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. All right, we are back with our conversation that we are having as a build-up to the exit polls. Remember the Election Commission deadlines, according to which, or guidelines, in fact, according to which, you can come out with an exit poll only half an hour after polling has ended. In Gujarat, it's 8 a.m. to 5 p.m. But then for by-polls in various parts of the country, the time is 6 p.m. So we cannot get the numbers out before 6:30 p.m. And that's why the short wait, viewers, insofar as exit poll numbers for Gujarat and of course Himachal go. But then coming back to the conversation we were having, Rhythm, looking at these voting percentages, yes, seem to be a little less than last assembly elections, even as second phase perhaps polling just a little more than first phase. You think this is going to have an impact, and if you could take it to these
someone from the BJP to respond. Absolutely. If I could actually go across to Sandeep Ghosh, who's joining us. Sandeep Ghosh, one question that Abhishek is also asking about the low voter turnout and whether it will have an impact. And of course, these elections that are being seen as a precursor to the general election, the BJP is fought it as if there's no tomorrow, but the Congress largely absent, the Aam Aadmi Party, the new kid on the block. How are you looking at this entire situation? And of course, an important key question on the low voter turnout. First of all, let me even clarify, I'm not a BJP spokesperson, nor do I hold a brief for them. I come here as an observer and, for analysis and commentary. My view is that goes without saying that, if it's a lower voter turnout, it's usually a matter of concern for the incumbent party. And I think BJP has been worried about its voters, its committed voters, being a bit lazy in these elections, almost assuming that BJP is going to win. So why make the effort to go to the polling booth? And that's why even Narendra Modi in his speeches has been exhorting the voters to come out and vote. But the point is, what is the kind of difference which you will have with the second and third party? My sense is this time the voting, the difference in terms of last time when you were seeing you're putting out the vote shares, it was 49.1 with 41.1. This time if Aam Aadmi Party is able to get a larger share, the difference between the first and the second party is bound to increase. And therefore a 3% drop or a marginal drop in the turnout is not really going to be materially affect the BJP. So overall, I don't think it's a matter of worry which will make you see a rapid change in your, major change in the outcome. But certainly, it's a factor to be considered, and I think BJP has been conscious about it, and that's why today they have been again. You found even union ministers tweeting, asking people to come out and vote. Yeah, I think Sandeep Ghosh, you are putting it very mildly, very politely that BJP. What do you say? BJP is concerned. Yeah, BJP is concerned, but rural areas in 2017, Dr. Shastri had a 72% turnout. No, Sandeep, you used even a milder version. He did not say BJP is concerned. And he qualified, he said, I'm not a BJP spokesperson. Yeah, he's not. Which is obviously right. But, so, Ravi, before I come to you, Dr. Shastri, how should you look at a voter turnout when the first phase, like I said, in a constituency like Surat, you did not see an unusually high turnout. Today, in a lot of urban, cities, including Ahmedabad, a lot of constituencies there haven't seen a very, very high turnout. Now, the BJP could say, listen, because a lot of our voter, they already know that we are going to be party number one, we are winning. They might be complacent, they might not, be stepping out. And that's the reason why you've seen the Prime Minister, Abhishek, taking part in those huge road shows, wanting people to come out, the Election Commission speaking about it. On the other side, what about the AAP and the Congress? The very fact now that from a bipolar to a triangular contest is what we are looking at, Dr. Shastri, and this low voter turnout. How do you read these two things together? I would endorse the point that my namesake panelist made a while ago and reiterate 2 points that I have been consistently making ever since I have spoken about the first round of voting. Yes, it is a matter of alarm for the ruling party that having been in power for so long, they are not able to sustain the voter turnout. As I said, it could be an element of complacency. Our party is winning, therefore why go? So that complacency could be something which could be staring the ruling party in the face with this lower turnout. But I will not go by a single factor explanation. I think the opposition too needs to be worried because higher voter turnout also is a reflection of the fact that there is a change mood. There is a mood for change. And if the opposition has not been able to galvanize the vote, that is often reflected in a lower voter turnout. And the last point, I think clearly Gujarat may be moving from a bipolar contest to a tripolar contest with the AAP entering the fray. And I think here again, what
appears to be happening is the AAP has split the Congress vote and not taken away much from the BJP vote, which therefore would work to the advantage of the BJP. Absolutely. And as you're making this point, I also want to get in Pankaj Sharma here. Mr. Sharma, how are you looking at the massive number of rallies that have been done by the BJP, by the Prime Minister, by the entire leadership, the Home Minister, and comparing it to how Rahul Gandhi made a very notional, token, one-day visit to Gujarat, 0 days in Himachal? Where does this leave the Congress party and its campaign in both the states? See, Rahul Gandhi was busy in his Bharat Jodo Yatra, so he couldn't spare time for Himachal and Gujarat the way he should have. And BJP, of course, was aware. Shocking, actually. He's joined the VHP. He's become a sant. You know, he's joined the VHP, become a sant. Least bothered about worldly matters like electoral politics, right? So he is not worried about electoral politics the way Narendra Bhai Modi and Amit Bhai Shah are worried. You know, they are on a different plank, and Rahul Gandhi is on a different plank. Politics and political party for him is not only a vehicle to win elections somehow. So I mean, if he has this but Pankaj, kind then of why are you philosophy, running to the election commission? Why are you complaining? If you've accepted, no, 1 second, you need to be reasonable about this, Ravi. This is the problem, because the Congress is plain simple confused. They do not know what to say, how to respond, Ravi. Isn't that the problem? Look at the BJP, they know they have to win every election, so you will see them out. Look at the Aam Aadmi Party, you see their hunger, you know, whether that was Gujarat, whether that was now even in the MCD polls. You've seen a muted campaign by the Congress, both in Gujarat and in the MCD polls, Ravi. And then they say, listen, Owaisi vote kaat raha hai. Then they will say, election commission inke saath mila hua hai. I mean, they have to decide whether they want to fight elections or not. Ravi. Yeah. See, first of all, I don't hold any brief for Congress for that matter. But I think it was Honorable Prime Minister who acknowledged that the Congress is working underground in Gujarat. Congress was not vocal, Congress was not making a show of it, but they were silently working in Gujarat, and Prime Minister said that you should be scared of it. Now, as far as the BJP is concerned, everything is at stake in Gujarat. Everything. I said their Prime Minister is at stake in Gujarat. So if something goes wrong in Gujarat, if somehow their vote share goes down, the candidates lose their constituencies, it is going to reflect very seriously on the BJP as a party. But they've been in power in Gujarat for 27 long years. In spite of that, Ravi. That is what, Ravi, 27 long years. And Sandeep, why don't you come in on this? That is what Who exactly I am saying. Is it the Congress? Is it the Aam Aadmi Party? Or is it the BJP? Sandeep, according to you. Who has more at stake? Aam Aadmi Party has nothing to lose. Sandeep Ghosh, I'm going to come back to you, Ravi. Aam Aadmi Party has nothing to lose, okay? Sandeep. When Arvind Kejriwal says 3 days ago that मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ that we are coming to power, he has obviously a lot to lose. Otherwise, he's, the kind of bravado he has shown. What BJP is out there to prove is not only that even after 27 years they can win the state, but this time they would like to win with such a bang that, they want to make AAP redundant to say Gujarat is not Punjab. And Congress, in any case, is marginalized. They would like to beat it to a stage from where it will have a great difficulty in coming back in Gujarat. And that is what they are going to, I think, flaunt and demonstrate in the whole country. And forget, it's true that Congress, if they get whatever votes, will be getting it for the candidates in the local constituency, the anti-incumbency against specific candidates. And it will be a credit to them over there. But forget Rahul Gandhi. Who else in Congress campaigned across the state? They gave a huge list of their VIP campaigners. And ultimately, none of these people even turned up. Mallikarjun Kharge went to a couple of places, scored a few self-goals and came back. So what was Congress really doing out there? These are questions which will be asked, and I think it is important what is at stake for Mr. Modi if he is going to hoist the flag of BJP so high that the rest of the year now you will find he is focusing not on election but in G20 and various other agenda
to raise the entire level of his campaigning for 2024. Oh yes, and we are obviously not forgetting what's going to be happening in Himachal. Himachal again is where Priyanka Gandhi, Pankaj and Ravi has gone all out. She has been the face of the Congress's campaign, and in case you see the Congress losing Himachal, does this mean this is a vote of no confidence in Priyanka? Pankaj will absolutely say no. So what we'll do is we'll quickly head into a break. On the other side, we are putting our focus on Himachal, and a quick reminder, 6:30 is where you will see the very first numbers on Republic with Arnab and the entire team. December 8 with Arnab is the hashtag. Don't go anywhere. Back on the other side with lots more. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? Welcome back. You continue to be with the election headquarters along with Deepthi and Abhishek and me. Our guests continue to be with us, Sandeep Ghosh, Dr. Sandeep Shastri, Pankaj Sharma and Ravi Srivastava. But first I go across to breaking news that's just coming in. Getting a statement from the Congress campaigner and ex-Gujarat Chief Minister Shankar Singh Waghela using the OBC appeasement on voting day. He said Congress CM is likely from the OBC community. This is in the second phase. He says this. It says 27-year BJP rule is set to change. Playing the appeasement card, Waghela says the Chief Minister will be from the OBC community. Abhishek, first I ask you for your first comments on this this remark by former Gujarat Chief Minister. Well, Shankar Singh Waghela is effectively living a retired life. He just about managed to get a ticket for his son from Bayad in central Gujarat. And the fact of the matter is,
the Congress party, because it was so much into OBC politics with its calm theory, it lost the moorings in Gujarat with almost the entire upper caste segment led by the Patidars, the Patels, shifting in the mid-80s to early 90s, bringing BJP to power. So I think, I don't know what Shankar Singh Waghela is intending, but he is definitely not intending to help the Congress party. And I remember, Rhythm, the Congress actually made this announcement, I think 48 hours ago. They said, and I think Ashok Gehlot was present there, Pankaj, why don't you tell us this? You know, you point fingers at other opposition parties for playing the casteist card. You say, आप तो election ही नहीं खेल रहे हैं. Arvind Kejriwal will say, हम राजनीति बदलने आए हैं. Also, but then you will fight for this. Just to add, the longest serving OBC Chief Minister of Gujarat has been Narendra Modi of the BJP. Pankaj. If some individual, see, he is an individual. If some individual wants to express his opinion or sentiments, he can well do it. You know, he did Congress President Mallikarjun Kharge announce anything today? Or did the Supreme Leader of the party, Rahul Gandhi, announce something today? No. So, I mean, Shankar Singh Waghela's statement should not be taken, you know, so seriously that way that he is trying to influence the election on the polling day. It's not like that. You can take it seriously at your own expense, Pankaj Sharma. He has a right to express. It was an innocent statement, you will say. Like it was an innocent walk. Like the innocent quickly, walk. Sandeep, quickly. Then we need to head into a break. Quickly, Sandeep. Just 10 seconds. I don't know whether it's a Freudian slip. Pankaj said the supreme leader of the party, Rahul Gandhi. This is a new term used by everybody from Congress. I wanted to underscore that. No, I am not from Congress. I am not from Congress. We have to yes, discuss he is that. the supreme leader of his party. We have to discuss that. Deepti, if you want to take a short break, otherwise we can discuss it now. Yes, Pankaj, we'll head into a quick break. On the other side, we'll go back to Dr. Sandeep Shastri and Ravi, and we'll also be looking at Himachal. And as always, remember, Republic is going to be your election news headquarters, decoding every number, putting out the first numbers, and getting you the big picture on the other side of this very quick break. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा, शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty...
You with Election 2022 live coverage on your election headquarters, Republic TV. Just a short while from now, the first opinion polls are going to, the exit polls are going to be out to really get a sense of the unmissable numbers that are going to come in. But first, we stay across with the controversy that we were with. Our guests continue to be with us. Sandeep Ghosh, Dr. Sandeep Shastri, Ravi Srivastava is also with us. Ravi, if I can actually ask you the question that we asked earlier, it's Vaghela's comment is 27-year BJP rule is set to change. And like Abhishek says, as he plays the appeasement card, he forgets that Prime Minister Modi himself is the biggest OBC chief minister that Gujarat has had. I think it's a democracy of Congress where leaders are allowed to speak their own mind. They make comments about this political situation, and there is no gag order kind of a thing. I have not heard any, passing comments or significant comments coming from the BJP leaders, because I think they follow only a code of conduct as far as political statements are concerned. So I don't read much into it. Yes, Mr. Modi himself, being a OBC, was 13 years, he's the chief minister in Gujarat. So I think I don't see any kind of appeasement politics at this age when there are 10 minutes to go for the closure of the polling. So it's just a passing comments and does not need much of the reading between it. Ravi, what about when Arvind Kejriwal actually said that you should have pictures of Lord Ganesh and Goddess Lakshmi on currency notes? What was that, Ravi? That's not an appeasement politics anyway. That's a simple comment. I haven't even used that word. What was that? No, it was an innocent comment. It has gone out. Otherwise, other channel is calling up. I'll tell them to stop it, please. Okay, I think we've just lost that connection also with him. Dr. Shastri, apologies, but after this break, we will, come to you, and I'm going to be looking at what's happening in Himachal, because is that just going to be about BJP and the Congress? Will the Congress really, many say, has a chance, Abhishek, in the state of Himachal? Would that be possible? What do the numbers till now indicate? On the other side of this quick break, we are back with our non-stop rolling coverage. December 8 with Arnab is the hashtag. And the first numbers is what you will see on Republic starting 6:30 this evening. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं।
शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes. मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharma. All right, we are back with our conversation as a build-up to the exit polls for Gujarat and Himachal. We have been discussing Gujarat for an hour almost now. Let me also introduce our guests this hour. And we have Binay Singh, political analyst, I believe is joined. Live from Delhi. I think we're waiting for Binay Singh to join. PKD Nambiar, political analyst, live from Delhi. And let me just read the exact list of our guests. Binay Singh is going to join us in a while. PKD Nambiar, political analyst, joins us live from Delhi. Saurabh Shah, senior journalist, live from Mumbai. And he said yes. And we have Dr. Irsan Trivedi, political analyst, leans towards the Aam Aadmi Party, joining us live from Ahmedabad, where voting is still happening. And Tanvi Pruthi, political analyst, joins us live from Delhi. As I said, we have been discussing
Gujarat for almost an hour now, Deepti. So shall we move to Himachal, Rhythm? Yes. If we can begin that Himachal conversation and take it forward. Absolutely. So as we're going to Himachal, my first question then to all the guests who are joining us right now, I first come across to Saurabh Shah, senior journalist joining us live from Mumbai. Saurabh, we've seen in the last elections in Himachal, BJP backed 44 seats out of 68. Congress managed to secure only 21 seats. Of course, we know that since 1985, no government has come back to power again. It keeps alternating between the BJP and the Congress. What do you think will work in favor of both the parties this time as they're going for election results in Himachal? According to me, all the voters across all the states of India, they know the benefits of double engine Sarkar. This is not just a slogan, but whatever the government is in Delhi, you have to have that government in your state. So the voters have understood that whatever Modi is doing in Delhi across the nation will be done in his own state also. And that is the final result. It will show in Himachal, it will show everywhere, including Gujarat. Okay, I think, Deepti, the argument is that if Modi magic is working in Gujarat, it would evenly work in Himachal, obviously. So that was in response to Rhythm's query as to whether this time also Himachal would follow the pattern it has since 1985 of changing the governments, or as the BJP slogan suggests, that don't change the government but change the tradition. You take it forward. Abhishek, that has been the pitch of the BJP, but I don't know what will happen in Himachal, because again, PKD, this is a state where the winning margins are actually sometimes very, very narrow. Smaller constituencies, largely a bipolar contest between the BJP and the Congress. The AAP goes there, but then, the AAP is completely vanished from the state of Himachal. What is your assessment of what possibly could work either ways? Priyanka Gandhi has been the face of the campaign. Rajiv Shukla has provided a lot of support to the Congress here. That's why he was fronted. On the other side, issues like the one rank, one pension, issues of the old pension scheme, when it comes to a lot of government employees, issues of mehengai, issues of jobs, PKD, do you think that could just get tricky for the BJP here? Well, one thing I must tell you, that there is a slight change, it is true that in the Himalayan, the Himachal was always been changing the government every 5 years. They always look for another government to come in. But there is a trend which has been a new trend. If you really look at it from the Kerala, for an example, this is the same trend that they never re-elected another government. Uttarakhand was also not an exception. But if both these places, in the last 2-3 years, we have seen that the people wanted to have continuity. Unless and until there is a strong anti-incumbency against the existing government. In this case, in Himachal, I am not saying that it is the perfect government. It could have been done much more, and it may have an option to do more and more. But yes, it's as the first time in the history of Himachal as a state, the amount of infrastructure development, the aims coming in, a large amount of development, and then in the speed in which this development is been taking place is very visible, and every Himachali can feel that. All those people, and so tourism has got a major, one of the major financial attraction for that particular state, and it has all helped Himachal to do much better than what it was always doing. You need to understand that Himachal was always more of like a Sarkari job was one of the major attraction. Today, it has got 2 or 3 major industrial hubs within Himachal. So I think you should not be surprised if what the about the BJP comes bypolls? back What in about the power bypolls with of last a year? majority because of is that going to be a trailer? Let me take that question to Tanvi also. PKD, she hasn't spoken. Let's take it to Tanvi, then we'll get in Saurabh, and perhaps we'll have Binay Singh also with us. Tanvi, what is your assessment of the Hill state? A very tiny state, but again, the question to be asked is, can the Congress even win this tiny state? On the other side, can the BJP beat, anti-incumbency here?
two points I would like to make, and my point number one, I think what Congress effectively was fighting in both Himachal and Gujarat was not just the mighty BJP, which has a lot of resources, both human and material, but the rising tide of Aam Aadmi Party. So, so for Congress to be in this election was not easy at all. And I think they have successfully sort of covered the Aam Aadmi Party wave in both Himachal and Gujarat. Of course, the exit polls will be a testament to what I'm saying, but let's wait for an hour or so. And my point number two, for fighting BJP in Himachal, the kind of campaign that Mr. Modi has done, that clearly proves that there was this dilemma that Himachal was not Anki Dodi state for them. And that double engine sarkar notion was not working with the people. Because if everything, like my friend Mr. Nambia just mentioned, if things were so smooth for the people of Himachal to realize. It did not work in Haryana. Yeah, if everything was so easy, then the Congress has perfectly made the state elections, relied on the state campaign, particularly on the state issues, and not make it, a Rahul versus Modi fight or a Priyanka versus Modi fight. So that has worked for the benefit of the Congress in the Himachal state, and I think that they will bear the result, because you just mentioned the number of seats for the Congress party in the 2017 election. But look at the vote share. BJP won these seats by a vote share of 48%, while Congress managed to get a vote share of 41%. 41% is a very good vote share. And I think that they will be able to cover it up this time and win better seats than BJP. So I'm very hopeful for the state of Himachal. I'm very happy with the kind of campaign, the state issue-based campaign that Congress has run against the BJP. And I'm really hopeful for, that they will form the government this time. And the double engine sarkar notion will be put to rest. Would there be a natural, as a natural corollary, Tanvi, if the Congress really wins in Himachal, the only state where Rahul Gandhi has not gone once, Rhythm, you can take on that. That's right. One rally, one day in Gujarat, I think zero in Himachal. How do you put it to Tanvi? And Tanvi, the question, I'll just add to Abhishek's question, is this a realistic proportional estimate? A state Rahul Gandhi, Himachal, does not go to, possible, inversely, the only one that is proportional to give Congress a rise? So we were not discussing Gujarat, so I did not mention, a lot about Gujarat. I was sticking to Himachal, but I want to remain my stance, and I said that the election was not about Rahul versus Modi or what Rahul can do for the people of Himachal. The question was what the state leadership is there doing. The people are eventually going to vote for the state government. They're electing their chief minister. They're not electing the future prime minister. And I think that's what the Congress did best. Let's rely on the state issues. Let's rely on the state leadership. Let them then why go to Gujarat? Battle. I think it was a wise choice. Then why go to Gujarat? How many rallies did he do in Gujarat? Please answer, Niranjan. How many? 1, 2, 3? They were not many. I think Rahul Gandhi did a wise choice of staying out of the state elections. Otherwise, this would have been a Modi I think versus that Rahul. is true. That is true. The reason being that Rahul Gandhi not attending these elections, as Abhishek said, would have been going in the favor of Congress. Congress understood that Rahul Gandhi is a disaster when it comes to election or a phase of in elections for the Congress. There is no other reason for a top leader. May I ask you, who is the topmost leader of Congress today? Who is the topmost leader, or who calls the bucks in Congress? It is Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi or Sonia Gandhi. Only these three people. Now, despite that part, BJP has got one tall leader as its brand ambassador. The face the country is looking at as Narendra Modi. But PKD and Tanvi, the truth is also, Abhishek and Rhythm, that Rahul Gandhi is the biggest asset for the BJP. And Charu will vouch for it. Before I go back to Saurabh and to Dr. Trivedi, Charu Pragya, you will vouch for it. That is why you had every BJP neta saying, Rahul Gandhi क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको बुलाइए rally करने के लिए. Because you will wait for him to, make some kind of a comment. You will create a controversy. Isn't that true, Charu? And Charu, then you would also say, hey Ram. No, Siya Ram. Need BJP to help him create a controversy. I think he's got this unusual knack and talent for it.
every time he holds a mic in his hand, he manages to create a controversy. And I really don't understand why he doesn't do better research or get better speech writers. That being said, it is very clear why Rahul Gandhi did not come to Gujarat. And the reason is that he knew that he's not going to turn around any votes or gain more of a following while he's in Gujarat. That has been clear for a very long time. So for a political party which claims it is doing a whole Bharat Jodo Yatra across the length and breadth of our beautiful country, and he's doing it for political reasons, to not touch upon both the poll-bound states, it's not just weird, it is unbelievable. That is not the way politics is done, and there is no shame in getting down on ground and working hard and meeting people. I don't know why Mr. Gandhi thinks he's above all that. In my party, the junior-most Karyakarta will rub shoulders with the senior-most leaders and work around the clock to ensure our vision for the future is explained to the people and a report card of the past is presented to the people. That is our job. We are supposed to do that. Why does Mr. Gandhi shy away from doing it? Is it because he thinks that even if he attempts... All right, Charu, hold on to your thoughts. We'll come back to the discussion. But then a breaking news development coming in. That's huge jump has been reported in voter turnout post-afternoon, and it now stands at 65% by 5 p.m. That's a big one. Remember, in first phase of polling in Gujarat, the voter turnout got stuck at 61% by 5 p.m. and by the time the final tally came, it was 63%. Now it's 65% by 5 p.m., which means you add a couple of points more and it's going to go to 67%. It's still about 3 or 4% less than 2017 rhythm. But then brisk polling happening in the second half of the day, at least so far as the second phase of polling is concerned in Gujarat. Absolutely, that becomes very crucial. I also want to get in now Dr. Irsan Trivedi, political analyst, who's also joining us live from Ahmedabad. How are you looking at this voter turnout, Dr. Trivedi? Because this is clearly an indication that people have come out to vote. We've also seen in Gujarat massive number of rallies by the Prime Minister, the Home Minister, the entire leadership in the BJP. How do you think this will work out? Is this going to be a triangular fight this year, according to you? See, in the last election was of Hajj. That means Hardik, Alpesh and Jignesh, HAJ. And this election is fought on based of Ram. That is Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal and Narendra Modi, sir. So I think what I can feel is that the turnout. The first phase was little bit on the lower side. That 6% voting was less. And that was, I was just thinking as a political analyst, towards this, the people who are somewhat, dissatisfied from BJP, the supporters of BJP who didn't get tickets, they might have stopped their supporters to vote on particular that, but second phase election, second phase voting, which is showing around 65% right now and may increase up to 67, 68. So I think it will turn out to be, especially this is a city area where BJP is holding a strong hold. Of course, here they will give a very good fight. For the Congress. I'm thinking that if the Congress is losing roughly around 8 to 10% of the vote share, then it will be a trouble of it, because it is a fight for their sustainability, their availability. Because in 2017, they got almost many MLAs, but out of them 17 MLAs went into BJP part, and this is a battle where Aam Aadmi Party will create a wonder factor. How many seats, Dr. Trivedi, are you giving to the Aam Aadmi Party in Gujarat? Very briefly. What's the number? Arvind Kejriwal is famously sitting on every channel giving, numbers. He's saying Bhavishwavani hai, isko yaad rakhiyega. Yeah, as per Election Commission of India, exit poll, they have mentioned that not to disclose before 5:30. So I think I should hold to that particular segment, that I should not speak about the right now. आप भी पर्ची पर टिक कर रख लीजिए, 6:30 बजे के बाद आपसे भी आपका नंबर पूछेंगे. But on that note, before we go back, मैं बता दूं. अच्छा, Charu wants to speak on behalf of the. एक दूसरे का बता दो. Irsan can tell about the BJP and Charu can tell about the Aam Aadmi Party. Okay, PKD is saying 0. So what we'll do is truce. Truce right now. It's not. We are not taking numbers like this here. But what we'll do is that this election season, ladies and gentlemen, you've seen tons of controversies. Controversy after controversy, whether it's the Aam Aadmi Party, whether it's the BJP, or whether it is the Congress.
And you see this, Abhishek, in rhythm almost in every election season. The latest being what you heard from the Congress party today. The Prime Minister goes to cast his vote. He is walking, and you will hear the BJP saying this was just the Prime Minister doing a simple walk. But the Congress sees red. The Congress has reported this now to the Election Commission. They say EVMs mein gadbad hai, slow voting ho rahi hai. So do these controversies really help to, rake up numbers as far as the parties go? We don't know anything about that yet, but this is just a sneak peek into the many controversies we've seen this election season. As Gujarat witnesses the second and final phase of polling today, insult politics to cash for ticket claims. The Gujarat election season witnessed it all. From the Uniform Civil Code issue, एक ऐतिहासिक फैसला है। मुझे दुख है कि विपक्ष के लोग सभी समाज को, सभी नागरिकों को एक समान कानून का हक मिलने से क्यों रोकना चाहते हैं। तो यूसीसी का मैं शुरू से खिलाफ रहा हूं। हमने जस्टिस चौहान साहब जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनको सामने लिख कर दिया कि आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है। बीजेपी यूसीसी की बात इसलिए कर रही है कि वो भारत के मुसलमानों का कल्चर खत्म करना चाहती है। To big assertions on building anti-radicalization cells. देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, प्रोएक्टिव एक्शन है, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी एक्शन है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार यहाँ पर सेल चालू हो जाएगा, बहुत सारे राज्य भी इसको स्टडी करके अपने अपने यहाँ लाएंगे। लेकिन सर, इस पर अभी से विपक्ष राजनीति करने लगा है। वो ठीक है, उनका काम है, वो करे, जनता को निर्णय करना। To facing charges of cash for tickets. सर्वे में आने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे पता था कि सर्वे रिपोर्ट दिल्ली से किया गया था, 25-25 लाख रुपए खर्च की ये रिपोर्ट्स किया गया था, तो सारे पैसे की बर्बादी है, बस लेन देन का व्यापार ही चल रहा है। To all out insult politics. आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? And to controversial videos of AAP leaders insulting Swami Narayana. વસ્તુ ઉપર આપણે માનવી છે, છતાં આપણને કોઈ કહે તો આપણને તકલીફો થાય છે, સાચું કહ્યું। એટલે આ બધી બાબતોનો નિષેધ કરવો જરૂરી છે। હું નિષેધ કરું છું કે આ લોકો ખોટા છે। A slew of issues dominated the narrative. It's been a controversy-ridden campaign, but who will emerge on the top despite it all remains to be seen on December 8th. Bureau Report, Republic TV. Yes, so December the 8th, remember that's the date, Abhishek and Rhythm, that we've been eagerly waiting for even before the elections began, because many said that a lot in this election actually just depends on how far is the BJP willing to go. Will the BJP, break its own record in the state of Gujarat? What about the hill state of Himachal? And I'm sure all our guests have an opinion on that. But what we'll do, ladies and gentlemen, is quickly head into a quick break. Remember, it's close to about 5:20. Polling has now closed in the state of Gujarat, and we are now focusing on the exit poll number. Sharp at 6:30, Arnab and the entire team is going to be bringing you those numbers. Non-stop live coverage continues after this very quick break. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests.
YSRTP Chief Vice Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. Welcome back. Elections 2022. That's our non-stop rolling coverage. And as always, we at Republic believe that every election rhythm has a lot of important implications. There's going to be that big national picture. Yes. The story is not just about the BJP, ladies and gentlemen, because Modi is the factor in the state of Gujarat, but also about the Aam Aadmi Party. Is the Aam Aadmi Party that X factor in the state of Gujarat that possibly could change the politics in the state? Can it actually dent the BJP's chances? The BJP, remember, has been in the state of Gujarat for 27 long years. On the other side, what about the Congress Party? Remember, the Congress Party, Abhishek, is fighting for its relevance. Rahul Gandhi right now is on a Bharat Jodo Yatra, but what about his own party? And the absence of Rahul Gandhi from Gujarat, from Himachal, is that a new model that the Congress is using? Will that work? We do not know. I think Abhishek quickly wants to make a point, then we'll go back to our guests. I'm afraid if the Congress leaders at the state level really want it that way, because I know for a fact, for example, in Gujarat, there have been candidates of the Congress party this election who have told the state leadership, please don't come. Forget about Rahul Gandhi, even you don't come. We will handle it locally. I think we are more confident of managing things on our own. So I think that's becoming the model for the Congress party, unfortunately, where the
top leadership is not very relevant. And that's something which I think the Congress representative here or someone who's speaking on their behalf have to explain. Is that really acceptable to the top leadership that their cadres, their second rung or third rung actually don't miss them? And, Saura, why don't you come in on this? You're a senior journalist. Is there a difference in how the BJP will approach an election versus the Congress? The BJP will go to national issues. We've seen much of that in Himachal. We've seen much of that also in Gujarat. Now, what the Congress has attempted to do, minus Rahul and minus, much of Priyanka, I think Priyanka's rallies were also cancelled the last minute in the state of Gujarat. But is this a hyper-local model that the Congress now is wanting to work with? Do you think in today's day and time that could really find resonance with the voters? Let me be very clear that there was no triangular contest in Gujarat. AAP was just a media-made nuisance. The leaders of AAP, some Italia or some Isudan, they are going to lose their seat, candidacy. If they win, if they can save their deposit, it will be a very big moral victory for them. You were asking about how many seats AAP would get. I would say single digit, and that too a very lower single digit, which means anything between 1 to 5 seats at the most. BJP is not competing with AAP, neither it is competing with Congress. BJP is competing with itself. They want to increase their seats from 127 to any number. And I think that it would be more than 149. 149 was a record of Madhav Singh Solanki when he was a chief minister in 85. Yes. And that also 149 seats Gujarat Congress got in Gujarat because of the sympathy factor of Indira Gandhi's assassination. But here, just on the only one point, and that is progress. Everybody has seen Gujarat's progress in these 27 years. It is pro-incumbency. It is not, and it is just a media-made or Congress-made hype that it will be anti-incumbency. You go to any village of Gujarat, you go to any city of Gujarat, you drive on any road, the 27 years legacy is getting more and more votes to the Gujarat BJP. Okay. So if you're saying that, then I also go across to Tanvi Prithi, political analyst, also joining us from the capital. Tanvi, this is the kind of situation that we are seeing, that the BJP will win. They're saying it's no secret. It's about how much the margin is going to be. That is largely being debated. So is this going to be a margin that we think of 150, or do we think it's going to be 115? I remember in last time in 2017 exit polls, all pollsters predicted that BJP will get more than 120 seats, 120 to 150, and they were stuck at 110. So even this time also, I am very confident that Congress will maintain its vote share, its seating pattern intact. And I agree with the panelist who just spoke before me. Sir very rightly said that in Gujarat, Aam Aadmi Party negated. They have no space, and it was just a media made, it was actually a fragmentation of the Indian media, and there was no presence on the ground. So I think that the anti-Indian... But Tanvi, it's easy to, I think, put the blame on the media. For some time, if you remember, the narrative that was pushed in the initial few days, and Charu, I'll get you on this, but then first Dr. Ihsan Trivedi, the narrative that the Aam Aadmi Party brought in is about schools, it's about education, it's about healthcare, and then we actually did see a lot of push by the BJP also on those very basic issues of education and health. Until you had the Aam Aadmi Party and the tons of alleged scams that tumbled out in the national capital, Dr. Trivedi, but those are also issues that you will have to answer. Because, what happened is that many say the Aam Aadmi Party peaked too early. And then you had no answers to these scams and these revelations that were made in the national capital. See, first of all, I'm so happy that BJP and Congress, they are together for the, oh my God, yes, you are right and you are right.
and Aam Aadmi Party will get this much less seat or will not get, or the deposits will be lost or something. I'm so happy that BJP's Congress is now they are showing their true togetherness. So I'm okay. All the best for you. And second thing, yes, Aam Aadmi Party did affect. Did actually affect BJP campaign. Here BJP was, they are just telling them, okay, 2002, all the riots now, and since then we are not seeing any riots and all that. But what about the police grade? Police pay grade. They were not raised until and unless Arvind Kejriwal here made a press conference and suddenly BJP realized, oh my God, this is like, we should have done. But what about your education model scam? What about your labor scam? What about the liquor scam? Don't you think that the voters realize that they cannot trust you, Dr. Trivedi? That's the reason why today everyone on the panel agrees that the Aam Aadmi Party was just a creation of the social media. Did they mention Manish Sisodia's name in it? So it's a creation of BJP social media. It's a creation but that does not of BJP mean that IT cell. That does not mean that he's not going to be charged. They tried to run a trial on media and social media before actually went to the court. Charu. So it's all well and good to defend all this, but I want to make some things clear. The first plank of Bharatiya Janata Party has been development. We are the ones who say Sabka Saath, Sabka Vikas. So Vikas has been the basic plank on which BJP has been working since Modi ji has taken over, not just as a national leader, but while he was in the state of Gujarat as well. So for another, I did not interrupt you, even though I disagree with every single word out of your mouth. This is not my style of debating, and I will request the anchors to moderate and ensure he doesn't speak in between. If he does, I will speak non-stop when he's talking. Okay. No, then you need to learn some politeness, and maybe you should take a break till you learn politeness and come back on television. So, subsequent political parties, when they talk of development, you're teaching me. Okay, please go ahead. I'm sorry, Deepthi. If this man does not have basic ethics for a debate, I refuse to talk one second. No, the shoot and scoot politics has been a hallmark of the Aam Aadmi Party. I think if you want to ask questions of others, please be willing to listen to criticism. There will be questions that will be asked of you. One second, Dr. Trivedi, Charu did not interrupt when you were making a point. Please extend her the same courtesy. Listen to her. Yes, Charu. Yeah, so a lot of political parties after that, and most especially Aam Aadmi Party, is trying to take a leaf out of BJP's book. And if you see these similarities in a very calculative manner, you will see them too. So when Modi ji talks of Vikas, they think they can talk about schools and hospitals and get away with not delivering on any of those fronts. But we'll come to that. Have you noticed posters of Kejriwal holding the Tiranga in his hand? Now all these things are very, very new. They have just creeped into Aam Aadmi Party style of politics recently. But mere hearsay from other things, mere propaganda and posting pictures everywhere or promoting work that they have not done either in schools or hospitals is not going to work anymore, because the fact of the matter is that the educated and the smart people of India can see through their talk now. When we ask an RTI query and we say how many new hospitals or hospital beds were added, or when we ask how many new schools did you open, or how much money did you actually spend on the education system, the answer that comes through these RTI queries is dismal. It is actually dismal. So when they want to sell the Delhi model in Gujarat, people in Gujarat already know that 1/3 of the schools don't even have a principal. Half the schools don't even teach science. So that does not encourage the people of Gujarat to support a lying political party like Aam Aadmi Party. And adding to that, the very recent scams that have surfaced, the liquor scam, the jail minister sitting in jail scam, getting a champi from a rapist, all these things actually show the true face of Aam Aadmi Party. So they might say free का हम पानी दे रहे हैं, लेकिन आपकी कॉलोनी में तो टैंकर आ रहे हैं, तो बबल तो वहीं पर बर्स्ट हो गया. So Aam Aadmi Party is actually not a contender on ground in Gujarat. The only place where they feel that they are a contender is when they sit on a national debate or when they are posting something on social media. On ground in Gujarat, their presence is nil, and I can vouch for this because I was in Gujarat and I have seen their non-campaign. All right, Bina, we are just awaiting for Arnab to join in
any time now, and then we take it to the next level. But Binay, since you joined, you have not spoken, I believe. We want to understand. We have been discussing little lower than expected voter turnout in Gujarat, despite the very high voltage campaign that the BJP, the incumbent ruling party, ran in the state. Also, this triangular contest thing in Gujarat, my own understanding is it is not. More likely, it's more a bipolar contest between the Congress and the Aam Aadmi Party instead of a triangular one, including the BJP, because BJP by far remains much ahead of the other two parties. You think that this lower voter turnout is going to have some consequence for the BJP's margins? Abhishek, I don't think it is a bipolar or triangular fight. It is a one-sided, it is not even a fight. It is a one-sided victory going to be for BJP. But for one thing, I am very happy, Abhishek, that in the second phase, the voter turnout is a bit high. And thanks to the Election Commission, they have appealed. Thanks to our Prime Minister, the Home Minister also said in the morning that we must take it like a festival. And we saw the incumbent Chief Minister of Gujarat. He came like he is celebrating a wedding ceremony. So when it comes to low voting turnout, as a citizen, I feel betrayed. You must go to the booths, you must vote for the ruling party or for some other party. If you are not satisfied with anyone, you go for the nota. You have the third option. But the lower voter turnout, it is not good for the democracy, and for such a democracy which has come after a lot of pain. And I think voting is the first step. You march on the road of democracy. This is the first step you take. It is the beauty of this democracy. It is our right and we must exercise the right. So it is not a triangular fight. It is not a bipolar fight. It is a one-sided victory going to be for BJP. And BJP is going to have a historical massive win this time in Gujarat. Historical massive. But the BJP will create a all right, Binay says that there is no contest. Yes, Binay says the BJP is winning a landslide in Gujarat. Charu is obviously beaming right now. But is that what the exit poll numbers will indicate? Very, very shortly. Remember, Arnab and the entire team is back and we are keeping our eyes focused on the numbers. Ladies and gentlemen, the numbers that matter. So do not go anywhere. On the other side, be back. Our non-stop rolling coverage on elections 2022 continues. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है।
The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus, post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Will elections 2022 seal the Congress fate? As the polling ends, is Aam Aadmi Party a factor or not? Can the BJP defeat incumbency in 2 states? Debating tonight at 9 p.m. As the Prime Minister casts his vote, the opposition calls it a roadshow. Election day roadshow is banned, but for them, they may be excused. Has the Modi factor spooked the opposition? Debating tonight, 10 p.m. Hello and welcome to Election Headquarters today on Republic TV. Ladies and gentlemen, 182 seats in Gujarat up for grabs. Polling in both the phases in Gujarat has concluded. Some key on-ground issues hold the fate of the contesting parties. Take a look at the report very soon. Arnab joining us with the numbers on the exit poll. For the upcoming polls, Gujarat is a state which is replete with issues, and each party is raising them. The most stinging issues that remain are those of inflation, unemployment, and water scarcity that have remained unresolved even after so many years of BJP rule. The 30th of October Morbi Bridge collapse, which claimed over 130 lives, is likely to dominate the minds of people when they go to vote to elect the next government. Lack of basic education and health facilities in remote areas of the state are a major issue. If school classrooms are constructed in remote rural areas, there is a dearth of teachers. The lack of primary healthcare centers and doctors also adversely affects health services in the rural pockets. Farmers are agitating in several parts of the state as they have not been given compensation for crop loss due to excess rains in the last 2 years. Complaints of pothole-ridden roads are common from all over the state. The state government and the municipal corporations have not been able to construct good roads or to maintain the old ones. Gujarat also has one of the highest electricity tariffs in the country. People are looking forward to the offers made from the Aam Aadmi Party and the Congress of getting 300 units of free electricity per month. गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो 0 आएगा। हमारी सरकार बनेगी, पुराने सारे बिल माफ,
और आने वाले समय में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। The state witnesses a huge disparity as people pay rupees 7.50 per unit, while their industry counterparts in Maharashtra and Telangana have to pay only rupees 4 a unit. Frequent paper leaks and postponement of government recruitment exams have dashed the hopes of a lot of hard-working youth who are trying to get government jobs, leading to much resentment. With heavy-duty campaigns and a repository of promises, those the citizens view as worthy leaders to address their concerns will finally be decided on the 8th of December. Bureau Report, Republic TV. Ladies and gentlemen, now to the hill state of Himachal Pradesh. It went to polls on 12th of November. Today, the exit polls will show which way the winds blow. But the final verdict of the Janta was out on 8th of December. Here's a look at the high voltage fight that took place in the state. In Himachal Pradesh, 68 seats are up for grabs. Traditionally, it has been a contest between the BJP. सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी। And the Congress Party. आप में से कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? यहाँ किसान होंगे, आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? But this time around, there is a third entrant. Issues in the hill state span from UCC. अरे हिमाचल वालों, लोकतंत्र आया है, अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। Two pension schemes. Himachal Pradesh witnessed a record voter turnout at 75.6% in the assembly elections this year. कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। And now it remains to be seen if the state ducks the traditional alternating trend. The final decision of the 55 lakh voters of Himachal Pradesh will be clear on 8th December. Bureau Report, Republic TV. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus, post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people as you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप?
truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख। The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Elections 2022 seal the Congress fate. As the polling ends, is Aam Aadmi Party a factor or not? Can the BJP defeat incumbency in two states? Debating tonight at 9 p.m. As the Prime Minister casts his vote, the opposition calls it a roadshow. Election day roadshow is banned, but for them, they may be excused. Has the Modi factor spooked the opposition? Debating tonight, 10 p.m. Terrorists name 56 Kashmiri Pandits and create a hit list. Recent list of 57 employees of our community has been issued by TRF and they are threatened to be killed. So this is the breach of security. Can another Exodus-like situation be allowed? और अब से अगले 30 मिनट में, जी हां, अगले 30 मिनट में सबसे पहले गुजरात और हिमाचल के नंबर लेके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ होगा। हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी टीम इस समय स्टूडियो में और ग्राउंड पे है। सुचरिता, सोहेल। बिल्कुल 182 सीटें जिन पर वोटर ने अपना मैंडेट सील कर दिया है और अब से थोड़ी देर बाद आपको आंकड़े दिखाएंगे कि किसको सरकार बनाने का मैंडेट गुजरात ने दिया है। इसी के साथ साथ हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। जी और इस एग्जिट पोल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे जिनका आपको इंतजार है। अर्नब गोस्वामी अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगे और गुजरात और हिमाचल के नतीजों से पहले क्या तस्वीर बनने वाली है ये हम आपको बताएंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल, और मैं तो देखिए गुजरात के बारे में कह सकता हूं बहुत आत्मविश्वास से कि जिस तरह से ये इलेक्शन गया है, मेरे ख्याल से देश की राजनीति में एक जो कहें कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बेंचमार्क सेट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन किया है और अपना राज्य गुजरात और जिसके वो प्रभारी थे हिमाचल, दोनों के बड़े दिलचस्प आंकड़े होंगे देखने के।
बिल्कुल, जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है, उनके रोड शोज गुजरात ने देखे हैं, उनका प्रचार गुजरात ने देखा, लेकिन उन्होंने प्रचार हिमाचल में भी किया है। हिमाचल ने अपना मैंडेट 12 नवंबर को सील कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद दीप्ति वो रिजल्ट्स हमारे दर्शकों के सामने हम रखेंगे, जो हमारा एग्जिट पोल दे रहा है, पीमार्क का ये एग्जिट पोल क्या कहता है, जनता किसकी सरकार बना रही। और मुझे लगता है ना, तीन बड़ी बातें हैं सुचारिता यहाँ पर। सबसे पहले तो यही है कि क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बीट कर पाएगी, और अगर कर पाएगी, आप सोचिए कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि एक ऐसी पार्टी जो 27 साल से गुजरात में काबिज है और आज तक भी उसको ना कांग्रेस ना ही आम आदमी पार्टी वहां से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल लेक्सिकन होगा। मतलब आने वाले समय में इसके बारे में बात होगी कि ऐसा क्या फॉर्मूला है, क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है जो बीजेपी को इस तरह हेल्प करता है, आम आदमी पार्टी का क्या एक्स फैक्टर वाकई काम आता है। दिल्ली पंजाब के बाद सुचारिता सोहेल, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ भी कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो अगला इलेक्शन यानी जो 27 का इलेक्शन होगा उसका क्या मतलब होगा। और आई थिंक एक और बात जो कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस का रेलेवेंस 2024 की जब चुनाव की बात आएगी तो कांग्रेस कहां खड़ी होगी। एक और दर्शकों को बात बताने की है बिफोर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले, वो ये कि ये जो हम आंकड़े लाने वाले हैं, एक तो हमने खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो अपना एक गठबंधन किया था पीमार्क के साथ, उसके आंकड़े आएंगे। दूसरा ऐश्वर्या मैट्रीज, एक पोल ऑफ पोल में होगा जिसमें 7 बजे लेके आएंगे, जिसमें मैट्रीज होगा, जिसमें चाणक्य होगा, जिसमें सी वोटर होगा। तो आपको एक बहुत ही वृहद किस्म का तस्वीर जो है गुजरात और हिमाचल के बारे में देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। लेकिन एक बात और जो इसमें से निकल के आ रही है सोहेल और सुचरिता, वो ये, हमारे साथ गेस्ट यहाँ पे पूरी टीम है। एक ऐसी बात अभिषेक, हम मतलब हर बार बोलते हैं सुचरिता की क्या डिफरेंस है सोहेल बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन आज एक सवाल ये है कि गुजरात की अगर बात करें तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी अभिषेक? आई विल आस्क यू, क्या सिमिलैरिटी है बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात को लेकर? बताइए। पता क्या, दोनों के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है अभिषेक, दोनों के पास गुजरात में स्टेट लीडरशिप नहीं। बीजेपी ने कोशिश फिर भी बीजेपी ने कोशिश की जीतूभाई वघानी के साथ, विजय रूपानी के साथ और अभी हर्ष सांघी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं, भूपेंद्र पटेल को भूल गए, अभी तो मुख्यमंत्री पटेल से तो कोशिश जारी है ना। हाँ। भूपेंद्र पटेल के साथ कोशिश जारी है, लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होता है फिर आ जाता है बात सेंट्रल लीडरशिप पे, और वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। और मोदी और शाह को टक्कर देगा तो देगा कौन? जो बात आप कह रहे हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उस पर क्या कांग्रेस कैपिटलाइज कर पाई है? क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाई है? वो हमने नहीं देखा है, वो हमने होता हुआ गुजरात में नहीं देखा। भूपेंद्र पटेल के साथ उनके चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन चेहरा आगे नरेंद्र मोदी का ही रहा है, ये सब जानते हैं। बड़ी चीज ये कि कांग्रेस इस बार चुनाव में भी नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव लड़ी नहीं रही है, और कांग्रेस से ज्यादा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल मेहनत करते नजर आ रहे थे। और एग्जिट पोल बताएंगे अरविंद केजरीवाल की मेहनत कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, और एग्जिट पोल के जरिए पता चलेगी तस्वीर। लेकिन बड़ी चीज जो सभी के समझ से परे, 27 साल से अगर बीजेपी लगातार बनी हुई है तो वो कोई ना कोई रीजन ग्राउंड पर जरूर है। देखिए सोहेल, उसमें से करीब 13 से 14 साल तो नरेंद्र मोदी के खुद रहे, उसके अलावा उसके जो ऐतिहासिक कारण है कि 80 और 90 के दशक में जब कांग्रेस पूरी तरीके से खाम थ्योरी पे चली गई, तो एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो हुआ जातिगत, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और जो उनकी पहले हिंदुत्व की राजनीति और उसके बाद उसमें जो विकास, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी के समय से आई, तो वो दोनों का जो एक मिश्रण बना, एक कॉम्बिनेशन बना, उसको तोड़ पाना मेरे ख्याल से उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को कभी मिला नहीं। अभिषेक, लेकिन देखिए जैसी बात आप गुजरात की करते हैं ना, गुजरात की धरती ऐसी है जिसमें राजनीतिक तौर पर मैं बोलूं तो उसने हमेशा देश को बदलने वाले लोग थे, है ना। मैं कह रहा हूं महात्मा से लेके पीलू मोदी तक, मीनू मसानी से लेके नरेंद्र मोदी तक, यू टॉक अबाउट दीज लीडर्स, आप इन कैरेक्टर्स के बारे में बात कीजिए। चाहे आप महात्मा के बारे में बात करें, आप पीलू मोदी के बारे में बात करें, आप मीनू मसानी के बारे में बात करें, और या आप सरदार पटेल की बात करें, आप बात करें नरेंद्र मोदी की, तो जब, लेकिन इस बार जब ये इलेक्शन हो रहा है 27 साल से, नरेंद्र मोदी ने एक भी बार ऐसा मौका नहीं दिया। पिछली बार हल्का सा ऐसा लगा था, हल्का सा, कि बीजेपी शायद हल्की सी हिल गई है, 99 पे जाके अटकी थी। नहीं, बिल्कुल हिल गई थी, बिल्कुल हिल गई थी। अगर आखिरी एक हफ्ता नरेंद्र मोदी अगर कैंपेन नहीं करते 2017 में, तो सब कुछ हिल गया। उसके पीछे वो तो इस बार भी कहा जा रहा था ना सोहेल, पाटीदार आंदोलन एक रीजन था।
कारण थे, 3 कारण थे, बताता हूं। 2017 में पहले तो नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थे, तो लोगों को लगता था कि इतने बड़े नेता नहीं है, अब कौन उसकी जगह होगा। सेकंड, दूसरा, जीएसटी तब नया नया आया था, तो गुजरात बिजनेस स्टेट है, वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी है, उनको बड़ा अप्रीहेंशन था कि ये कैसा होगा। तीसरा, पाटीदार, और लेकिन हार्दिक पटेल अब है भारतीय जनता पार्टी में। अरुण जेटली ने वहां पर 3 रातें निकाली थी, रातें उन्होंने स्पेंड की थी वहां पर, तो आई थिंक यू सॉ लॉट ऑफ डैमेज। और अब सूरत में जीएसटी की रेड हो रही है, इस बार जीएसटी की रेड हुई है। इतना कॉन्फिडेंस, अगर आप समझे कि बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है, इस सब में जो एक नया खिलाड़ी आया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सब में जो एक नया खिलाड़ी आया है वो है आम आदमी पार्टी। वो नया खिलाड़ी कितना फर्क डाल सकता है, मैं तो ये समझ रहा हूं, ग्राउंड पे फर्क डाले ना डाले, जैसे एक नए तैराक को, जैसे एक छोटे से बच्चे को सोचा रहता आप स्विमिंग पूल में डाल दीजिए, तो जो परफेक्ट स्विमर होता ना, वो कहां स्विम कर जाता पता नहीं चलता, लेकिन वो इतना छपाक मारता है कि पूरे स्विमिंग पूल में वही दिखाई देता है। तो अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही, और सीट कितना लाएगा वो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ही और बहुत बड़ा कंपैरिजन, बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया, यही हो रहा है। शोर इतना मचाया है चुनाव प्रचार के दौरान, और इसीलिए सब चर्चा ये कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है कि नहीं, क्या आम आदमी पार्टी डेंट कर पाएगी, सीटें निकाल पाएगी, कितनी निकाल पाएगी ये पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इस तरह की स्ट्रेटजी कामयाब होती है? इतना शोर, इतना गुब्बारा फुलाकर कई बार हो सकता है शायद वोटर्स को लगता है कि चारों तरफ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, कम से कम फाइट तो ये लगने लगती है कि बीजेपी वर्सेस आप है। अब वो डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरे को लगता है सोहेल, इट्स बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इट्स क्योंकि आप 30% वोट है, कम कर देंगे ना बहुत कम, तो भी 24% वोट होता है कांग्रेस का। वो 24% वोट तब है जब कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी एक बार गए हैं, एक दिन, वो भी नहीं जाते तो शायद 24 का 25 हो जाता, जो कि हिमाचल में हो रहा है। आपके साथ अमित शाह ने कही थी, अर्नब गोस्वामी के साथ नड्डा ने आपसे कही थी कि एक दिन में कोई पार्टी खड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई अभी भी बीजेपी की कांग्रेस से। और बीजेपी के नेता, खुद वही नेता जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत अभिषेक, वही नेता कहते हैं दीप्ति की अब लड़ाई कांग्रेस से, वही नेता कहते। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इतना डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। इन्होंने दिल्ली से शुरुआत की है, पंजाब इनके पास है। अगर गुजरात में आज आम आदमी पार्टी वर्सेस अ कांग्रेस, जो एक एंट्रेंच्ड पार्टी है, कांग्रेस वर्सेस एन आम आदमी पार्टी कुछ भी कर पाती है। देखिए, वो एक माहौल तो बना लेती है अपने फेवर में। अब आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, उसके पास संगठन नहीं है, उसके पास और चेहरे नहीं है अरविंद केजरीवाल के बिना। अब ये एक प्रॉब्लम बीजेपी में क्या ऐश्वर्या आने वाले समय में नहीं आएगी? आज आपके पास प्रधानमंत्री मोदी है, यू हैव अ मोदी फैक्टर, दैट इज द ओनली फैक्टर इन गुजरात। बट व्हाट आफ्टर मोदी? व्हाट आफ्टर मोदी? आज ये बताइए, पूरे कैंपेन में आज कांग्रेस ने सोचा था दीप्ति की इंदिरा गांधी के बाद क्या नहीं दीप्ति? वो छोड़िए, बीजेपी इज नॉट अ कांग्रेस, बीजेपी इज नॉट अ कांग्रेस, बट अरविंद केजरीवाल इज आल्सो नॉट अ कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नहीं है, और बीजेपी, अभिषेक will agree, आम आदमी पार्टी से डरती है। आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। पार्टी क्या करेगी बताता हूं। बिफोर वी ओपन द डिबेट, मैं आई विल टेल यू व्हाट द आम आदमी पार्टी विल डू। उसको कहते हैं गांधीनगर केस स्टडी। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐश्वर्या जब से बना, हमेशा कांग्रेस के पास। गांधीनगर राज्य की राजधानी है, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस। और फर्क जो है, कांग्रेस पार्टी का रहेगा 45% वोट, बीजेपी का रहेगा 40-42% वोट। आम आदमी पार्टी पिछली साल आई और मजा देखिए क्या हो गया, खेल कैसे पलट गया। 44 सीट है वहां गांधीनगर में, बॉसेस है ना। ओके, अब मैं खत्म कर लूं इस बात को। आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस का वोट शेयर आधा हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। सो आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना करे ना करे, कांग्रेस का तो ऐसा क्या कहेंगे उसको, नुकसान कर ही सकती, बंटाधार कर ही सकती। और मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने कहा है। संगीत रागी कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी आ गए, जुड़े हुए इस समय मुंबई के स्टूडियो से। अर्नब, ओवर टू यू। मुझे देखिए ऐश्वर्या देखिए, हैंडओवर करने की जरूरत नहीं, आप एंकर कीजिए। मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं तो इतने फील्ड में नहीं गया हूं, और आप गेस्ट को पहले इंट्रोड्यूस करिए, मुझे बाद में। फिर मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ अभी शायद संगीत रागी हैं, कई सारे गेस्ट हैं, उनको पहले इंट्रोड्यूस कर ले, उसके बाद दीप्ति आप उनको, सुचरिता आप उनको इंट्रोड्यूस कर दें। जी
हमारी मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद में 2-3 चीजें कहूंगा। ममता काले जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और प्रोफेसर संगीत रागी को आप लोग देख सकते हैं। परमिंदर सेठी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। और कांग्रेस कहां है, कितनी सीटें लेकर आ रही है, हिमाचल में आ रही है, गुजरात में आ रही है, नहीं आ रही है, उस सब पर आकलन होगा, क्योंकि सीटों का पूरा जो एक आंकड़ा है वो एग्जिट पोल में सामने आएगा। आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी जुड़ गए हैं, इरशान त्रिवेदी जी को आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत दिनों बाद रिपब्लिक भारत पर नजर आ रहे हैं और अपना पूरा एक आंकलन भी लेकर आए हैं चुनावों को लेकर, गुजरात और हिमाचल को लेकर। मुझे लगता है कि अगर इस पूरी चर्चा की शुरुआत अर्नब सबकी अनुमति लेते हुए मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार। 3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, आपके जो मीडिया पार्टनर हैं, मैं बहुत सीधी बात कहूंगा कि आज हमारे पास 2 राज्यों के एग्जिट पोल आने वाले हैं, मगर आम आदमी पार्टी के जो मीडिया समर्थक हैं, मीडिया पार्टनर है, वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई गुजरात की बात ज्यादा मत करो, हिमाचल की बात ज्यादा मत करो, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की बात ज्यादा करो। अब मैं तो चुनाव को इस तरीके से देखता हूं कि 2024 के रनअप में आज राज्य के जो इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। अजीब बात है कि जो लुटियन की मीडिया है वो यही कह रही है, नहीं 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 गुजरात की बात मत करो, दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी की रिजल्ट पहले दो, ताकि ऐसा ना लगे कि अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में 20, 25, 30, 35, 40% वोट नहीं मिले गुजरात में तो बुरा ना लगे उनको। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, भाई पंजाब में इनकी सरकार बनी, हिमाचल में आम आदमी पार्टी है कहां, है कि नहीं है? नील बटा सन्नाटा पूछता है भारत कहां है। आजकल बात क्यों नहीं हो रही है? जब सत्येंद्र जैन को अंदर किया था करप्शन के केस में, तब सोहेल क्या कहा था इन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने कहा हम तो हिमाचल में सरकार बना रहे, उसको रोकने के लिए सत्येंद्र जैन को अंदर किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आज हिमाचल पे कहां है? मैं जानना चाहूंगा उनको वहां पे 25, 30, 35, 40% वोट मिलने वाली है कि नहीं। भाई राज्य सरकारों की बात करो, ये क्या दिल्ली म्युनिसिपैलिटी पे ये तक वाले सुबह से दिल्ली म्युनिसिपैलिटी करिए आप दिल्ली म्युनिसिपैलिटी। मैं राज्य सरकारों की बात करूं, कौन राज्य सरकार बना रहा है हम जानना चाहते हैं। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ये, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी वो। अरे भाई ये क्या हो रहा है भारत के मीडिया में, और आप देखते हुए भी होने दे रहे हैं ऐश्वर्या जी। तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिल जाए गुजरात में, वो जो देखना पड़ेगा एग्जिट पोल क्या कहे, तो मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी की नेशनल लेवल की एंट्री हो गई। मगर अगर इतना कुछ, इतनी कोशिश, धन दौलत, पूरी तरह से प्रेस्टीज गुजरात में लगाने के बाद अगर 25% क्रॉस नहीं करे, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा धक्का होगा आम आदमी पार्टी के लिए। इसलिए मुझे आज के चुनाव में मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की नेशनल एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसी को जानने की जरूरत है। बाकी आप जरा इस डिस्कशन को आगे ले जाइए। कितने मिनट में आने वाली है रिजल्ट? 10, 15, 20? अभी आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली म्युनिसिपैलिटी से शुरू मत कीजिए। सुचरिता, ये सारा चल रहा है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का रिजल्ट, ये क्या हो रहा है? हाँ, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं म्युनिसिपैलिटी नहीं बनी, मगर मैं कह रहा हूं आज कि आज दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल सही क्या हो गया हिंदी चैनलों को आज? आपने बताया ना अर्नब, अभी ये सब हिल गए। वो लुटियंस मीडिया है जो बताना चाहता है कि गुजरात में कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो भाई दिल्ली के एमसीडी में बता दें, दिल्ली के एमसीडी में कुछ सीटें ला रही है आम आदमी पार्टी, तो उससे बैलेंस आउट कर दे, उससे जरा बराबरी कर स्तर पर डिस्कशन हो रही है। बता दें कि भाई अरविंद केजरीवाल फेल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन हो रही है सुबह से कि म्युनिसिपैलिटी किसकी बनेगी। अरे भाई अगली बार नागपुर, गुवाहाटी, कोलकाता की म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन पर भी आप 10-10 घंटे के प्रोग्राम करें, ये क्या हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? ये दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही रिपब्लिक भारत को, आप इसको तो उठाइए, ये भी तो मुद्दा है। चलिए ओवर टू यू। जो बात आप अर्नब कर रहे थे ये बिल्कुल गुजरात को लेकर, और गुजरात अगर फोकस है इस पूरे चुनाव के जो अंक गणित है वो थोड़ी देर में आएगा। गुजरात और हिमाचल से 2024 का एक टोन सेट हो रहा है। एक बार जरा पुष्पेंद्र जी के पास पहले चले जाते हैं। पुष्पेंद्र जी, चर्चा गुजरात और हिमाचल की, गुजरात हिमाचल आपको लगता है इस वक्त
न सिर्फ विधानसभा की सीटें, विधानसभा सरकार किसकी बन रही है, बल्कि 2024 का भी एक मैंडेट, एक तरह से एक मूड सेट करेगी। देखिए, ये बात साफ है कि एक लंबे समय के बाद एक गुजराती प्रधानमंत्री बना है और सक्सेसफुली वो 2 टर्म करीब करीब उनके पूरे होने वाले हैं। गुजरात के लोग गुजरात प्राइड को बड़ा ध्यान देते हैं। विदेशों में भी मैंने देखा कि गुजरात को लेकर के एक अलग प्राइड है। गुजरात के लोग आज का चुनाव जो है वो किसी कीमत पर हारने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात की जीत 2024 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के मजबूत दावेदारी और एक अगला टर्म। लिहाजा गुजरात में हो सकता है कि थोड़े थोड़े नए नए लोग गए हो, कुछ नए नए जुमलेबाजी हो रही हो, वो सब चलेगा, लेकिन गुजरात के लोग 27 साल से परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और गुजराती को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मजबूती से उसका पार्टी में दावा हो, इसके लिए गुजराती किसी कीमत पे मैं नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई बिजली, पानी, चावल, दूध, भ्रष्टाचार, ये जो बातें हो रही हैं, जो ऐसा लग रहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं ना वो दिल्ली में भ्रष्टाचार है ना कहीं और भ्रष्टाचार है, सब कुछ गुजरात। तो जो बात अभी अर्नब कह रहे थे कि फोकस एमसीडी इसलिए किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि अर्नब ने तो एमसीडी फोकस की। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं कुछ लोगों का ये चक्कर भी तो नहीं है कि वो जेएनयू के चुनाव के इंतजार कर रहे होंगे उसकी घोषणा हो जाए, कहीं से कोई जीत का हल्का सा भी हमको फैक्टर मिल जाए ताकि हम उसको बड़ा कर सकें। मैं चौंक गया आज। मुझे मैं बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं, वैसे दूसरे चैनलों को कभी मैं अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करता, ये गलत बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में जानना चाहे वो तक देखे और कोई भी देख ले भाई। ये 9, 10, 11, 11, 12, 8, 9, 7 वाले चैनल देख ले, यूक्रेन की खबर मिल जाएगी उनको। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर राज्य सरकारों के बारे में जानना चाहे तो 6:30 बजे से हम नंबर दे देंगे। मैंने कभी नहीं देखा है, क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज गुजरात के इलेक्शन से हटने की पूरी कोशिश हो रही है। संगीत रागी जी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है। संजीव कौशिक भी मानेंगे, अजय अरोड़ा भी मानेंगे। आज ये म्युनिसिपैलिटी पे बातचीत करना चाहते हैं, क्यों भाई? मैं नहीं, ये गुजरात के बारे में बात नहीं करना चाहते। अर्नब, हाँ जी संगीत जी। अर्नब, मैं इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एमसीडी चुनाव के ऊपर जो इतना बड़ा कवरेज हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इस बात का है कि गुजरात और हिमाचल में चूंकि आम आदमी पार्टी हार रही है तो इसके हारने से उसकी छवि को जो डेंट लगेगा और साथ साथ जो 2024 के पहले एक जो तैयारी चल रही है लटियंस दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस का एक विकल्प के तौर पर कहीं हम आम आदमी पार्टी को खड़ा करके आगे ला सकते हैं क्या एक नेशनल फेडरेशन पार्टीज का बने तो उसमें आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी भूमिका 2024 से पहले हो। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जफर इस्लाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जहां भी गई है कांग्रेस का लुटिया वहां पर डूबा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हरा पाने में सक्षम नहीं दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, वो हारे। बनाना मीडिया का काम नहीं है संगीत रागी जी। विकल्प बनाना नहीं, विकल्प बनाना मीडिया का काम कब से हो गया? देखिए मीडिया, आपको भी जानकारी है, आप उस मीडिया में रहे हैं बहुत पहले। मीडिया में तो कुछ मीडिया तो ऐसे थे जो मंत्री तक बनवाते थे, संतरी तक बनवाते थे, किसका कॉन्ट्रैक्ट कहां पर जाएगा, राबिया टेप के बारे में कौन नहीं, राडिया टेप के बारे में कौन देश का आदमी नहीं जानता है। और एक समय ऐसा था जो सारे प्राइम मिनिस्टर की जितनी विदेश से यात्रा है वो डिबेट शुरू करें, तो वहां पर सारे के सारे मीडिया के कौन लोग वहां पर शुरू करते थे। तो वो तो एक मैं आज बहुत दिनों के बाद रिपब्लिक भारत में आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आजकल डिबेट क्यों कम हो रही है। चलिए सुचरिता, ऐश्वर्या शुरू कीजिए। जफर इस्लाम, भारत दीप्ति, सोहेल, डिबेट बीजेपी के पूर्व सांसद जफर इस्लाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जफर साहब परेशान है क्या? ये सब कह रहे हैं भाई, देखिए वोटिंग कम हुआ है। जफर साहब देखिए, मैं तो कहीं से भी परेशान नहीं दिख रहा हूं। ऐसी पार्टी जो प्रदेश की चिंता करती हो, प्रदेशवासियों की चिंता करती हो, और एक ऐसी पार्टी जो परिवार की चिंता करती हो और परिवार के जो लीडर है उनकी चिंता करती हो, तो उनमें फर्क तो आम नागरिक पहचानते हैं ना।
कि एक पार्टी है जो प्रदेश की जनता की चिंता करती हो, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, घर, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर, राशन घर तक पहुंचाने का काम और हर तरह की सुविधाओं पहुंचाने का काम। एक है कि कैसे देश को लुटाया जाए, वैसी पार्टी परिवार को आगे बढ़ाया जाए, परिवार कैसे देश को लूटे। तो दोनों में फर्क तो पहचानता है ना कि विकास किधर हुआ है, लोगों का विकास और एक परिवार का विकास। तो हमने जो देखा है वहां पर, आपने तो ऐश्वर्या हमसे मिले भी थे वहां पर, मैं तो वहां पर काफी 1.5-2 महीने तक रहा गुजरात में और इस बात को नजदीक से देखा कि वहां की जनता ने बिल्कुल साफ मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जाके उनके लिए काम करती है और एक सेवक की तरह काम करती है। और जो पिछले 27 सालों में उन्होंने जो देखा है ग्रोथ, वो आप उनके सामने है। जो आपको रिवर फ्रंट दिखता है वो भी लोगों के सामने है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो गुजरात में, जो साफ दिखता है कि कांग्रेस क्या सोचती थी परिवार के बारे में और ये प्रदेश के सोचने वाली सरकार है। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, जफर भाई, हो गया परिवार, परिवार, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया खड़गे जी, दलित, हमने परिवार की बात नहीं की। परिवार के बारे में जफर भाई, परिवार के बारे में सोचने वाली सरकार। अरे खड़गे जी भी परिवार के इशारे पे जो है सारा कुछ करते हैं। कहने के लिए भी परिवार से पूछना पड़ता है। आपने देखा नहीं मीटिंग कौन बुलाता है? मीटिंग बुलाते हैं कौन? नहीं, सोनिया गांधी जी आज मीटिंग बुलाती है, दूध पे जीएसटी, सोनिया गांधी जी मीटिंग बुलाती है। ये मुद्दा नहीं आएगा। सोनिया गांधी जी आज मीटिंग बुलाती है और मीटिंग अटेंड करते हैं खड़गे जी। आप किनके पास मीटिंग होती है? आपने देखा नहीं? अजय अरोड़ा जी, आप कह रहे हैं सब मुद्दे, आप ये कह रहे हैं ये सब मुद्दे हैं, ये मान लिया। जफर साहब ये कह रहे हैं ये सब मुद्दे हैं। आप लोग पिछले चुनाव में 77 सीटें लेकर आए, 99 के बहुत करीब थे, सिर्फ 20 सीटों का फर्क था। अगर ये सब मुद्दे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी ने वहां पर काम नहीं किया, मोदी फैक्टर नहीं चलता है, सिर्फ मोदी को आगे कर देते हैं, तो आप लोग इस बार उस पर कैपिटलाइज कर पाएंगे? वो 20 सीटों का फर्क आप उल्टा कर देंगे? बिल्कुल सुचारिता। हाँ। पिछली बार ये जब एग्जिट पोल आया, जब चुनाव के नतीजे आए, तो हार्दिक पटेल का नाम आया कि हार्दिक पटेल ने एक यात्रा निकाली थी, एक सभा की थी और उसमें हथियार ये और वो, इस कारण कांग्रेस को 77 सीटें मिली और नहीं तो हम कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन वही हार्दिक पटेल जब भारतीय जनता पार्टी में जाता है, सुचारिता, इन पे कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? ऐसी वॉशिंग मशीन कौन सी है? गोल गोल घुमाओ मत, मेरे को ये बताओ, आपके नेता थे कहां? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे, यू वर एब्सेंट, कांग्रेस गायब थी गुजरात में। एक आपने बहुत अच्छा काम किया, राहुल गांधी को हिमाचल नहीं भेजा और वही स्टेट है जहां पे ऐश्वर्या, देखिए ऐश्वर्या, सवाल ये है कि 27 साल बाद भी अगर आप फिर आउट ऑफ पार रहे तो आपकी नैया डूब चुकी है। एग्जैक्टली 27 सालों के बाद आज कांग्रेस समर्थक बोले मुझे, अरे 27 साल के बाद दीप्ति एंटी इनकम्बेंसी तो किसी के साथ हो जाती है। 27 साल के बाद तो हमारे खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, मगर ये 27 साल के बाद मुझे 27 साल तक, सोहेल ये बताओ, 27 साल के बाद अगर बीजेपी वापस आ जाए, आप पूछिए इनको 27 साल, अरे इधर देखिए, टीवी को देखिए, टीवी की तरफ देखिए, 27 साल बाद देखिए, 27 सालों के बाद देखिए नाक कट जाएगी। मैं कह रहा हूं नाक कट जाएगी अगर 27 साल बाद इस बार बीजेपी जीत जाए। मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी बहुत डीप विश्लेषण करना पड़ेगा सोहेल। अरे 27 सालों के बाद कोई तो पूछे, इधर संजीव कौशिक जी है, अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्नब संजीव कौशिक जी है, विशाल मिश्रा चुप क्यों है? ममता काले हैं यहाँ पे स्टूडियो में जी, जो गिरा हाँ, तो ममता काले जी को पूछिए, 27 साल तो बहुत लंबी सफर हो जाती है। ममता काले जी, धन्यवाद अर्नब जी। और बिल्कुल आपने सही बोला है कि कोई बात नहीं करना चाहेगा गुजरात की, क्योंकि गुजरात एक बार फिर से इतिहास बनाने जा रहा है और 27 साल से आप नहीं हिला पाए भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि गुड गवर्नेंस को, तो आपके पास बोलने को बचा क्या है? अब मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और अब आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैठकर कह रही है, अभी अजय जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, अरे सुनो ना भारत जोड़ो यात्रा, तो सुन लो 2 लाइन आपके, सुनो ना आपके, वो एक एहसान कुरैशी जी है ना, बड़े अच्छे से वो कवि है, वो बोलते हैं ना जैसे वैसे ही, अरे दाढ़ी वाले राहुल जी गुजरात मत ना आओ जी, बची खुची इज्जत अब हमारी मत धुलवाओ जी, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर
केरल और राजस्थान चले जाओ जी। ये पता है कौन बोल रहे हैं? मैं उत्तर दूंगा। आपके गुजरात के अरे मैं मोदी जी के लिए बोलूंगा, किस जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर। अगर राहुल गांधी जी ने, मैंने आपकी सुनी नहीं आपने नहीं सुनी, आप सुनी आपकी सुनी। आप मुझे बोलने का जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, आटे पे जीएसटी कमाल कर दिया। गंगा किनारे लाशें बहती देखिए ममता। अच्छा, हमने अपने खोए हैं, हमने अपने खोए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हुआ? ऑक्सीजन नीति, अगर ये मुद्दे थे, तो राहुल गांधी पूरे देश में पहिया क्यों घूमे? क्यों नहीं गए वो गुजरात और क्यों नहीं गए वो हिमाचल, और क्यों नहीं इन विषयों पर बात करी? क्योंकि ये मुद्दे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है। और राहुल गांधी जी के पास बोलने को कुछ है नहीं, इसने दाढ़ी बढ़ा के माफ कीजिएगा थोड़ा व्यक्तिगत है। मिनट बाकी है। बीजेपी के ऐसे कितने मिनट बाकी है? देखिए आपका, अरे आप कहां बोल रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी है कहां? आप मेरे को बात बताइए। आप इतना इधर बंगड़ा कर रहे हैं, उधर क्या हो रहा है? उधर कुछ है नहीं। आप मेरे को बताइए ग्राउंड में कितनी सीट आ रही है आपकी? बताइए कितनी सीट आ रही है? सेठी साहब बताइए। अभी तो एग्जिट पोल नहीं कितने आपने नतीजे डिक्लेयर कर, क्योंकि हम अगर 1% आम, अरे रिपोर्टर क्या करता है? अरे रिपोर्टर है, रिपोर्टर जाके आप पहन के, आपका आकलन क्या? आपका आकलन क्या? अरे अपना आकलन बताइए ना, पहले डिक्लेयर अपना आकलन बताइए। पूछ रहे जब आप 3 मुख्यमंत्री चेंज करते हो तो आप अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हो कि भी हम फेल हैं। मुख्यमंत्री क्यों चेंज किया जाता है किसी प्रदेश का? पार्टी मुख्यमंत्री, अगर ये विषय मंत्री जेल में रहे, उसे हटाना नहीं है। मुख्यमंत्री चेंज करना गलत है। मंत्री जेल में रहे, वीडियो आए, क्योंकि इनका अनुभव ऐसा है कि मंत्री भी नहीं बदलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात है। जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए ममता खाली। सही बात है। मंत्री जी जो है ना भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में रहे और तिहाड़ को मसाज पार्लर बना ले, और जो पॉक्सो के आरोपी हैं, उनसे अपनी मसाज करवाएं, उनसे अपने लिए खाना मंगवाएं, और सुनिए अपनी पत्नी को मिलने के लिए बुलवाएं। वो सब सही है, वो सब सही है, वो सब सही है। आपको ना एनसीडी मिलेगी, ना आपको गुजरात मिलेगा, ना आपको हिमाचल मिलेगा। 4 लाख करोड़ आपने जितनी शक्ति से आप बोल रहे हो, अगर उसकी आधी शक्ति से आपके नेता थोड़ी रैली कर लेते तो आप भी बोल पाते। हिमाचल और पहली बात तो प्रधानमंत्री ने 200 की, अभिषेक 30, आपके नेता भी कर पाते। आप क्यों चल रहे हो? नहीं पहले आप बताओ चल के रहो, पहले आप बताओ चल के रहो, पहले आप बताओ चल के रहो। देखो एक सेकंड सुनो वातावरण, सेठी जी सुनो। कांग्रेस अभी आप ऐसा नहीं, फिर मैं आपसे तेज चला सकता हूँ, ऐसे नहीं। कांग्रेस को दिक्कत है कि मोदी चलता है। आधे घंटे से सुन लो दार जी, कांग्रेस को दिक्कत है कि मोदी और शाह चलते क्यों हैं? आपको दिक्कत है कि कांग्रेस रैली क्यों करते हैं? अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं हमें नहीं, अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको टक्कर लेनी तो वहां जाके लो, लड़ो आप भी 301 रैली करो। बताऊं, अरे भाई अगर आपके हिसाब से मोदी ने 300 की, 301 करो। आपको रोका है किसी ने? आपको रोका है किसी ने? अरे आपको रोका है किसी ने? मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप सुनो ना मेरी बात, सुनिए ना। आप मेरी सुनने बैठो, मैं आपको सुनने बैठो। जवाब दो ना, जवाब दो। आपको 301 रैली करने से किसी ने रोका था? केजरीवाल को 301 रैली करने से किसी ने रोका था? केजरीवाल को 301 रैली करने से किसी ने रोका था? किसी ने रोका था? नहीं। एग्जिट पोल भी नहीं है। मुझे एक छोटी सी देश का जो हेडक्वार्टर है ना, ऐश्वर्या जी, आपने बोल लिया। अर्नब आपको जवाब मिल रहा है ना? अर्नब आपको जवाब मिल रहा है ना? क्यों सेठी जी चाह रहे हैं एमसीडी की बात हो? अरे क्यों सेठी जी चाहते हैं गुजरात की बात ना हो? क्यों उन्हें नरेंद्र मोदी की रैली से दिक्कत है? अरे सर आम आदमी को, क्यों कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के चलने से दिक्कत है? अभिषेक ये चाहते नहीं मोदी चले। अरे मोदी ने 30 रैली करी, मोदी का गृह राज्य। सुन लीजिए स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा रहा, पानी तो पी लो, बुलाया नहीं जा पानी पी लो रहा, ना बोलने का मौका। अरे सेठी साहब मैं भी नहीं थी स्क्रीन पे, काफी सिर्फ आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो बोलने। सेठी साहब आप रुक जाइए, सेठी साहब आप रुक जाइए, हो गया। सेठी साहब आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, दिल पे मत लो, अब रुक जाइए, आप ऑन एयर है परमानेंट। मेरा सेठी साहब आप कह रहे हैं एमसीडी, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए तो बोल। अब आप पूरी कर चुके, फिर आप जवाब दे। एमसीडी आप कह रहे हैं देश का हेडक्वार्टर है। केजरीवाल एमसीडी में ज्यादा रैली कर रहे थे या गुजरात में?
मत डालिए। सवाल पूछ लो, बताइए ना। सवाल पूछ रहे। देश का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली है। पूरा अभी आपने कहा एमसीडी, बड़ी नई बात बताई, ये आपने बड़ी नई बात बताई। और पूरे देश पूरे देश की जो पुष्पेंद्र जी हो गए, सुचरिता और जितने भी राजनीतिक रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ। रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली हेडक्वार्टर है तो दिल्ली से चीजें तय होंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात चले जाते वो मोदी जी से ज्यादा रैलियां कर लेते। रतन शारदा जी, रैली नहीं करनी है, रैलियां आप मोदी जी से ज्यादा कर लीजिए। राहुल गांधी नहीं जाते, नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं, तो ये इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आप उनसे 20 हो जाइए, आपको रोका किसने? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई ना कोई तो मुद्दा बनाएंगे। अभी आपके पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने पंजाब उनको मिला 6 महीने, उसको इतना बुरी तरह खड्डे में डाल दिया कि उनका मॉडल कब तक चलेगा ये सोचने की बात है। पंजाब के जो हालात है इस समय, जिस प्रकार से वहाँ खालिस्तानियों को शय मिल रही है, जिससे दिन रात खून और लूटपाट चल रही है, वो पंजाब की सरकार अगर इनका आइडियल मॉडल है तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भविष्य है। अगर आपके पास भविष्य होता तो सरकार चलाते हैं पंजाब, यहाँ गुजरात में के बड़ी बड़ी बातें न करते। आपका मॉडल है बहुत ओवर हाइप, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी वाला, और सच तो उसको बेस तो होना पड़ता है ना। गुजरात के अंदर मोदी जी की जो प्यार मोदी जी को मिलता है, केवल इसलिए नहीं मिलता कि मोदी जी ने मार्केटिंग की है, मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने 23 साल बहुत सॉलिड काम किया है। गुजरात को मैं 1972 से जानता हूँ, मेरा वहाँ घर है, और जो गुजरात को बदलते हुए मैंने देखा है ये हमारे आंखों के सामने है। ये लोग भी देखते हैं। ठीक है, आज की पीढ़ी नहीं देखा, पुरानी तो देखते हैं। अब दिल्ली में अगर जीतेंगे रेवड़ी के बल पर, वो रेवड़ी के बल में बाकी जगह तो नहीं जीतेंगे। सरकार चलानी है, आप सरकार को कर्जे में डुबाएंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर को आपको लग रहा है ये एक बबल है, आपको लग रहा है ये गुब्बारा है, ये फूटेगा, ये एक बबल है, ये बर्स्ट होगा। अगर यही इनका हार रहा तो बर्स्ट होगा। अगर इनको अकल ठिकाने आ गई तो हो सकता है कुछ ये आगे कांग्रेस का विकल्प जो बनना चाहते बने। लेकिन जिस तरह का काम इनका चल रहा है पंजाब के अंदर, और जिस तरह की 2 मिनट और अर्नब, 2 मिनट और एग्जिट पोल्स के नंबर्स आएंगे। 2 और मिनट। ऐश्वर्या एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। 2 मिनट में हमारे नंबर आने वाले हैं, और रिपब्लिक भारत पर हम गुजरात और हिमाचल दोनों के नंबर एक साथ दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है नंबर्स की जरूरत है। ये सब बातें तो होती रहेंगी, अब दोनों राज्यों के नंबर हमारे पास आएंगे। गुजरात पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि पिछली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले थे, जो एक रिकॉर्ड नंबर है, और कांग्रेस को करीब 42%, 42.2% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को बस इतना करना है कि जितनी वोट मिली थी पिछली बार उसको मेंटेन रखना है, और बीजेपी को अगर वो 3 से 4% से ज्यादा घटे नहीं, और अगर कांग्रेस मेंटेन करे तो कांग्रेस के नंबर बढ़ सकते हैं। पिछली बार 77 सीटें उन्हें मिली थी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत आसान था यह गुजरात चुनाव। अगर इसके बावजूद कांग्रेस अच्छा नहीं करे तब तो कांग्रेस बिल्कुल, मैं क्या कहूं, कुछ बोलने लायक नहीं रहेगी उनकी स्थिति। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होती है, जब त्रिकोणी चुनाव होता है, तो बीजेपी को फायदा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि त्रिकोणी जब वहां पे ट्रायंगुलर फाइट होती है, तब उसमें तो कांग्रेस को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो बैठी हुई है 42% वोट शेयर पे। लोग क्यों कह रहे हैं कि त्रिकोणी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? त्रिकोणी चुनाव में तो कांग्रेस को फायदा होना चाहिए। ये कोई इसकी एनालिसिस ही नहीं कर रहा है। और अभी कितने मिनट बाकी हैं, बस आप बताइए। 1 मिनट। मेरे पास नंबर आ चुके हैं, मगर आप जब इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा तब आप दोनों के 1 मिनट और अर्नव 1 मिनट और 1 मिनट बोलिए अर्नव 1 मिनट बोलते रहिए, वो जाएगी ना। लगा दें गुजरात के चुनाव, लगा दें नंबर। 6:30 बज चुके हैं। 1 और मिनट 6:30 बज चुके हैं, आप प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। जी ओके, 6:30 हो गए। आप लगाइए, कौन सा नंबर लगा रहे हैं पहले? ओवर टू यू। नंबर ऑन द स्क्रीन लगाइए। बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन गो अहेड विद द नंबर्स। करिए, बताइए जनता को बताइए। हिमाचल के नंबर
हिमाचल के नंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो इस वक्त फिगर आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी के लिए 44.8% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 42.9% वोट शेयर है। अब इसको सीटों में कैसे तब्दील होगा ये भी देखना है। आम आदमी पार्टी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो 44% से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है, ये लगभग कम हुआ है हिमाचल का वोट परसेंट और कांग्रेस का वोट परसेंट बिल्कुल 1% के आसपास बढ़ा है। और हम जरा एक बार और बता देते हैं फटाफट। बीजेपी 44.8 सीट आ रही है, 34 से 29, 34 से 39, यानी सरकार बन रही है। इंडियन नेशनल सरकार बन रही है। एग्जिट पोल PMARQ रिपब्लिक के इंडियन नेशनल कांग्रेस 42.9, कांग्रेस 42.9%, 28 से 33 सीट। आम आदमी पार्टी 2.8%, सिर्फ 0 से 1 सीट। सेठी साहब पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। नहीं देखिए, नहीं ऐश्वर्या एक मिनट, ऐश्वर्या देखिए एक मिनट, दो बातें कहना चाहता हूं। आप ये कहिए इसका मतलब क्या है? मतलब यह है 4.4% वोट बीजेपी के कम हुए हैं। मगर स्टोरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी तो वही 42 के 42 पर रही। कांग्रेस पार्टी को अगर और 3% वोट मिल जाते तो कांग्रेस सरकार बना लेती इजीली। नहीं वो तो है ना, कांग्रेस वही है ना। अभी आप ये समझने की कोशिश करो ऐश्वर्या, अभिषेक सुचरिता इस बात की कोशिश करो कि हिमाचल प्रदेश हर बार बीजेपी और कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव सरकार देखती है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मगर इस बार कांग्रेस की कैंपेन उतनी स्ट्रांग नहीं हुई। अगर 42 से लेकर 45 तक ले जाते वो, अगर 0.8% से ज्यादा वो 3.5% भी वोट इनकी गेन हो जाती तो फिर तो कुछ और ही नजारा होता। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात मैंने कही, ये आम आदमी पार्टी कहां है? बिल्कुल 2.8% वोट है, यानी कि पूरा सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी का सफाया हिमाचल प्रदेश में। ये क्या आपके लिए हेडलाइन खबर नहीं है सोहेल? ये बिल्कुल खबर है, ये तो बहुत बड़ी हेडलाइन है। क्या आम आदमी पार्टी का सफाया जी फट गया। अर्नब आपका गुब्बारा फट चुका है हिमाचल में। वो भारतीय जनता पार्टी के गुब्बारा था और गुब्बारा फट चुका है। भारतीय जनता पार्टी द बबल हैज बर्स्ट जो कहते हैं अंग्रेजी में। जी आप रिएक्शंस लें, ओवर टू यू प्रोफेसर आगे बताइए। अर्नब ये जो आम आदमी पार्टी का 2.8% का वोट है, वही भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत आने के बावजूद वो जीत की तरफ ले जा रहा है। जो आप जीत का आंकड़ा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी की दिख रही है। और इसलिए मैं गुजरात चुनाव को लेकर के कह रहा था, आप कह रहे थे, आपको यह भी समझना है, आप कह रहे थे कि संगीत रागी जी मैं जफर से पूछना चाहूंगा। जफर जी, बीजेपी को प्रोजेक्शन जो हमारे पास की 36 सीटें मिलेंगी, अब हाफ वे मार्क हो गई आपकी 35 से आप कंफर्टेबल हैं, एक सीट ज्यादा है हाफ वे मार्क से, तो अभी भी मतलब सवालिया निशान तो है भारतीय जनता पार्टी पर। या तो आप बिल्कुल इसी तरह से पास हो गए, मगर अव्वल नंबरों से पास नहीं हुए हैं और अभी भी चांस है। ये तो एग्जिट पोल है ना, एग्जिट पोल में 2% इधर उधर हो जाती है, फिर क्या होगा? ±3% है। आप नर्वस तो हैं, देखिए आप नर्वस हैं जफर जी, यू आर नर्वस। बातों का जवाब दे रहे हैं जफर जी। देखिए जफर जी आप मेरे पुराने मित्र हैं, 1942 जी। मुझे आपको जवाब देने दीजिए। आप बोलिए अर्नब जी, आपने जो प्रोजेक्शन दिखाया है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं, वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए उसमें आप हमें देख रहे हैं कि छोटी जीत दिखा रही है, बहुत भारी जीत नहीं है। लेकिन हमारे जो आंकड़े बताते हैं, जो इंटरनल सर्वे हमारा है, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बेसिस पे जो हमें है, उस पे बेसिस पे सबसे पहले इसके 40 के हैंडल में होगा 4200, 4300, 4400। 40 और 44 के बीच में हमें कहीं पर हमारी सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान हमारे बेस्ड ऑन फीडबैक जो हमें जमीन से अपने पन्ना प्रमुख, अपने लोकल लीडर्स, अपने लोकल कार्यकर्ता जो घर घर तक जाते हैं। पुष्पेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी इस पर आप रिएक्ट करें, क्योंकि जो बात जफर जी कह रहे हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हर बार ऑल्टरनेटिव सरकार बनाती है हर 5 साल। और पुष्पेंद्र जी, ये अगर इस बार बीजेपी इस ट्रेंड को बदले, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे बीजेपी स्वीप नहीं करेगी, अरे स्वीप करना क्या, अगर बीजेपी को इतनी सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1985 से लेकर अब तक 2022 तक कभी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं बनी है, यानी कि कोई भी पार्टी 2 बार चुनाव नहीं जीती।
क्या आपको लगता है ये बदल सकती है इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक तो जो आप ट्रेंड बता रहे हैं वो, और दूसरा ये है कि अब जो चुनाव हुआ है वो मोदी के इस दौर में हुआ है, और इस वक्त जो स्थिति है मैं उसमें ये मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि देखिए वो तमाम सारे जो जहां जहां चुनाव हो रहा है वो मोदी के फेस पे हो रहा है चुनाव, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपनी पिछली सीटों के बराबर भी आ जाएगी तो भी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी। भारतीय जनता पार्टी जी क्या बोल रहे हैं आप? पिछली बार जितनी सीटें मिली थी आप कह रहे हैं पिछली के बराबर भी आ जाए तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी 2017 की सीट भी आ जाएगी तो बहुत, मैं समझता हूं कि ये उनकी जीत से बड़ी जीत होगी, मैं ये मानता हूं, अगर वो अपना पिछला रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लें तो। मगर पिछला रिकॉर्ड तो काफी अच्छा था उनको। पिछली बार तो उनको कितने सीटें मिली थी, कितनी परसेंटेज वोट मिली थी ऐश्वर्या? अभिषेक ना पिछली बार बीजेपी को मिली थी हिमाचल में 2017 में 48.8, 48.8, 2012 में 38.5, 2007 में 43.8 और 2003 में 35.4। तो पिछली बार से भूल गए, पिछली बार से इस बार जी आप एक बात भूल गए जी। आप बताइए कौन सी बात आप भूल गए? मैं 44 सीट, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसमें जी, क्योंकि नहीं एक बात आप ऐड करना भूल गए, वो ये है कि जितने हमारे दर्शक के नंबर देखे, करीब 45% वोट आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, मगर 2019 में अभिषेक बीजेपी को करीब 70% वोट हिमाचल में मिले थे। 70% बहुत बड़ी बात होती है, और कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर 2019 के आम चुनावों में सिर्फ 27.5% वोट उनकी थी, और एक भी सीट उनको हिमाचल से नहीं मिली थी। तो जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी पुल है, जो एक नरेंद्र मोदी फैक्टर है, बिल्कुल जिसको कहा जाए एक तरह से सुचरिता दीप्ति मोदी वोट, जो वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे आते, बिल्कुल वो बहुत स्ट्रांग है हिमाचल में। ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैंने अर्नब इसी बात से करी थी कि ये नरेंद्र मोदी मुश्किल है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बेंचमार्क सेट करने वाला चुनाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिमाचल में आप कह रहे हैं? नहीं, दोनों राज्यों में प्रोफेसर अर्नब ये मैं अभी तक के आकलन से बिल्कुल असहमत हूं। गुजरात के नंबर दिखा दें। नहीं, कई दर्शक पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये मत भूलिए कि यदि हम ये कहते हैं कि गुजरात का इलेक्शन, तो वहां पर कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं। थोड़ा सा संघ वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पुष्पेंद्र जी वैसे पुरानी लड़ाई है, मान लीजिए, नई बात थोड़ी है, पुरानी है, नहीं, मैं उस बेसिस से नहीं कह रहा हूं। सुचरिता, दीप्ति और सोहेल, अगर आप गुजरात के प्रोजेक्शंस ऑन स्क्रीन कर दे तो कई दर्शक फोन कर रहे हैं, दोनों आपने कहा था दोनों राज्यों को बताएंगे जी। गुजरात का वोट शेयर एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद सीट्स कितनी आ रही गुजरात में। एग्जिट पोल PMARQ और रिपब्लिक-PMARQ का एग्जिट पोल जरा दिखा देते हैं एक बार। गुजरात की आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी को 48.2% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 32.6 उनका वोट। ये तो मैसिव है, मैसिव। कांग्रेस का वोट शेयर 15.4। हाँ सर, कांग्रेस का वोट शेयर काफी गिर रहा है। बीजेपी का वोट शेयर 49-50 के आसपास रहता है, तो लगभग सस्टेन कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बहुत गिर रही है। कांग्रेस जो 42% थी ना, वो 32%, यानी 10% वोट शेयर कांग्रेस का गिर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो हमारे ओपिनियन पोल में 20% पर भी वो उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे ये भी कम है, वो 15% पर आ गए। और ये सीट में जब कन्वर्ट होगा तो सामने आएगा। सीट में होते ही अर्नब बिल्कुल बवाल हो जाता है, जैसे कहते हैं। बीजेपी इस बार जो कह रहे थे 128 जी अर्नब, नहीं, मैं कह रहा हूं ये तो बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। जो बीजेपी पिछली बार 99 सीटें मिली थी, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जा रहा है 128 से लेके 148, यानी कि 138 के हाफ वे मार्क है, और उनको वोट शेयर वहां पे 48.2%, यानी कि हर दो में से हर एक वोट बीजेपी के लिए गई है। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस फॉर द बीजेपी। आप ये समझो, नहीं, अभिषेक, दिस इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस अर्नब फॉर द बीजेपी। अभिषेक मेरी बात सुनो, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नहीं, अभिषेक मेरी बात सुनिए। अभिषेक, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं पार्टी तोड़ो यात्रा है। बिल्कुल। ये तो पार्टी टूट गई इनकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी पब्लिसिटी मशीन इनके पीछे ट्विटर कर रही है, मगर आप समझ नहीं रहे। 10% बहुत बड़ी चीज होती है। दर्शक समझ ले, -10%। कोई पार्टी ऑपोजिशन में रहते हुए आज तक बता दे मुझे। और इससे एक बात और तय हो गई ऑपोजिशन से। नहीं, अभिषेक, आप पावर में नहीं हो गई। जो पावर में पार्टी होती है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। वही तो एंटी ऑपोजिशन बात और तय हो गई। जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इनकम्बेंसी वोट है गुजरात में। जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी कांग्रेस पार्टी की 2017 में 77 सीट की, वो सिर्फ हार्दिक पटेल के कारण थी, वो सिर्फ जीएसटी के कारण थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि नरेंद्र मोदी ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं थी। नहीं, लेकिन आप देखिए तो आप बीजेपी का कह रहे हैं आप वोट है। 1980 से लेके अब तक, अभिषेक, 1980 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें 1927, 2002 में। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 138 सीटें मिलेंगी 7वीं बार अगर पावर में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी 99 से लेके 138। आपने कभी सुना है? आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, आज तक आपने सुना 39 सीटों की बढ़त राज्य चुनाव में 27 सालों के बाद? और ऑपोजिशन पार्टी के नंबर होने चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपोजिशन विपक्ष कुछ भी कहे, पर कोई भी पोलराइजिंग मुद्दा नहीं था। एकदम क्लीन चुनाव हुआ है। अपोजिशन ने, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो वहां आएंगे नहीं। आम आदमी पार्टी ने शुरू के 15 दिन कुछ जहमत उठाई, फिर छोड़ दिया। उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। अपोजिशन के पास पूरा मौका था, चाहते, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अपोजिशन पूरी पिच खुली थी, बैटिंग कर सकते थे, छोड़ दिया उन्होंने। तो कोई पोलराइजेशन वाला इशू नहीं है, कोई पोलराइजेशन वाला इशू नहीं है। फिर भी अपोजिशन ने नहीं किया। इससे पता चलता है कि कितनी जड़ें मजबूत हैं बीजेपी की गुजरात में। अगर ये संख्या सही है। अभिषेक, क्या जी, अभिषेक सुनिए, आप सॉरी, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के जितने मीडिया पार्टनर हैं, इतनी कोशिश, बस में बैठ के कोशिश, ट्रक में बैठ के कोशिश, सभा पे सभा, स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप, केजरीवाल जी के एक के बाद एक इंटरव्यू। अरे उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिले, 2 सीट दिखा, 2 से 10, कितने सीट? 2 से 10 सीटें दिख रही हैं। 2 से 10 कितने सीटें दिखा रहे हैं? 2 से 10 यानी कि एवरेज 6। हाँ, एवरेज 6, 15% वोट। तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो गोवा में हुआ वही तो हो गई ना गुजरात में। गोवा की जो परफॉर्मेंस थी वो गुजरात में प्रोजेक्ट हो गई। आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? आप उस बात से हटके बात क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जितने ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, वैसे वो रिपब्लिक भारत से तो डरते हैं, मगर उनको पूछिए आप कि आपका क्या हो गया? सेठी जी बैठे हैं, सेठी जी को लाइए। हिमाचल में कहीं नहीं रहे, आप गुजरात में कहीं नहीं रहे, आप म्युनिसिपैलिटी में सब जगह हैं। आप ये कह रहे हैं अब ये क्या रिजल्ट है? बिगर पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए। 2024 के लिए चैलेंजर कौन है? मैं कह रहा हूँ प्रधान, मुझे बताइए। 250 सभाएं करी, अजय आलोक बिग पिक्चर बताइए, बिग पिक्चर। ये तक वाले दिखाएंगे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, हम राष्ट्रीय स्तर पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसका बिग पिक्चर क्या है बताइए मुझे। क्यों नहीं गए? बिग पिक्चर क्या है? बात गुजरात की हो रही है जी, तुसी क्या मसला की तरह? अरे पंजाब में सरकार तो कभी है कभी नहीं है। पिक्चर इसका यही है। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री कौन है? बात कर रहा हूँ, आप डंका बजा रहे हो जिस बात का, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में सभाएं करते हैं ना एमसीडी चुनाव में, फिर नतीजे बताते हैं। अभी तो ये एग्जिट पोल है, पंजाब में जाके सभाएं करते हैं, फिर नतीजे बताते हैं कितने लोकप्रिय हैं। अभी गुजरात के नतीजे नहीं आए हैं, ये एग्जिट पोल है, नई पार्टी है। ये मीठा गपगप, आप थोड़े कड़वा थू। अच्छा, वोट कटवा और अभी आप बात का जवाब नहीं दे रहे। पंजाब में क्यों नहीं सभाएं करी प्रधानमंत्री जी ने? इतने लोकप्रिय थे तो पंजाब में करी थी जी। पंजाब में सभाएं प्रधानमंत्री ने की थी, आपने रोक ली, अच्छी बात है।
भाई डेमोक्रेसी को इसी को तो कहते हैं, एमसीडी चुनाव लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं। 6 महीने से करा नहीं रहे थे। गुजरात में इतनी घबराहट और इतनी बौखलाहट। अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, अजय आलोक फटाफट अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, अजय आलोक डिबेट आगे ले जाइए, डिबेट आगे ले जाइए, डिबेट आगे ले जाइए, डिबेट आगे ले जाइए। साबित हो गई है अजय आलोक, एक चीज साबित हो गई है आपके, एक चीज साबित हो गई है इस एग्जिट पोल से कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ की भूमिका में पूरी तरह से आ चुकी है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे गुजरात हो। दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि वोट काटते काटते ये कांग्रेस को ही काटने निकल चुके हैं। कांग्रेस का लीडरशिप इसके लिए बिल्कुल बेखबर है और कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में और क्या कहना है सर। वो तो कैंपेन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अगर नेता ही नहीं जाए तो फिर कांग्रेस से यह तो होना ही था। 10% वोट घटा कांग्रेस का और 15% आम आदमी पार्टी को वोट आए। ये साफ साफ कहता है कि आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। चिंता कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बीजेपी जहां पे गुजरात में वोट शेयर में थी नहीं, आप बोलिए ना, जवाब दीजिए सेठी साहब। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस, ये जो आपके 10% वोट कम हुए हैं, बिल्कुल ये जो 10% वोट कम हुए ये इसलिए कम हुए, नहीं इसलिए कम हुए कि राहुल गांधी गए नहीं या राहुल गांधी नहीं गए इसलिए 32 तो आ ही गए। हिमाचल में बड़े नहीं बड़े, हिमाचल में राहुल गांधी जाए या न जाए कोई फर्क नहीं। विरोधी वहां नेता, वहां लोग कह रहे हैं, अभी हमने बात की, लोग कह रहे हैं राहुल आए होते तो और बुरे हाल होते। कर रही है, नहीं कौन ले गया ये तो बता दो, कौन ले गया है ही नहीं इलेक्शन में। आपने अभिषेक जी, आपने अभी वे बात छेड़ी, आपने कहा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में गए वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, उस तरह से लड़े कि वो मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल में हम बढ़े हैं, ये अगर आप अब ये एग्जिट पोल को हम ठीक मान लेते हैं, मान लो हम ठीक मान लेते हैं, हम यहाँ भी तो बढ़े हैं हिमाचल में। और जहाँ तक आपने गुजरात की बात की, अभी समय आने दीजिए, अभी एग्जिट पोल है, जैसे होगा। हमें नहीं उम्मीद कि हम 10% नीचे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा अभिषेक जी, ना अर्नब जी को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल है। अभी इसी से चाहिए ना, अभी इसी से मान लीजिए, इसी से मान लेते हैं। कौन ले गया ये? देखिए जिस प्रकार से अगर कौन ले गया, जैसे आपने बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। अभी संगीत रागी जी एक बात करे थे, अरे कौन ले गया ये बताइए। बिल्कुल, अगर आम पार्टी का 15, उसके आगे आऊंगा, पर बताइए ना कौन ले गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ अभिषेक जी, आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगा। अगर हमारे परसेंटेज कम होती है, आप पार्टी वहां पे नई पार्टी आती है, अगर उसमें हमें नुकसान होता है तो हम मानते हैं कि इनकी वजह से नुकसान हुआ, तो मानो, मान लेंगे। मानो ना, ऐश्वर्या अभी को मान लें, अभी तो जल्दी है, अभी तो एग्जिट पोल है, अभी तो भारत जोड़ो है। अरे भारत जोड़ो चल रहा है, भारत जुड़ गया ना हिमाचल में, अभी तो हिमाचल में भारत जोड़ो। आप इंसान त्रिवेदी को पूछिए, हिमाचल में जुड़ गया ना। कुछ कह रहे, जफर साहब कुछ कह रहे, बोलिए। आप इरफान त्रिवेदी जी से रिएक्शन लीजिए ना, ये अहमदाबाद से हैं, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े प्रशंसक और सपोर्टर है, इनको पूछिए ना, आप वहां बैठे हुए हैं, पूछ रहा, उनको लग रहा है सब कुछ गलत दिखा रहे हैं हम। इरफान जी बताइए। देखिए ये बहुत बुरा हो, जो भी कहिए इरफान जी, ये बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, मैं 48 मिनट से सुन रहा हूँ, मैं 48 मिनट से सुन रहा हूँ, इसलिए और भी 2 मिनट सुन लेता हूँ। बोलिए ना, क्यों परेशान हो? मैं कह रहा हूँ ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। देखिए ये है ना, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको सिर्फ 10 या 15% वोट मिले और 5-6 सीट मिले, तब तो ये बहुत, मतलब आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप गुजरात में इम्पैक्ट नहीं कर पाए, बंगाल में आप नहीं हैं, हिमाचल में फ्लॉप शो हो गए, बाकी बचा था गुजरात। अब मैं म्यूनिसिपैलिटी की कवरेज नहीं करता, मैं राज्य सरकारों की बारे में बात करता हूँ। अगर इधर आपकी ऐसी रिजल्ट हो गई ना, तो आप शेकअप नहीं कर पाए ना, इसका कारण क्या है ये बताइए। क्रेडिबिलिटी की इशू है, लोकल नेता आपके ठीक नहीं थे, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम थे। सबसे पहले बीजेपी फ्रेंडली मीडिया, आप ईडी को तो जिम्मेदार नहीं मानते ना इसके लिए, क्योंकि आप देखिए त्रिवेदी जी, देखिए एक ही दिन बताया और एमसीडी में सत्येंद्र जैन के वीडियो के ऊपर इतनी सारी डिबेटें की। अब वो मीडिया ऐसा बोले कि नहीं भैया हमें एमसीडी नहीं दिखाना है, हम राज्य सरकार दिखाएंगे, तो मैं तो गुजरात में हूँ, मैं तो गुजरात की बात करूंगा। तो मैं आपको गुजरात की बात बताता हूँ कि ये जो है कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो 2017 पूरे इतिहास में, जहां भारत के इतिहास में 99 भारत के इतिहास में आज तक, सुनिए एक मिनट, भारत के इतिहास में आप जफर जी के साथ डिबेट करें, मैंने कभी नहीं देखा इतनी ज्यादा रुचि एक पार्टी की म्युनिसिपैलिटी चुनाव में, मैंने आज तक नहीं सुना। आप अभी भी गुजरात के बारे में बोलने को तैयार नहीं है।
आपने देखा जफर जी कह रहे हैं मैं गुजरात के बारे में नहीं बोलूंगा। अभिषेक जी क्या है दिया तो सिर्फ 1 मिनट में सीधा जफर भाई के ऊपर अभिषेक जी ये नहीं बोल सकते इसलिए कि गुजरात में जिस तरह से इन्होंने कहा सरकार बनाएंगे, बार बार दावा ठोका सरकार बनाने का, आज एग्जिट पोल दिखा रहा हूं। और वैसे भी आप देखिए जो आम लोगों की बात है, आप सड़क पे किसी से चलते हुए पूछिए, आपके बारे में पूछिएगा तो आम आदमी के पार्टी के बारे में एक ही बात कहेगा कि उसका कोई वर्चस्व यहाँ नहीं है, कोई इसका प्रेजेंस नहीं है, छोटा मोटा कुछ इलाकों में है और उसी की वजह से आप 7-8%, 5% वोट आ जाए तो आ जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर देखिए तो कोई उसके बारे में न जानता है ठीक से, न पहचानता है। केजरीवाल जी बार बार कहते रहे कि हमें सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे तो लगता है भाजपा दुखी हो गया, बिल्कुल सफा बढ़ा नहीं इस बार, गुजरात हो चाहे वो आप देखिए इसमें, और इवन दिल्ली के इलेक्शन में आप सरप्राइज होंगे, अभी आपको आपका नंबर ज्यादा दिखा रहे हैं कुछ चैनल, लेकिन हकीकत में आइए तो आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद आप जो एमसीडी की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़ा झटका लगने वाला है। जो ऐसा गुजरात में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, जैसा आपको जनरल इलेक्शन हुआ एक बार जो हम इस वक्त हमारे आई थी वैसे क्षेत्र के हिसाब से रीजन वाइज बता रहे हैं कि किसको कितना गेन किस रीजन में हो रहा है। इसलिए अभी जब हम नॉर्थ गुजरात के दिखा रहे थे, उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात के जो नंबर हैं उसमें बीजेपी 32 से 40, कांग्रेस 12 से 18, आम आदमी पार्टी अगर उसे सीट मिलती है या फिर 2 तक खींच सकती है और अन्य को 1, यानी कि बीजेपी 32 से 40 नॉर्थ गुजरात, और नॉर्थ गुजरात बीजेपी के लिए उसका कर रहा है, राजस्थान से मिलता है तो वहां पर वो सीटें निकालती रही है, यहाँ पर भी वो कैपिटलाइज कर रही है बीजेपी 32 से 40। और हम बिल्कुल हम आगे चलते हैं, उत्तर गुजरात के बाद सीधा चलते हैं मध्य गुजरात यानी सेंट्रल गुजरात, और इसकी सीटें बीजेपी 25 से 34, कांग्रेस 8 से 14, आम आदमी पार्टी वही 0 से 2 और अदर 0 से 1। इसके बाद तीसरा ये अभिषेक तीसरा आ गया दक्षिण, बिल्कुल ऑन एयर अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जो दक्षिण गुजरात जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है बीजेपी का, उसमें सूरत भी आता है। सूरत की जो 12 सीट है पिछली बार 12 की 12, इतनी बातें हुई कि जो पाटीदार मूवमेंट है वो सब चलेगा, और उसके बावजूद भी हमने देखा किस तरह से जी बिल्कुल। और वो दक्षिण गुजरात की जो सीटें अभिषेक वो है 25 से 32, कांग्रेस है 3 से 9, आम आदमी पार्टी 1 से 3। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को जो मिलेगा सिर्फ दक्षिण गुजरात में मिलेगा, मैं समझता हूं सूरत में मिलेगा, 1 हो 3 हो, वराचा हो, कतारगाम हो और करंज हो, या जो भी सीट है वहां की ओलपाड हो। उसके अलावा आप देखें तो बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए है दक्षिण गुजरात में, और उसका जो पूरा राज्य का टैली है, नहीं वडगाम तो उत्तर गुजरात में है, ये दक्षिण गुजरात की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 से 32 सीट ला रही है, कांग्रेस 3 से 9, आम आदमी पार्टी 1 से 3। अगर हम उसमें आंकड़ों में वो देख लें कि प्रतिशत के हिसाब से कैसा है, तो क्या वो पूरे राज्य से मिलता जुलता है, वो अगर हम देख सकते हैं। बिल्कुल गरिमा। और अब जी अगला आंकड़ा दक्षिण गुजरात का अगर रखें, ठीक है, हम दक्षिण गुजरात के आंकड़े देख रहे थे, अभी अभिषेक ने वही बताया। अब अगला है सौराष्ट्र और कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ जहां पर हमने देखा फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई है, 54 सीटें हैं, यहाँ पर 32 से 42 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, कांग्रेस को 12 से 18, आम आदमी पार्टी 1 से 3 और इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर 1। अब रिबेल फैक्टर यहाँ पे कैसे काम किया है वो भी देखना जरूरी होगा। मुझे लगता है कि उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसने भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प कहीं किया है। अगला रीजन आई थिंक सोहेल पूरे गुजरात की तस्वीर क्या निकल कर आ रही है ये आपको बताने जा रहे हैं, जिसका सभी को इंतजार था कि गुजरात से क्या तस्वीर आ रही है। देखिए आपके सामने गया उत्तर गुजरात 32 से 40 बीजेपी, 12-18 कांग्रेस, 0 से 2 आम आदमी पार्टी, मध्य गुजरात 25 से 35 और कांग्रेस 8 से 14। दक्षिण गुजरात में, साउथ गुजरात में 25 से 32 बीजेपी है और 3 से 9 कांग्रेस है। सौराष्ट्र में 32 से 42 बीजेपी है, 12 से 18 जो है वो कांग्रेस है। जो बात अभिषेक कह रहे थे, अगर कुछ मिलेगा आम आदमी पार्टी को तो वो दक्षिण गुजरात से मिलेगा, लेकिन अभिषेक यहां आम आदमी पार्टी को वो भी सिर्फ सूरत में, तो ये पूरी शक्लो सूरत निकल कर आ गई है। पूरे गुजरात की रीजन वाइज कहां किसे क्या मिलने वाला है, लेकिन जो पूरी पिक्चर है वो ये कह रही है कि फिर से बीजेपी आ रही है, न सिर्फ आ रही है बल्कि 148 इतनी सीटें आज तक में नहीं मिली। 148 भारतीय जनता पार्टी के मोदी मतलब जीत की गारंटी एकदम। गुजरात में तो खैर परसेंटेज भी कम हुई है। क्या कम हुआ है? गुजरात की परसेंटेज भी तो कम गई है बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी सीट हिस्ट्री बन रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अब कहीं ना कहीं कुछ तो ढूंढेंगे खुश होने के लिए।
हम हिमाचल में तो बना रहे हैं ना। आप 77 से नीचे 30 से 40 पर आ गए। केजरीवाल के एमसीडी से भी खुश हो सकते हैं। नहीं सुचरिता ये लोग मानने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी फैक्टर। ये मानने को तैयार नहीं। आज की वोटिंग देखिए आप, गुजरात में करीब 60% है कि नहीं? सुचरिता आप बताइए, करीब 7% है कि नहीं? अब बीजेपी 1995 से जीत रही है और एक बार भी हमारे अभिषेक एक्सपर्ट है गुजरात के, बता दे हमें कि क्या कभी वोटर टर्नआउट करीब 60% के करीब रहती है कि नहीं? 3 इलेक्शन उससे पहले कांग्रेस सरकार में आई, हर बार जो वोटर टर्नआउट हुआ करता था वो 52-53% 55 से कम था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब टर्नआउट 60% होती है, ये डायरेक्ट बीजेपी का प्रभाव है। ये समझने की इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब राज्य अब कोई कुछ कह दे कि आपकी एग्जिट पोल अच्छी है नहीं अच्छी है, मैं एक मिनट और एक आंकड़ा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 22 सीटें अभिषेक। दोस्तों इसको समझे कि 22 सीटें हैं जहां पे जो वोटर टर्नआउट है वो 15% से घटी है। इनमें से कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 15 हैं। 36 सीटें हैं गुजरात में जहां पे वोटर टर्नआउट 10 और 15% से कम हुई है। इनमें से कांग्रेस के 14 हैं और बीजेपी के 21 है। मैंने पूरा एनालिसिस किया इसका मतलब क्या है? जो आज की वोट है ना, ये लोग माने कि नहीं माने कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जीप में बैठकर उस तरह से कैंपेनिंग करते हैं, 4 से 5 घंटे, दिन में 5 रैली, उसका पूरा प्रभाव गुजरात में। आप देखिए ये नंबर, आज कोई भी कहेगा हमको 50 किलोमीटर लंबा रोड शो और ना 15 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो आज जो गुजरात में देख रहे हैं, ये वेव नहीं है, ये भयंकर वो मोदी को वेव है गुजरात के सेकंड फेज में एटलीस्ट। लेकिन दीप्ति 50 बहुत बड़ा वेव है। 15 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही दिन में दीप्ति। और फिर इनको लगता है कि भाई कि नरेंद्र मोदी करते क्यों है? नरेंद्र मोदी जो सोहेल करते, नरेंद्र मोदी करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। दीप्ति तभी आई थिंक अर्नब जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी इज अनबीटेबल एंड आई थिंक जितना जल्दी ऑपोजिशन ये समझ जाए और एक नीति डिवाइस करे उसके लिए अच्छा होगा। बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज इन डिनाइल, कांग्रेस पार्टी तो हमें पता ही नहीं कि वो चुनाव लड़ना भी चाहती है नहीं लड़ना चाहती। जी अर्नब। दीप्ति हमारे पास मैंने अभी तक पोल ऑफ और इनफैक्ट अर्नब आपको याद होगा एक पोल में हमारे हाथ में आ गया, वो मैट्रिक्स का पोल है। जी और हमारे साथ पीमार्क के आदमी भी जुड़ गए। अर्नब हमारे साथ पीमार्क के आदमी भी जुड़ गए। पीमार्क के आदमी भी हमारे साथ जुड़ गए। पोल ऑफ पोल्स भी आ रहा है, लेकिन पीमार्क के आदमी अगर आप सवाल लेना चाहें तो जी आप करिए जी बिल्कुल। तो अभी पीमार्क के ये 2 जो हमने अभी मतलब एग्जिट पोल सबसे पहले जारी करे हैं, ये जरा आप हमें बताएं कि आपका एक तो जो मेथोडोलॉजी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं, बोलो जी ये देखो भी मतलब सिर्फ अभी मतलब एग्जिट पोल है, इंतजार करिए रिजल्ट कुछ अलग होगा, तो आपका क्या जवाब है इनको? जी पीमार्क के नुमाइंदे। हाय ऐश्वर्या जी, हाय, हाउ मतलब गुड इवनिंग टू ऑल द फेलो पैनलिस्ट एज वेल। देखिए जो मेथोडोलॉजी और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा रिपब्लिक की पार्टनरशिप के साथ की, इन एवरी इलेक्शन सो फार हमने जो विनर है वो सही बताया है। एंड दोनों मद्देनजर देखते हुए हिमाचल और गुजरात इलेक्शन जो मेरे हिसाब से कई की फैक्टर थे, आपने काफ़ी हल्ला मचाया। एंड सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई मीडिया इंटरव्यूज़, कई ये चीज़ें हुए, बट उसका ग्राउंड में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई उसमें उसका प्रभाव नहीं दिखा इतना। और इसकी वजह से कांग्रेस का वोट शेयर एज अ वाइबल ऑपोजिशन जो देख रहे थे वो कम हुआ ज़रूर, लेकिन इसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ और वो एक ऐतिहासिक विक्ट्री की तरफ जा रहा है। ऐसा हमारे सर्वेज और इलेक्शन पर जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है। हिमाचल में कई लोकल मुद्दे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये महिलाओं को जो 1500 रुपये का पेंशन है उसकी जो योजना की गई है, कई लोकल फैक्टर्स थे, कई रेबल कैंडिडेट्स, बागी कैंडिडेट्स, मोदी फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ना लोगों को, विपक्ष को मोदी फैक्टर से है। तो जरा मोदी फैक्टर के बारे में बताइए। मोदी फैक्टर में आपके क्या फैक्ट, क्या आपके जो नंबर्स हैं गुजरात में मोदी फैक्टर के ऊपर? जी अनिमेश। जी गुजरात में अगर देखा जाए, अगर हमने लोगों से बात की, वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़े नाखुश है, ऐसे लोग मिले। वो
जो भी स्कीमें हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उससे नाखुश है, वो थोड़े बहुत लोग दिखे। वो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, उससे नाखुश है, वो देखे। बट किसी ने भी अक्रॉस, हमने जिस भी जिलों में बात की, अक्रॉस जातियाँ जिससे बात की, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी मेंटेन्ड है। 8 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, गुजरात बड़ी बात, बट वो लोकप्रियता और बड़ी बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर है। बड़ी बात इसी डिसिसिव फैक्टर की वजह से है जो कि बीजेपी जो है वो एक ऐतिहासिक। अनिमेश, अगर 2002 से सीटें देखें बीजेपी की तो 127, 117, 115 ये घटी हैं, 99। लेकिन आपका सर्वे अब 2022 में एकदम से एक बड़ी छलांग दिखा रहा है बीजेपी के लिए, 128 से 148, यानी 99 से ये बहुत बड़ी छलांग है। उसका एक बड़ा कारण क्या है? अगर आपको एक कारण बताना हो कि ये इतनी बड़ी छलांग 2017 से कैसे लगाई बीजेपी? देखिए, 2 बड़े कारण हैं। एक तो है कि जो फाइट है वो थोड़ी त्रिकोणी बन गई थी, ट्रायंगुलर बन गई थी आम आदमी पार्टी के आने से। और दूसरा है, मतलब गुजरात इतना इम्पॉर्टेंट प्रदेश है, इतना बड़ा इलेक्शन है, उसमें अगर सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप कोई कैंपेनिंग ही ना करे तो उसमें जो वर्कर है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उसमें कैसे जोश आएगा? तो उसकी वजह से साइलेंट कैंपेन जो भी है, जिसकी वजह से वो अभी भी नंबर 2, और जो उनका संगठन है, जो 40-50 साल से जो संगठन बना हुआ है, उसकी वजह से अभी भी नंबर 2 आ पा रहा है। देखिए, इसका एक डायरेक्ट मैसेज नहीं, इसका एक डायरेक्ट मैसेज है। और अगर हम जरा मल्टी ऑनर गरिमा, साल की गवर्नमेंट, नहीं, इसका एक डायरेक्ट मैसेज है। हर्षवर्धन जी आ गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसका एक क्लियर मैसेज है कि मोदी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है विपक्ष। कांग्रेस तो कोशिश भी नहीं करता, कांग्रेस तो हथियार डाल चुका है। गरिमा के अनवे पौने, मैं कह रहा हूं भाई, कांग्रेस तो हथियार डाल चुका है, लेकिन हर्षवर्धन जी, आम आदमी पार्टी हो, इधर हो उधर हो, कोई हो, किसी को तोड़ नहीं मिला है। मोदी और शाह डुओ का भी, और नरेंद्र मोदी एज एन इंडिविजुअल। नहीं ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है, ये एक बड़ी बात स्थापित करने जा रहा है कि भारतीय राजनीति में नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता भरोसा नहीं करने वाली। आप हर बात पर निगेटिव कमेंट करके सोचेंगे, और एक और जो मन में रहता है ना कि आज नहीं तो कल कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 27 वर्ष तक सत्ता में है तो जाएगा ही जाएगा, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। तो नकारे नेताओं को, पहला निगेटिव कमेंट करने वाले लोगों को पसंद नहीं कर रही जनता, दूसरा नकारे नेता। नकारे शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचते कि ठीक है भाई, कोई है सत्ता में आया, राशिद अलवी जी, और उसको लेकर एक शब्द निकाला गया, एंटी इनकम्बेंसी। राशिद अलवी जी आया है वो बुरा करेगा। राशिद अलवी जी हमेशा गलत काम बोल रहा हूं जी। हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं वापस आपके पास। कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद अर्नब राशिद अलवी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राशिद अलवी जी, कहां है कांग्रेस? कहां जोड़ने में लगे हैं आप भारत को? मुझे भारत तो फर्स्ट क्लास है, जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। गुजरात में 10% का डिक्लाइन, गिरावट दिखा रहा है वोट शेयर में राशिद अलवी जी, गुजरात में, और हिमाचल में भी हार रहे हैं आप। राशिद अलवी जी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में हम जरूर कमजोर हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, इतनी मेहनत नहीं हो पाई है। और एक ये भी फर्क होता है, जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री हो, वहां पे लोगों के अंदर एक एहसास रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री है। गुजरात के लोगों को ये भी एहसास है। हालांकि गुजरात में विकास नहीं हुआ है, गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, किसान के लिए पैदावार के लिए पानी नहीं है। अभी आपने देखा कि ब्रिज गिर गया, 100 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री पोलिंग स्टेशन पे तो जा रहे हैं, वहां पे लोगों का हाल पूछने के लिए नहीं गए। कितनी तकलीफ की बात है। जो प्रधानमंत्री जनता की बात करता हो, वो जनता के मरने पे उन लोगों के, लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राशिद अलवी जी, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी कांग्रेस को दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री चल क्यों दिए ना, सोहेल सुचरिता। अभी अर्नब, ब्रेकिंग आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने रबिश कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है दीप्ति कांग्रेस की इस कंप्लेंट को कि भाई अब चलने से भी रोक दें क्या। राशिद अलवी जी, दिक्कत क्या है? कांग्रेस अभी भी 2017 में अटकी हुई है कि 2017 में भी कंप्लेंट किया था, कुछ नया तो हुआ नहीं, वही कंप्लेंट दोबारा कर दो। नरेंद्र मोदी सुबह गुजरात में थे, वोट डाला, दोपहर को दिल्ली आ गए। 2024 की स्ट्रेटेजाइज ऐसी इलेक्शन मशीनरी के साथ दीप्ति
कांग्रेस को टक्कर लेनी है और ऐसी इलेक्शन मशीनरी और ऐसे दो नेताओं के साथ टक्कर लेने के लिए राशिद अल्वी जी 2017 से आगे आना पड़ेगा। 2013 में जो कंप्लेंट किया वही दोहराएंगे 10 साल बाद, तो कैसे चलेगा दादा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट ठीक की थी, लेकिन इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के फैसले नहीं करता है। आप देख तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर फाइल हवाई जहाज की तरह दौड़ती चली जाती। और मैं आपसे ही पूछता हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हिमाचल की तारीखें ऐलान कर दी इलेक्शन कमीशन ने, गुजरात की क्यों ऐलान नहीं की? आपको मालूम था कि गुजरात की तारीखें होनी हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्यों तारीखों का ऐलान नहीं किया? आपकी भी जिम्मेदारी है, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। और मैं तो बहुत अरसे से नहीं लगता कि कांग्रेस के ये जो बहाने हैं ना सर, कांग्रेस के ये बहाने हर इलेक्शन में हम सुनते हैं। कांग्रेस क्या इलेक्शन लड़ना चाहती है या एक एनजीओ बनना चाहती है कि लोगों को जोड़ना है, लोगों से बातचीत करनी है, सिर्फ संवाद तक करना है? अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको इसी सिचुएशन में जीतना पड़ेगा। अगर आप 27 साल बाद भी सर बीजेपी को गुजरात से नहीं निकाल सकते, एक आम आदमी पार्टी आकर 15% का वोट शेयर ले लेती है, आपका वोट शेयर 10% गिर जाता है सर, तो कांग्रेस कहां है? कैसे लड़ेंगे आप 24 का चुनाव? आपने एक जुमला बहुत सही कहा है, और ये जुमला मैं भी बार बार कहता हूं, पार्टी के अंदर भी कहता हूं, मीडिया से भी कहता हूं। आपने कहा कि इन्हीं हालात में कांग्रेस को जीतना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो इन्हीं हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उधर खड़ा है, एजेंसीज उधर खड़ी नहीं, ये तो आपकी रीडिंग है ना सर, ये तो आपकी रीडिंग है। देखिए ये आसान होता है, आप मीडिया को अटैक कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को अटैक कर लीजिए, ईवीएम खराब है बोल दीजिए। अगर आप हिमाचल में जीत जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाता है, आप गुजरात में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। लेकिन ये देखिए ना कि क्या लोग आपको बिलीव करते हैं? लोग तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप राहुल गांधी की पदयात्रा देख रही हैं, हजार आदमी उसके अंदर आ रहा है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको चुनाव नहीं लड़ना है सर? राशिद अल्वी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं या नहीं? देखिए, सत्ता हासिल करना अकेला मकसद नहीं हो सकता है। हम समाज को नहीं तोड़ना चाहते, हम देश को नहीं तोड़ना चाहते, हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। राशिद अल्वी जी, इन्हीं हालात के अंदर ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता, वही पूर्व सांसद राशिद अल्वी कह रहे हैं, जिसने देश पे हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रागी जी 50 साल से ज्यादा करा। अरे सर, आज जीत नहीं सकते, नहीं जीत नहीं सकते। दीप्ति तो कह रहे हैं नहीं जीत नहीं सकते। पुष्पेन जी के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आप दोनों के पास। पुष्पेन जी, आज राशिद अल्वी जी कह रहे हैं, और मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, पुष्पेन जी, राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि भाई जीत नहीं सकते क्योंकि हमें जीतना नहीं है। ठीक, पुष्पेन जी, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो जीतना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको कोई जबरदस्ती तो जिताएगा नहीं। अब आप अगर देखें, पिछले काफी समय से भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उनको इतनी सीटें मिली इंदिरा गांधी की हत्या पे मिली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी सिंडिकेट के कारण बनी। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को बने, लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, तो ये सब तो प्रधानमंत्री ऐसे बने। अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें जीत नहीं दिलाई। आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है तो एक्स प्रधानमंत्री है। आप मनमोहन सिंह की रैलियां कराते ना गुजरात में, अगर वहां प्रधानमंत्री कर रहा है तो कहते वो 250 क्यों कर रहा है? अरे आप मनमोहन सिंह को ले जाते। वो जो भारत जोड़ो यात्रा है और भारत छोड़ो यात्रा है, उसको उनसे कहते कि गुजरात में करें। तो अब अगर दूसरा कोई कर रहा है तो आप कहते हैं 250 क्यों की? तो आपसे पूछ के करेंगे क्या? गौरव भाटिया जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर रैलियां की, यहाँ पर हमारे पास जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, पीमार्क ने एग्जिट पोल किया है, वहां उनके नुमाइंदे अनिमेश पांडे कह रहे हैं कि 77 सीटें कांग्रेस के पास थी गुजरात में, 20 का डिफरेंस था 2017 में आप में और कांग्रेस में। उस 20 को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उल्टा नीचे गिर गए धड़ाम।
30 से 42 सीटें अब बता रहे हैं। यानी आप सोचिए कि अगर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, अनिमेष पांडे कह रहे हैं कि नेता की कमी है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कैसे किया जाए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो रुझान आपके एग्जिट पोल में सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि उससे भी बेहतर परिणाम आएंगे और इतिहास रचा जाएगा। 27 साल बाद जनता फिर कह रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास है, ये हमारी पहली और आखिरी पसंद है। सुचारिता जी, भारत में राजनीति में 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल होता है और सरकारें बदल जाती हैं। जहां कांग्रेस शासित राज्य पंजाब। गौरव जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ। मेरे साथ इस समय गुजरात के गृह मंत्री और युवा नेता अभिषेक हर्ष सांघी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय। हर्ष, वेलकम टू रिपब्लिक। हर्ष, इस समय रिपब्लिक का जो गुजरात एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है भाई, हिस्ट्री इन द मेकिंग, 128 से 148। मेरे को जितनी जानकारी है, आपका भी जो इंटरनल सर्वे वो भी 138 दिखा रहा है मैक्सिमम। पीमार्क का ये जो सर्वे वो दिखा रहा है 128 से 148। हर्ष, जैसे डायलॉग होता है, खुश तो बहुत होंगे आज आप। देखिए संबंधों का जो इतिहास होता है उसके नंबर्स लिखे नहीं जाते हैं। ये सत्ता का इतिहास नहीं है, ये संबंधों का नया इतिहास गुजरात भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक साथ मिलके बनाने जा रहे हैं। आज हमने रुझान देखे हैं और मैं स्पष्ट जमीन पे ये देख पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता गुजरात के चारों कोने में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने के लिए आगे निकल चुके हैं। हर्ष जी, आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमने लोगों से जाकर जब पूछा कि मुद्दा क्या है, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुद्दा है, मोदी को जिताना है, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। आपको लग रहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्ट गुजरात के लिए आज भी, जबकि 8 साल से वो केंद्र की राजनीति में है, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है? देखिए, मोदी जी आने संघर्ष, मोदी जी आने साहस, मोदी जी आने विकास का दूसरा नाम है। तो मुद्दा विकास का होगा तो मोदी जी आ ही जाएंगे। और ये है सत्ता, और सत्ता नहीं, सत्ता से ज़्यादा विश्वास का मुद्दा। तो मोदी जी यानी विश्वास, और विश्वास के साथ विकास का मुद्दा था। विश्वास और विकास का मुद्दा एक भयंकर बड़े पैमाने में इस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और मुद्दा विकास का ही था और विकास का मुद्दा आगे बढ़ा है अच्छी तरह से। हर्ष भाई, अभिषेक बोल रहा हूं। नंबर तो आपके आ जाएंगे। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि आपके पड़ोस में वराछा रोड पे क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि ये जो नई पार्टी आई है दिल्ली से, कुछ वोट तो लेके जा रही है। देखिए अभिषेक जी, वराछा रोड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कुमार कानानी 15,000 से ज़्यादा मतों के साथ विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूरत शहर में सभी सीटों पे विजयी होने वाली है। अभिषेक जी, आप गुजरात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आपने गुजरात की ज़मीनों पे काम किया है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, ये बात सुन के मुझे बेहद दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के 2 युवाओं को 8वीं तारीख को इस्तीफा दे लेने के लिए कहा। फर्स्ट फेज के चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल ने ये दोनों नेताओं से बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने पंजाब और दिल्ली की जो सामान्य नागरिक है, नहीं, आप वो दोनों को जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब चीज़ों की जानकारी रखते हो। आपके पास ये भी माहिती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे गुजरात के 2 युवाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है। उन्हें ये व्यवहार क्यों किया? दिल्ली और पंजाब के लोगों की जो मेहनत की कमानी थी वो गुजरात में प्रोपोगंडा के रूप में उन्होंने उपयोग किए, और उसके बावजूद में भी नहीं मिल रहा है गुजरात के कोई नहीं। मैंने आपको कहा ना, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, मुझे नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मेरे गुजरात के कोई युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। आप महकमा आपके पास है, आप नाम बता दो, खबर बन जाएगी।
नहीं, खबर तो आपके पास है ही, पक्की खबर है आपके पास जो है वो, लेकिन किस प्रकार से इस प्रकार से व्यवहार किया जाए, मेरे राज्य के नागरिकों को धमकाया जाए। ये दो युवा, उसने भूल से भले आम आदमी पार्टी पकड़ ली हो, लेकिन ये दोनों युवाओं ने सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़े थे। आपने उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया कि दूसरे युवा कभी आम आदमी पार्टी की ओर देखेंगे भी नहीं कभी। क्या इसका नुकसान हुआ है? आपने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन पैसे से थोड़ी ना चुनाव जीता जाता है। क्या इसका गुजरात में नुकसान हुआ है? क्योंकि जो कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कुछ कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इटालिया ने, इसका नुकसान हुआ है। गुजरात के लोगों ने वोट किया है, ये गुस्सा भी लोगों में था कि उनके अपने बेटे के खिलाफ कोई ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, हम बहुत भावुक लोग हैं, हम भावुक लोग हैं, हम मूर्ख थोड़ी ना है, भावुक लोग हैं, हम भगवान में मानने वाले लोग हैं, हम आस्था में मानने वाले लोग हैं। हमारे भगवान पे कोई इस प्रकार की बात करेगा, इस प्रकार की विचार रखेगा और ये विचार के साथ चुनाव लड़ने आएगा तो हिसाब तो जरूर से करेंगे ना। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तो मैं क्या बात करूं, वो मेरे देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर से है, लेकिन उनकी पार्टी के ही कुछ और नेता उनको नेता नहीं मानते हैं, तो वो दुख और वो बौखलाहट में वो गुजरात में आके कुछ भी बोलते हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दर्द की दवाई, भारतीय जनता पार्टी के पास ये दर्द की दवाई होनी जरूरी नहीं है। अच्छा हर्ष जी, एक सवाल बताइए। की दवाई जरूर से कर ली, ठीक है, ऑपोजिशन को छोड़िए, मुझे बताइए कि कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी फैक्टर ही अकेला रीजन है कि बीजेपी बार बार हर जगह जीतती है। लेकिन जो आपके स्टेट में बीते 8 साल में चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे विजय रूपाणी हो, आनंदीबेन पटेल हो, या अभी जो करंट आपके चीफ मिनिस्टर है, उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। एक जेनरेशनल चेंज, जेनरेशनल शिफ्ट लाने की बात है, तो क्या आप गुजरात के अगले भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के नेता है मोदी जी, करोड़ों भारतीय के नेता है मोदी जी, और करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा है मोदी जी पे। तो मोदी जी तो फैक्टर हमेशा रहने वाले हैं, गुजरात में नहीं, ये देश के हर कोने में रहेंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी फैक्टर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है मोदी जी, हम मोदी जी का नाम उनका कार्यकर्ता नहीं तो कोई और लेगा। और गुजरात में मोदी जी का जन्म हुआ है, गुजरात में ही मोदी जी ने सालों तक काम किया है, तो मोदी फैक्टर तो गुजरात में जीवन भर रहने वाला है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आप अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे जो सीनियर नेता हैं उनके साथ काम मैं सीखता हूं, और आने वाले दिनों में भी मैं भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक बन के उनके साथ काम सीखूंगा और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल हर्ष सांगी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप दोबारा हमारे साथ लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, थैंक यू। और अब हम जो सुचरिता, अभिषेक, सोहेल, दीप्ति जो लेके आ रहे हैं वो है पोल ऑफ पोल्स। पीमार्क और मैट्राइज दोनों के नंबर्स ऑन है, दोनों के नंबर्स। और ये पहले हम हिमाचल का बता रहे हैं, हिमाचल में बीजेपी 37, ये पोल ऑफ पोल्स है पीमार्क और मैट्राइज दोनों का मिला के। भारतीय जनता पार्टी 37, कांग्रेस 30, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स 1, यानी भारतीय जनता पार्टी वो नंबर क्रॉस कर रही है और 37 ला रही है। ये पोल ऑफ पोल्स है पीमार्क और मैट्राइज दोनों का मिला के। भारतीय जनता पार्टी 37, कांग्रेस 30, आप 0, अदर्स 1। और अब स्टेट चेंज कर देते हैं सुचरिता, सीधा यहां से निकलते हैं गरिमा हिमाचल से और चलते हैं गुजरात। पोल ऑफ पोल्स दोनों स्टेट बैक टू बैक दिखा के फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर हिमाचल में जैसा आपने कहा सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की पोल ऑफ पोल्स में, और गुजरात में देखिए क्या नंबर आ रहे हैं, 112, 121, यानी यहाँ भी सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की। 112 से 128 पोल ऑफ पोल है, वो मैट्राइज के नंबर नीचे वाले जी, ठीक है। 128 से 148 जो हम दोनों नंबर दिखा रहे हैं, यानी कि 128 सीटें इस महा एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए 46, आम आदमी पार्टी के लिए 5 सीटें आम आदमी पार्टी को इस पोल में मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी गुजरात में सरकार साफ तौर पर बनाती नजर आ रही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि ये गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मीडियन देखें तो 128 भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभिषेक
अभी तक के हिस्ट्री से ज्यादा होगा, चाहे एक ही सीट ज्यादा है, लेकिन अगर पीमार्क और मैट्राइज का दोनों का मीडियन निकालें तो 128 है, मैक्सिमम 127 था। कांग्रेस 77 से 46 पे आ रही है। आम आदमी पार्टी सेठी साहब चले गए, लेकिन कौशिक जी खुश हो जाइए, 0 पे नहीं है, 5 पे हैं आप, और अदर्स 3 है। अभिषेक 128 ये पोल ऑफ पोल्स में दिखा रहे हैं, ये पीमार्क और मैट्राइज का मीडियन निकाल के 128। जी अभिषेक। देखिए ऐश्वर्या, मैं समझता हूं जो आंकड़े आ रहे हैं वोटिंग के परसेंटेज के, पोलिंग जो थोड़ी कम हुई है, शायद उसके कारण ऐसा दिख रहा है, वरना ये और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो सकता था, क्योंकि एज अ सिंपल फंक्शन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ अपोजिशन वोट एंड द आम आदमी पार्टी रियली eating into and destroying the Congress vote base beyond Surat. Surat, Aam Aadmi Party is a player, perhaps might win 1 or 2 seats. I can give it. They might not win 5 seats. I'm sticking my neck out. As an observer of Gujarat politics, I'm sticking my neck out. Aam Aadmi Party might get 1 or 2 seats, max 3 seats, but not beyond that. उसके अलावा जो भी आम आदमी पार्टी करेगी वो कांग्रेस पार्टी का वोट अपने तरफ लेगी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगी। तो ये संख्या थोड़ी बदल सकती है, पर ये जो आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का गिरा है उसमें से कितना अर्बन एरियाज में ज्यादा गिरा है, क्योंकि मेनली अर्बन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग होती है, तो उसके कारण क्या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, और इसीलिए रूरल एरियाज में, खासतौर से ट्राइबल बेल्ट में हम देख रहे हैं बहुत वोटिंग हो रही है। मैं आपको बताऊं ये जो मैट्राइज का पोल है, हाँ, अगर आप इस मैट्राइज के पोल में जाएं तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। जैसे ही आप देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज, और वोट शेयर में जैसे ही आप जाते हैं, आप जैसे ही वोट परसेंटेज में जाते हैं, तो वो सारी चीजें एक एक करके निकल के आती हैं। और अगर आप देखें इसके अंदर ये दिखाता है अभिषेक कि आप कैसे, और आप कास्ट वाइज पे जाइए, पाटीदार पे जाइए, दलित पे जाइए, आदिवासी में जाइए, ट्राइबल्स पे जाइए, कड़वा पटेल में जाइए, लेवा पटेल में जाइए, ओबीसी, स्वर्ण हिंदू, तो आप जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो दिखता है कि वो बीजेपी ने कंसोलिडेट किया है और ज्यादा, और 27 साल बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। बिल्कुल, और ये कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है कि लोगों को ये डबल इंजन सरकार का जो फायदा बीजेपी ने बताया है, चुनावी वायदा नहीं कहें, चुनाव में प्रचार जो किया है वो दिख रहा है, पिछले 8 साल में दिखा है। और ये तो कहा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सन ऑफ द सॉइल हैं, गुजरात के लोगों के लिए उनका बेटा है जो प्रधानमंत्री है देश का, तो वो कैसे उससे हट सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक सीटों में भी जा सकता हूं। आप देखिए छोटा उदयपुर में जैसे मोहन राठवा 9 बार के एमएलए कांग्रेस पार्टी के, पिछली बार प्रोटेम स्पीकर थे, यानी पूरे असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे, वो अभी चुनाव से 1 महीना पहले चले गए बीजेपी में। उनका बेटा चुनाव लड़ा छोटा उदयपुर से। ट्राइबल सीट है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, पर मैं समझता हूं मोहन राठवा का खुद का कद और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में आप समझे कि कौन जीतता है वहां। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूं, एक सीट का, खेड़ ब्रह्मा ट्राइबल सीट है नॉर्थ गुजरात में, वहां से बहुत समय से वहां के जो अश्विन कोतवाल करके कांग्रेस के एमएलए थे, जब नरेंद्र मोदी वहां पे मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस जीतती थी और अश्विन कोतवाल वहां से एमएलए बनते थे, वो अभी 1-2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मैं समझता हूं ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो अभिषेक एक और दीप्ति, हाँ, जाति के हिसाब से और रीजन के हिसाब से की बात की अभिषेक, तो मैट्राइज ने एक सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी का समर्थन विरोध, हाउ मेनी परसेंटेज सुचरिता, ये कितना बड़ा इशू है। 34%, 34% ऑफ गुजरात के लोग कह रहे हैं केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ 18%, महंगाई 11%, बेरोजगारी 9%, राज्य सरकार का कामकाज 6%, विधायक का कामकाज 5%, ध्रुवीकरण 3%, अन्य कोई मुद्दा 14%, लेकिन 34% नरेंद्र मोदी इज द ओनली फैक्टर। कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो लोग कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल लेक्सिकन अब लिखा जाएगा अभिषेक सुचारिता, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कोई एक ऐसा नेता है, और वो भी आज के टाइम में। आप देखिए नेताओं को लेकर किस तरह की छवि है, नेता करप्ट होते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, नेता अपने लिए और अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और नेता का आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे समय में आज हम सुबह रिपब्लिक पर मैं और अभिषेक वो तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री की, वहां पर आपने जिससे भी बात की हो, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, आम लोग थे, लेकिन हर किसी को ना ही सिर्फ एक रिकॉल है कि एक सन ऑफ द सॉइल है, और साथ ही साथ जिस तरह
एक पर्सनल कनेक्ट की बात होती है कि इस तरह एक ऑर्गेनिक लव, एक शब्द है अंग्रेजी का ऑर्गेनिक लव, यानी आपको ना वो किसी के लिए बनाना पड़ता है, नेचुरली आता है, तो वो एकदम साफ नजर आता है। और ये शायद सिर्फ गुजरात नहीं है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं, चाहे पहले सिर्फ महिला वोटर की ये बात होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं चाहे वो यूथ हो, चाहे एस्पिरेशनल यूथ हो, चाहे अब ऑपोजिशन भी हो। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कोई भी मुद्दा है 2024 में अब लड़ाई लड़ने के लिए। और हिंदुत्व के साथ मोदित्व, हिंदुत्व के साथ अब मोदित्व, मुझे लगता है यही एक नया, कौशिक जी का तो मुंह ही मतलब उतर गया जैसे ही आपने, एक नया फॉर्मेट है। कौशिक जी का तो मुंह ही उतर गया। संजीव कौशिक जी, क्यों दीप्ति ने क्या ऐसा कह दिया आपका, आपका मुंह उतर गया? किसने कहा? बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। अरे तो आप दे रहे हैं ना, आपको बाबूलंद बोलिए। इलेक्शन में तो सबको सर समान मौका मिलता है ना। आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल समझ के खुश हो रहे हैं तो मैं तो भाई एग्जिट पोल बोल रहा हूँ कि एक सरकार, मैंने तो पोल, हमने तो पोल ऑफ पोल्स भी कर दिए। 40 साल से वहाँ थे, 40 स्टार के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक वहाँ उतार दिए, 3 मुख्यमंत्री उतार दिए, जीव कौशिक, देश के प्रधानमंत्री समेत 6 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिए, और बचा खुचा आज देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मैटर क्या करता है सर, आप इलेक्शन जीते, आपको इससे दिक्कत है कि प्रधानमंत्री वोट देने जाते हैं तो आप कहते हैं रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री एक नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, आप एक गाड़ी से उतरते हैं, आप वोटिंग स्टेशन तक जाते हैं पैदल, उसके बाद वापस आते हैं, अपने भाई से मिलते हैं। मुझे बताइए, अगर आप इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते रहेंगे वहां तक कैमरा जाए तो कैसे चलेगा? हाथ मिलाए, अभिवादन करें लोगों के साथ साथ, वो भी स्वर में स्वर मिलाए। आपने कल आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखी, आप फिर इधर आ गए क्या? किसको नहीं दिखाई दे रहा था? तो आप केजरीवाल के साथ थे, आप फिर राहुल गांधी के साथ आ गए जैसे ही 5 सीट आई। किसको नहीं दिखाई दे रहा? आपने सर अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखी? आप तो केजरीवाल, अजय वर्मा जी, आपको दिक्कत है, आपकी पार्टी को दिक्कत है कि मोदी और शाह चले भी ना। सुनिए सर, आपकी पार्टी को इलेक्शन में आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखी थी? अरविंद केजरीवाल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वोट देने जाते हैं और बोलते हैं कट्टर ईमानदार लोगों को दिल्ली वोट देगी। अब क्या ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? नहीं, मैंने तो कल अभी तो एमसीडी को चर्चा भी नहीं करना चाहती थी, अभी चर्चा अभी तो चर्चा भी नहीं करना चाहती थी। सवाल पूछा है ना सर, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आपको मोदी जी की चाल पे आप सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन भाग जाते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते हैं वोट डालने, पूरा तामझाम करते हैं, वो आपको नहीं लगता गलत? 27 सालों से जिस राज्य में जो पार्टी सत्ता में हो, वो 50 किलोमीटर का इस तरह से, तो सर क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, आप भी लड़ लेते हैं, वैसे चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं सर, उसके लिए सारी ताकत झोंकी जाती है। आम आदमी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? आपको क्या लग रहा है, आप जीत रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं गुजरात में, हिमाचल में भी सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल समझ के यहाँ बैठ के चर्चा। अरे सर आप अपना एग्जैक्ट पोल दे दीजिए, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं गुजरात में, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं गुजरात में? नहीं, मैं आप भाई आपको लग रहा है ये पोल गलत है। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, इंतजार कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट डाला है, बिल्कुल परिवर्तन, क्योंकि लोगों को पता है क्या किया है। अजय वर्मा जी, ये करा रहे हैं परिवर्तन, आप क्या करा रहे हैं गुरुजी? क्योंकि मेरे को तो ये देख के आज बहुत खराब लगा, पता है क्या अजय जी? नरेंद्र मोदी अभिषेक सुबह गुजरात में थे, वोट डाला, दोपहर को 2024 की तैयारी कर रहे थे। आप 2017 में अटके, यही मैंने राशिद अलवी जी से भी पूछा, 2017 में कंप्लेंट की थी अजय जी कि मोदी क्यों चले, तो भाई कुछ तो करना है दिखाने के लिए, क्या करें, दोबारा क्यों चले? अब मोदी चले भी ना, अब मोदी बैठे भी ना, मोदी उठे भी ना, मोदी बैठे भी ना। अरे भाई अजय जी क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी, सत्ता है, साधन है, और जो कहते हैं ना डबल इंजन नहीं, 6 इंजन उनके पास हैं। देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का चीरहरण करा है, मैं सरेआम बोल रहा हूँ, चीरहरण करा है, बिल्ला लगाए कमल का यहाँ पर ऐसे, मित्रों यूं, ये हमेशा चीरहरण आज तक इतिहास में नहीं हुआ। और 2.5 घंटे का आज रोड शो हमने शिकायत करी। आज भी 2.5 घंटे का प्रधानमंत्री कौन सी घड़ी में देख रहे हैं समय आजकल आप वहां पे? नहीं, ये कौन सी चाइनीज है क्या घड़ी आपकी? सुन तो कह रहे अजय जी मजाक कर रहे हैं, आज 2.5 घंटे चाइनीज। अरे आपको इसलिए मैं आपसे सही कह रहा हूँ, आपकी घड़ी चाइनीज है, इस तरह आपकी घड़ी चाइनीज है। आज क्या 2.5 घंटे का था क्या? उनका अवधेश जी एंकर बैठे, चाइनीज घड़ी बदल दीजिए, ये चाइनीज एंकर बैठे हुए। आरएसएस से अनुरोध करूंगा कि वो एजेंडा वहाँ गोडसे साहब के पास। आप मेरे को ये बता दीजिए अजय जी, मोदी के चलने से दिक्कत है, आपके नेता मेहनत नहीं करेंगे, दिक्कत मोदी के चलने से आपको? जब उन्हें दिख रहा है कि वो जीत रहे हैं, उनके सारे साधन हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है? वो तब भी भाई कर्मठ आदमी कह रहा मैं करूंगा। ये एक मेगा इवेंट है, ये एक प्रोपराइज तरीके से। और आपकी भारत जोड़ो क्या है? भारत जोड़ो तो हमारा जनता के साथ जुड़ने का है। नहीं, वो कहा था दीप्ति ने, वो आप मतलब एनजीओ बनाने निकले हो। सुन तो लीजिए मेरा पूरा 30 सेकंड पहले मैं बता दूं।
आप इवेंट कहें ये अच्छी बात नहीं। देखिए नहीं, आप सुन लीजिए 30 सेकंड मेरा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में मुझे भी तो बोलने का अधिकार है। आप बोलिए, पर उसको इवेंट मत मैं ऐसा तो कुछ बोली नहीं। हम आपको इवेंट नहीं बोल रहे। नहीं, देखिए ये तो लोग बता रहे हैं, देश के लोग बता रहे हैं, विदेश के लोग बता रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हमने चुनाव आयोग से शिकायत किया है। नहीं, मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ, उसके बाद बोलेगा देश की जनता ना बताती है वोट के जरिए। देश की जनता वोट के जरिए, देश की जनता वोट के जरिए बताती है और वोट के जरिए बताएगी। आपका वोट शेयर एग्जिट पोल में 10% गिर रहा है। 8 तारीख को आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, देख लेंगे कितना परसेंट रियली बढ़ा है और बढ़ा है। मैं जो आपका एग्जिट पोल आ रहा है, देखिए मैं तीनों जगह का बता रहा हूं, मेरी पहले भी चर्चा हुई है। दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो 10-5 सीटें इधर। हिमाचल में हम बैठेंगे, फिर 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुजरात और गुजरात में जो आंकड़ा 28 से 48 दे रहे हैं, मेरे हिसाब से 100 के अंडर, यानी बस इतना बीजेपी सरकार बनाएगी, ये मान लीजिए। चलिए आपने मान लिया गुजरात में बीजेपी सरकार उसका कारण है, उसका कारण है, सरकार बना रही है। देखिए 10-10, 12-12 चीफ मिनिस्टर, उनको भी सुन लीजिए ना, बोल के चुप करा 10-12 चीफ मिनिस्टर, 250 एमपी, 250 हर सीट पर, 180 पर 1 पे 2 भी थे। ये रिपोर्ट है मेरे पास। और प्रधानमंत्री आपको किसने रोका है प्रचार करवाने से? किसी ने कहा है कि अपने जो 6 इंजन है चुनाव में, 6 इंजन में एक भारत जोड़ो कंपनी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा सभा 16 सभाएं हुई है सचिन पायलट की। किसी केंद्रीय नेता में केवल प्रियंका वाड्रा का 4 सभाएं, बाकी कोई केंद्रीय नेता प्रचार करने वाला नहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आते हैं। एक तो इन्होंने अच्छा काम किया कि राहुल गांधी को दूर रखा हिमाचल में। इस समय देखिए बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। जो एग्जिट पोल हमेशा एक ट्रेंड तो बताता है, एक आध गड़बड़ हुआ, लेकिन पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो एग्जिट पोल मोटा मोटी एक ट्रेंड बताता है, सीटें ऊपर नीचे होती है। अरे पूरी बात कर लो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी अपनी भूमिका मानने को तैयार नहीं है। दादा कांग्रेस नहीं मान रही, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस कह रही सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। नहीं अजय जी आ रहा हूं। पुष्पेन जी कांग्रेस कह रहे देखो ऐसे ही चलेगा। मैं आऊंगा अजय जी, वापस आऊंगा आपके पास। पुष्पेन जी देखो कांग्रेस कह रही है ऐसे ही था, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही। हम तो अपनी यात्रा पे निकले भाई, यात्रा देखे, इलेक्शन तुम संभालो। उनका तो बेसिक रख है। पंकज जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। जी बस सवाल यह है कि जब कांग्रेस ने हाराकेरी करने का तय ही कर लिया है तो फिर दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं भाई आप? बार बार ये बात सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 250 यात्राएं की, 250 रैली की। मैं कह रहा हूं भाई आप मनमोहन सिंह तो है ना, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी आप 400 सभाएं कराते। प्रियंका 500 सभाएं करती, कोई मने कर रहा है आपसे करने के लिए? ये तो अजीब बात है कि आपने ऐसा खिलाड़ी उतारा तो हम क्यों नहीं? अरे आप उतारिए ना, मने किसने किया है? चुनाव हो रहा है या क्या कहते हैं वहां कोई और हो रहा है? चुनाव में तो लोग यही ताकत झोंकेंगे ना अपनी, जो जिसके पास है। आपके पास जितने वाड़ थे वो किया आपने। अब जो भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं वो अमेठी छोड़ के केरला चले गए हैं। तो सवाल ये कि उनसे सवाल पूछिए ना कि जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे वो तो सभा कर नहीं रहे, आप दूसरे से कह रहे क्यों कर रहे हो? तो उसमें दूसरे की गलती है, आपकी गलती है। आप कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। पंकज शर्मा जी सुन रहे हैं ना? पंकज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। पंकज जी अब भाई अगला 250 कर रहा है तो आपको किसी ने थोड़ी रोका है, आपके थोड़ी किसी ने हाथ पैर बांध के बैठा दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। आप भी कर लीजिए। पंकज जी, पंकज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं पुष्पेन जी का। जी पंकज जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है दादा। पंकज जी का ऑडियो। जी पंकज जी का ऑडियो ठीक करके वापस आ रहे हैं तब तक। पंकज जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अजय जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। देखिए वायनाड भी हिंदुस्तान का पार्ट है, हाँ। रायबरेली अमेठी भी हिंदुस्तान का पार्ट है। ये जो कुछ लोग बैठ जाते हैं ना, बांटने का काम शुरू से करते हैं। कौन बांट रहा है? करते हैं, कर रहे हैं बांटने का काम के साथ। पुष्पेन जी ने ऐसा क्या कह दिया? बांटने का ही तो काम कर रहे हैं। क्या बांट? हिंदुस्तान की जो अखंड साम्राज्यता है 30 स्टेट्स की, वो हिंदुस्तान की है, वो कोई ब्रिटेन की है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ये मतलब इसलिए कह रहा हूँ, क्यों इतना जल रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 25-30 रैली की। अभिषेक कितनी की रैली प्रधानमंत्री ने? एग्जैक्टली 31 मतलब 31। आपको वो 31 250 दिखती है? अच्छा अरविंद केजरीवाल ने कितनी, वो तो सुन लीजिए। मेरी 22 रैली और 10 रोड शो। कौशिक जी सुन रहे हैं ना? और उसमें भगवंत मान जी भी थे प्रधानमंत्री, और उसमें भगवंत मान जी भी थे। भगवंत मान, उसके अंदर भगवंत मान जी भी थे। ऐश्वर्या सुन लो आप। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चलो जरा 30 फॉर अ चेंज सुन रहा हूँ। बोलो। देखिए अच्छा राहुल जी को क्यों नहीं लाए? आपके ये एग्जिट पोल
मेरे नहीं, पी-मार्क और रिपब्लिक और पोल ऑफ पोल्स आप दे रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल देखिए, मुझे लगता है कि ये सही उतरते हैं तो इसका मतलब भारत में 10 ट्रिलियन की हमारी जो जीडीपी हो गई है, लोग बिल्कुल ताला खोल के सो रहे हैं, क्राइम फ्री हो गया है, गोस्वामी आ गया, और यहाँ रोजगार सबको मिल गया है, और भारत जो है सोने की चिड़िया हो गया है। और अगर इसके विपरीत आती है तो वो सारी चीजें चलेंगी। इसका निचोड़ मैं ये दे रहा हूं पोल ऑफ पोल का। अर्नब जी, आपसे ही बता रहा हूं, आप भी सुन लीजिए कि इसका मतलब भारत की, पुनः रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी 10 मैं निचोड़ दे दूं, मैं भी अपना निचोड़ दे दूं। मेरा ये कहना है कि भाई डोर टू डोर कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करती? बिल्कुल। क्या लोग नहीं है, लीडर नहीं है, कि दरवाजे नहीं है? बिल्कुल। बताइए, मुझे पूछता है भारत, आप कैसे सोच रहे हैं आप जीतेंगे चुनाव में? हिमाचल का कैंपेन, हिमाचल का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको जी। आपने 3 बड़े रोड शो किए, मंडी में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, किए कि नहीं किए? और उसके बाद क्या हो गया? सुचरिता फुस, दीप्ति उसके बाद फुस, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता एमसीडी पे सीमित रह गए, और जब उन्होंने देखा कि भाई हिमाचल में कुछ नहीं होने वाला है तो वहां से देके प्लेन में घुसे और पैराशूट की इन्होंने सीधे गुजरात में। गुजरात में कुछ नहीं हुआ, फिर पैराशूट करके और एक प्लेन पे घुसे, सीधे गिर गए एमसीडी में। आपको किसने रोका? मैं हिमाचल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आपकी बात सुनकर मेरे में आत्मविश्वास नहीं आती कि आप कुछ कर पाएंगे, इसलिए 2.8% वोट आप समझते हैं कोई मजाक है? आप कह रहे हैं हम राष्ट्रीय चुनाव में जीतेंगे, आप कह रहे हैं मोदी के विकल्प है, आपके पास 2% वोट है। 2% वोट लेके आप किसके घर जाएंगे और क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आपने कितने कैंडिडेट रखे? 67 कैंडिडेट रखे, कितना वोट मिला? अरे 2% वोट मिला। 67 कैंडिडेट, 2% वोट। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे मैं कहूं आज पंकज शर्मा पार्टी शुरू कर दे और वहां 65 सीटों पे वहां पे अपने कैंडिडेट लगा दे, इनको 10% वोट मिल जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं है, आप पार्टी कहीं पे कहीं की कहीं नहीं है। आप सच्चाई मैं बता रहा हूं। गुजरात के गृह मंत्री आए थे अर्नब, बोल दिया है केजरीवाल ने 2 बड़े नेताओं को, उनको बोलने दीजिए। ऐश्वर्या, ये मेरे से झगड़ा करना चाहते हैं, करे, खुलकर करिए मेरे साथ झगड़ा। अजय वर्मा बोल रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। आपके इसी चैनल पर 10 डिबेटों में मैं ये घोषणा कर चुका हूं, उठाइए रिकॉर्ड, कि केजरीवाल प्रोपोगंडा बीजेपी ने ही प्रायोजित कार्यक्रम कर रखा है और उसको बैक से सपोर्ट करके कांग्रेस को करने के लिए ये इन्हीं की बी टीम थी। ये मैंने कई बार कहा है, वो साबित हो गया। ये मैंने पहले कहा था 1 से 3 यार, 1 से 3 गुजरात। आपके बारे में क्या कहूं मैं? अजय जी देखिए, आपके नेता निकले हैं 5 फोन वालों के साथ। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे मेरे सूत्र ने बताया, और प्रमोद कृष्णन भी इस बात को मानेंगे, हर दिन सुबह राहुल बाबा उठते हैं, उनके 5 फोन वाले रहते हैं सुचरिता, वो अलग अलग एंगल से फोटो लेते रहते हैं, और 6 बजे राहुल गांधी बैठ के बोलते हैं बेटा दिखाओ कौन से मेरे अच्छे वीडियो बनाए, और वीडियो दिखाते हैं। फिर राहुल गांधी कहते हैं देखिए जूडो वाला वीडियो ज्यादा दिखाओ। प्रमोद कृष्णन जी, ये जूडो के वीडियो से, ये ट्विटर से, ये अंग्रेजी में बोल बोल के और वहां पे 5-6 चापलूसों को बाहर ले जाके और ये कह के कि भाई मेरे कितने शेयर हो गए, कितने लाइक हो गए। प्रमोद कृष्णन जी, आप भी जानते हैं राजनीति ऐसे नहीं होती। आप देखिए आज प्रमोद कृष्णन जी, मुझे लगता है कि अगर 10% वोट आपके गिर गए कांग्रेस के गुजरात में, तो प्रमोद कृष्णन बुरा न माने, खुलकर कहूंगा आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी नहीं रही। ये पार्टी तोड़ो यात्रा, इससे इतनी नकारात्मक इसका इंपैक्ट हो गया है। देखिए हिमाचल की बात नहीं कह रहा, हिमाचल में मुझे लगता है 50-50 सिचुएशन है। गुजरात के बारे में कहिए, आपने कोई कोशिश नहीं की, नॉर्थ गुजरात में नहीं की, सौराष्ट्र में नहीं की, इस तरह का सफाया, जहां पे 27 सालों के बाद इतनी बड़ी कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी पार्टी आ जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली। मगर इतना बड़ा फ्लॉप शो, कोई नेता नहीं, कोई लोकल नेता नहीं, कोई मेथोडोलॉजी नहीं, कोई अप्रोच नहीं। आप सुनिए, आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है जरा बताइए राष्ट्रीय स्तर पर। क्या आपको लगता है, और अभिषेक सुधीर जी आप भी सुनिए, आज राष्ट्रीय स्तर पर क्या जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा विकल्प दे, कोई स्ट्रेटजी बनाए? जरूरी नहीं है अभिषेक? हाँ जरूरी है, मगर लोग देख रहे हैं पंजाब में, पंजाब का मॉडल क्या रहा। अब हिमाचल के लोग पंजाब की सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरह से खालिस्तानी सड़कों पे आ गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाब की सिचुएशन हम नहीं चाहते हिमाचल में, क्या है ना अभिषेक जी? पहले मैं प्रमोद कृष्णन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं।
प्रमोद कृष्णन जी, ये गुजरात के जो रुझान आ रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अर्नब गोस्वामी जी, गुजरात के जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल बताता है, अगर ये सच निकलता है तो फिर तो आप मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा देने और ना देने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस्तीफा तो उन लोगों को देना चाहिए जो गुजरात चुनाव के प्रभारी थे, जिनके ऊपर गुजरात में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो 27 साल से गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो है वहां लगातार जीत रही है, तो इसका श्रेय जो है भाजपा के नेतृत्व को जाना चाहिए और निश्चित आप मैदान में नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप मैदान में भी नहीं है को लेनी चाहिए। 27 सालों के बाद आप मैदान छोड़ के निकल गए। नहीं तो आप ये बताइए, जनता हमारे साथ अगर हमारे को हमारी बात को अगर समर्थन नहीं दे रही है तो हम करें क्या, ये बताइए ना। हम क्या करें? कांग्रेस की लीडरशिप को इस पे गंभीरता ये मैं क्यों कहूंगा? अरे ये क्या सवाल है? ये कैसा सवाल है? के अंदर अभिषेक ये क्या हो रहा है? आप मुझे पुष्पेंद्र जी, आप मुझे पूछ रहे हैं, आपको मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहूंगा कि ये ट्विटर वाली पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये ट्विटर राहुल बाबा के अच्छे 30 सेकंड के वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है। आप मुझे पूछ रहे हैं, आप तो राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए इसमें राहुल गांधी के ऊपर आप में पुष्पेंद्र जी ये राहुल गांधी मैं क्या कहूंगा आपको? करना चाहते हैं करिएगा। आपका मेरी मैं क्यों पहली बात तो ये है कि अगर हमारी मैं तो इंटरव्यू करना चाहता हूं उनका दोबारा। नहीं, पहली बात तो हमारी पार्टी अगर चुनाव हार रही है तो अर्नब जी आपको थोड़ा मेरा साथ देना चाहिए। आप मुझ पे हमले कर रहे हैं और मैं अर्नब जी आपको सुनना चाहते हैं वो भी इंटरव्यू दोबारा। नहीं, कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं हारती। मैं अर्नब गोस्वामी जी मेरे 10 सेकंड दीजिएगा, अनइंटरप्टेड दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए, मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी वहां इसलिए नहीं हार रही है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसलिए हार रही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही नीचे तक पहुंच गई हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर उन बीमारियों का इलाज नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी की जीत होना बड़ा मुश्किल है। ये सुनिए अजय जी को बताइए, देखिए इसको कहते हैं बीजेपी। प्रमोद जी मैं इसलिए आपके बातों को मानता हूं। देखिए आप अनुभवी व्यक्ति, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। हाँ, आप बिल्कुल एक तरह से कोई झांसा दिखाने की कोशिश नहीं करते, खुलकर बात कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं। क्यों सुचरिता? ये देखिए अजय जी, देखिए सुनिए इनकी बात। बिल्कुल मत करिएगा। कांग्रेस पार्टी में बड़ी बीमारी है। हेडलाइन नंबर 1। दूसरी हेडलाइन, कांग्रेस पार्टी के जो लोकल नेता है उनको इस्तीफा देना चाहिए। मधुसूदन मिस्त्री जी सुनिए इधर, प्रमोद कृष्णन कह रहे अगर ऐसे रिजल्ट आ गए तो मधुसूदन मिस्त्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कह दिया सारे राज्य के जितने प्रभारी है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अर्नब जी, प्रमोद हाँ बहुत अच्छी बात और आधुनिक और कहने को क्या बाकी है? पुष्पेंद्र जी, सुचरिता जी, मैं क्या कहूं? मैं थोड़ी देर मैं तो शॉक्ड हूं। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, इतने मतलब कोई आज दुखी नहीं है। ये बिल्कुल आत्मचिंतन करके आए आज प्रमोद। लेकिन सोच रहे मैं क्या कहूं, तैयार होके आए हैं। लेकिन जी पुष्पेंद्र, अर्नब देखिए तैयार होके आए देखिए। लेकिन एक बात तो आप अप्रिशिएट कीजिए। एक बात तो अप्रिशिएट कीजिए कि कम से कम इन्होंने इलेक्शन कमीशन और ये तमाम सारी चीजों को। मैं 10 सेकंड मुझे मेरी बात। पुष्पेंद्र जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मुझे बस 10 सेकंड दे दें। अर्नब गोस्वामी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रमोद जी पुष्पेंद्र जी पुष्पेंद्र जी बात बड़ी गंभीर है। मेरी भावना का सम्मान करिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। मैं अर्नब गोस्वामी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मेरी ज्यादा प्रशंसा ना करें, वरना तो कांग्रेस के कुछ नेता मेरी गर्दन काट देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे पुष्पेंद्र जी ऐसे क्यों सोचते जो ये कह रहे हैं? मैं बस ये कहूंगा, मैं कहूंगा मुझे दुख है। देखिए मैं कहता हूं आज खुल के मेरी बात सुनिए प्रमोद कृष्णन जी, आप मुझे गलत समझते हैं हमेशा। मुझे दुख है आज। पूछिए अर्नब तुम्हें दुख क्यों है? मुझे रोना आता है। संगीत रागी जी, रोना आता है मुझे। मैं कहूं मुझे रोना क्यों आता है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुझे पूछे, मुझे रोना आता है अंदर से मुस्कुरा रहे होते कि पुष्पेंद्र जी की प्रमोद कृष्णन के होते हुए, सबको स्क्रीन पर दे, प्रमोद कृष्णन के होते हुए ऐश्वर्या
आज योगेंद्र यादव लीड कर रहे हैं पार्टी तोड़ो यात्रा। That's the problem. कभी इन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश के सड़कों में लोग किसको देखना चाहते हैं? यही सच्चाई है। प्रमोद कृष्णन के होते हुए आज प्रशांत भूषण है भारत तोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी ने प्रमोद कृष्णन के होते हुए जी बोलिए। सच्चाई यही है अर्नव कि राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को गिरवी रख दी है, वामपंथियों के हाथ में, एजेंसियों के हाथ में, एनजीओज के हाथ में। आपको और यही कारण है कि यादव के पास जाने से पहले आपको सोचना है जोड़ना है कि तोड़ना है। अपने आप को मूल धारे से कटे हुए महसूस कर रहे हैं। जी आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं चलाया। पंकज शर्मा जी आप भी कुछ बोलेंगे दादा? आचार्य जी की बात पर या क्या बोलेंगे? जो आपने एग्जिट पोल किया है उस पर, जिस पे आपकी इच्छा हो गुरुदेव। देखिए आचार्य जी ने कुछ बुनियादी प्रश्न उठाए हैं और मैं भी ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस पर भीतर आत्ममंथन होना चाहिए, लेकिन आप ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में आपका ये एग्जिट पोल सफल होने वाला है या इसके नतीजे वैसे ही निकलने वाले हैं। रह गई बात गुजरात की, तो गुजरात में भी आप जितनी सीटें एग्जिट पोल आपका दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो जमीनी स्थिति हम सभी ने देखी है, और कांग्रेस की बात कर लेते पंकज जी, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी? मैं आपसे उम्मीद कर रहा था आप मुझे बोलेंगे कि कांग्रेस में ऐश्वर्या, अर्नब, अभिषेक इतनी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। कांग्रेस की, आपको बीजेपी की दिक्कत है कि बीजेपी को 2 ऊपर या 2 नीचे। कांग्रेस का तो बता दीजिए, 10% वोट शेयर गिर रहा है दादा। कांग्रेस हिमाचल में किस आधार पर क्या था? नहीं, इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या थी? कांग्रेस की सरकार बन रही है। नहीं, आप पुराने पत्रकार हैं। सरकार बन रही है और गुजरात में वोट शेयर कांग्रेस का इसलिए गिर रहा है कि आम आदमी पार्टी का असाइनमेंट ही ये दिया गया था। किन लोगों ने दिया आपको पता है, आचार्य जी को भी पता है। आप जब एक बी टीम खेल रही थी तो उसने कांग्रेस का वोट काटा, तो हो सकता है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत कुछ कम हो जाएगा। तो इसमें लेकिन ये एक रणनीति। पंकज जी आप पुराने पत्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या थी? कौन रणनीतिकार था जो वहां बीजेपी को चुनौती दे रहा था? बहुत अच्छा था क्योंकि राहुल गांधी नहीं, जब तक स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी हराने की, कि आप सोच रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल गलत हो जाएगा? क्या था कांग्रेस में? अब ये तो कांग्रेस से पूछिए। मैं कांग्रेस को डिफेंड करने या उनकी तरफ से तो बैठता नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही थी। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष वहां प्रचार करने गए थे। कांग्रेस की तरफ से और भी मध्यम दर्जे के बहुत से नेता वहां अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए थे। अध्यक्ष जो भी यहाँ से केंद्रीय नेता गए, प्रियंका गांधी को छोड़कर सबने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं किया। आपसे इसलिए डिफर करता हूं क्योंकि इस बार अच्छी स्ट्रेटेजी थी, राहुल गांधी को दूर रखा था अजय जी। मैं आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं और वही रीजन है कि आप बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में भी हो। आचार्य जी भी हिमाचल की बात करें, बोलिए प्रोफेसर रागी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं प्रोफेसर। तो हिमाचल के जो रुझान है उस पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब प्रमोद कृष्णन प्रोग्राम पे आके इतने मायूस हो जाते हैं, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि इनको इतना मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूरज की किरण अभी भी दिख रही है मुझे। प्रमोद कृष्णन जी मेरी बात सुनिए। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि आपने हमारे एग्जिट पोल के बारे में कहा, मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल तो हमारे कहने 50-50 सिचुएशन है हिमाचल में। और इसमें 2 चीज, अगर 2021 के जो बाई इलेक्शन थे इसको एनालाइज किया जाए तो फिर अर्की, फतेहपुर, जुब्बई, कोठाई और मंडी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, यानी कि 3 असेंबली सीट और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी 1 में 4 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, है ना। और अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन के जो चुनाव थे 11 महीने पहले थे, अगर उसका इंपैक्ट हो तो यह समझ में आता है कि 2019 में बीजेपी करीब 70% वोट उनको मिला था हिमाचल में, उसके बावजूद पूरी वोट शिफ्ट हो गई 2 साल में। अभिषेक देखो इसको, यानी कि हिमाचल के वोटर ऐसे वोटर हैं कि पूरी तरह से टोटल 100% बीजेपी के साथ 2019 में।
और उसके बाद 2021 में टोटल शिफ्ट हो गए मंडी में, टोटल कांग्रेस की तरफ चले। तो ये कोई नहीं कह सकता किस तरफ जाएंगे इस बार। इसलिए अभी भी जो मुझे लगता है, अगर हिमाचल में उसके बावजूद इस बार बीजेपी सामने आ जाए, यानी कि तब मानना पड़ेगा अभिषेक बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। अगर इसके बावजूद अभिषेक बीजेपी सामने आ जाए तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आजकल आप आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए इनडायरेक्टली, आपको भी सोचना होगा अभिषेक कि आपकी बहुत बड़ी फ्लॉप शो हो गई हिमाचल, और दोनों राज्यों में आपकी फ्लॉप शो हो रही है। ओवर एम्बिशन जिसको कहते हैं ना, ओवर एम्बिशियस। की बोली आवाज नहीं आ रही, रोको अभी गाड़ी को रोको। अरे कांग्रेस की तो ए टीम ही नहीं, आवाज नहीं आ रही अभिषेक जी, जरा अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ आ रही बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है आवाज जी। देखिए आप, ये बी टीम आ रही है, बोलिए बी टीम। भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम थी भाई? ये तो हाँ, पंजाब में किसकी बी टीम थी? आम आदमी पार्टी। पंजाब में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया है, वहां तो बीजेपी का तो पूरा विनाश हो गया, तो वहां आम आदमी पार्टी बी टीम नहीं थी क्या? हिमाचल में क्या हो रहा है? एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, वहां बी टीम नहीं। पर गुजरात में जहां आप हार रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी बी टीम है आपके। अरे आप चुनाव तो लड़िए। आप ब्लेम गेम की बात करते हैं, आप गेम में नहीं है। आप बी टीम की बात करते हैं, आपकी ए टीम ही नहीं है। आपके राहुल गांधी स्वारा भास्कर के साथ यात्रा कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं बी टीम की? और आप गुजरात में वोट प्रतिशत देखिए अर्नब जी, 16% वोट परसेंटेज, 16% मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। यानी 6 गुजरातियों में 1 गुजराती केजरीवाल को वोट दे रहा है। अगर 2024 में जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, 3 गुजराती ये आपको कंसोलेशन प्राइज चाहिए। प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आपको कंसोलेशन प्राइज नहीं मिलेगी। जो जीता वो सिकंदर। आप हार रहे हैं, यही बात है, आप हार रहे हैं। क्या आप कहेंगे म्युनिसिपल इलेक्शन है, आप कहेंगे म्युनिसिपल इलेक्शन को मत लाएं। अरे भाई एमसीडी इलेक्शन में 7 मुख्यमंत्री ने प्रचार की है भाजपा की, क्या हुआ है उनका? आम आदमी पार्टी को 170 सीट मिल रही है, कैंपेन किया है। गुजरात में हम सरकार बनाएंगे। अभिषेक सुधीर क्या है? 5 साल में गुजरात की सरकार बनाएंगे। अभिषेक सुधीर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये परसों तक ये बोल रहे थे हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाएंगे, हम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे, नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी हमारे पीछे सीबीआई और ईडी को लगाते हैं, क्योंकि 2024 में अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, तो क्या? तो हमने बोला ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं अभी राज्य सरकार भी नहीं बोली, तो ठीक है। आप बोल रहे हैं आज पंचायत चुनाव जीत रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी चुनाव जीत रहे हैं, सीट में क्यों नहीं डाला आपने? हाँ, तो क्या इसमें गलती क्या है अर्नब जी? हर चुनाव मैंने हार रहे हैं पार्टी के लिए, हर चुनाव हार रहे हैं। 10 साल की पार्टी है, 10 साल की पार्टी है भाई, 10 साल की पार्टी है। 2 प्रदेश में सरकार बनी है, गोवा में। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भारत की जनता देख रही है वहां पे आ जाएंगे। ये दारू वाला स्कैम जो हो गया है, ये दारू स्कैम जो हो गया है, दारू स्कैम जो लिकर स्कैम है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा गुजरात की जनता को? गुजरात की जनता नहीं देख रही है कि शराब को लेके घोटाला हुआ है? सिसोदिया जी है ही नहीं। शराब को लेके जो घोटाला हुआ है उसका लोगों पे असर नहीं पड़ेगा? पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, नहीं, आप मुझे बताइए। परसों आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है। सवाल ही नहीं है। गुजरात जैसा स्टेट मिलेगी जहां पे आम आदमी पार्टी शराब और दारू क्या सोचा जाता है, उसमें अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती है फर्क नहीं पड़ेगा। अभिषेक अर्नब, अगर अभिषेक सुधीर और आम आदमी पार्टी के नेता ये सोचते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभिषेक कितने गलत है बता दीजिए। शराब और दारू का सोशली मतलब आप समझ सकते हैं। फ्री पानी का बात शुरू की थी अरविंद केजरीवाल ने, फ्री पानी और फ्री बिजली देते देते फ्री बियर पे बियर आ गए, फ्री पेटी पे पेटी आ गई। आप कह रहे हैं अभिषेक कपूर, ऐश्वर्या, आज ही आम आदमी पार्टी का जामनगर साउथ का कैंडिडेट जो था उसको पकड़ा है गुजरात की एटीएस ने राजस्थान के सीकर से। कुछ एक जो भी फ्रॉड का केस होगा उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि अभी वो केस चलेगा, पर नाम सुनिए, नाम है विशाल त्यागी। त्यागी कहां होते हैं? मेरठ में। आप मेरठ के किसी रहने वाले को गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ा रहे हैं, ये तो आपका काडर है, ये तो आपके नेता हैं। क्या होगा आम आदमी पार्टी का? क्या वोट बेस होगा? जवाब दीजिए। आके यूपी में चुनाव क्यों लड़ रहा है भाई? एक गुजराती वाराणसी यूपी में मैं बताऊं कांग्रेस की एटीट्यूड क्या है? पर अभी आपके पास एक मिनट अभिषेक प्रमोद कृष्णन, अरे मैं प्रमोद कृष्णन से बात कर रहा हूं, 1 मिनट प्लीज। प्रमोद कृष्णन एक तरफ, प्रमोद कृष्णन आप इस तरह से बैठे क्यों हैं जिस तरह से, मतलब
बिल्कुल आप तो शांति से सारे चीजों को शांतिपूर्वक सहने वाले व्यक्ति नहीं है। सुचरिता ये इतने शांतिपूर्वक चीजों को सहने वाले व्यक्ति नहीं है। आज बिल्कुल शांत है कि आज आप इनसे शांत हैं, छोड़ दिया इन्होंने। नहीं, प्रमोद कृष्णन को देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए इनकी। सुचरिता ये बिल्कुल एक रिजाइंड तरह की, इन्होंने मेरे को लगता है प्रोग्राम से इस्तीफा दे दिया। अगर पार्टी से दी कि नहीं दी मुझे नहीं, मगर चुनाव से तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मांग रहे कांग्रेस पार्टी नेताओं का। अब एटीट्यूड देखिए आज क्या हो गया। वो आक्रामक तरीके से जिस तरह से बात किया करते थे एक वक्त, तो क्या हो गया प्रमोद कृष्णन जी? बात सुनिए, क्या हो गया? अर्नब मेरी बात सुनिए। आप जिस मुझे पता है कि आप म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी हार रहे हैं सर रागिद। मुझे पता है आप राज्य सरकार के चुनाव हार रहे हैं। अरे अर्नब, जिस प्रकार से आप कुछ तो बोलिए। इमोशनली उनको चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है प्रमोद कृष्णन जी यहीं पर आपके कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दें। ऐसा मत करवाइए। और बीजेपी ज्वाइन कर ले। नहीं, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं, मैं नहीं चार्ज लेगी नहीं। मैं नहीं चार्ज कर रहा। नहीं, पर आचार्य जी एक आंकलन भी कर रहे थे, लेकिन आचार्य जी ये फीडबैक कभी आप जाकर देते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर आपने यहाँ पर माना भी कि गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों पर का फीडबैक या फिर वो प्रोसेस ही नहीं है, वो प्रथा ही नहीं है कांग्रेस में। सुचरिता, एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, जो बार बार कहा जाता है, आखिर ऐसी क्या बात है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का ही वोट काटती है? आम आदमी पार्टी गुजरात में गई तो बीजेपी का वोट काटती। बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्ता में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इनकम्बेंसी में फैक्टर होता तो बीजेपी का वोट काटना चाहिए था। वो जो है वो आकर के काट रही है किसका? देखिए आप फिर एमसीडी पर आ गए, आप फिर एमसीडी पर आ गए, जरूरत है आप फिर एमसीडी चुनाव पर आ गए। एक करके प्लीज एक एक। अच्छा ठीक है, गुजरात, हिमाचल और उसके बाद 2024 की हम बात करें, बार बार उसे एमसीडी पर खींच ला रहे हैं वापस। अभी आपने सुना नहीं अर्नब को? बीजेपी को निकाल के फेंक बाहर, आप कह रही है कि इसका कोई अहमियत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, गुजरात की नहीं है, गुजरात की बात ना करें, गुजरात की बात ना करें, हिमाचल की कोई अहमियत नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या गवा दी वहाँ पे, ये बताइए जरा। अच्छा गुजरात में कुछ प्लस है या माइनस? सर आप तो कह रहे थे परिवर्तन, आपके नेता ने ट्वीट कर दिया परिवर्तन हो रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद उन्होंने कह दिया परिवर्तन हो रहा है। अब आप कह रहे हैं हमने क्या लूज किया? 15 सालों से यहाँ सत्ता में जमी हुई थी, इसको निकाल करके बैठने के लिए। आप चुनाव हारने के लिए थोड़ा ही लड़ते हैं दे रही है कि वो जीत रहे हैं। सर चुनाव हारने के लिए जीतने के लिए लड़े जाते हैं। पंकज शर्मा जी में पूरी ताकत लगा दी और फिर पंकज शर्मा जी मुझे लगता है एक बार मुझे लगता है आचार्य जी से पूछ लेते हैं, बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। आचार्य जी ये फीडबैक, और मुझे लगता है आप बहुत खुलकर बोल रहे हैं। जी को पूछिए, ये इनसे बुलवाइए, कुछ नहीं बोल रहे। ये जब से मैं प्रोग्राम पे आ गया ये चुप हो गए। इनको लग रहा है कि अर्नब के साथ प्रोग्राम पे भी आ गया तो मुझे पार्टी वाले बोलेंगे इस्तीफा दे दो क्योंकि अर्नब के साथ तुमने प्रोग्राम किया है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में, इन्होंने सोचा नहीं था। मैं जाऊं क्या प्रमोद कृष्णन जी? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है मेरे सिर्फ होने से, मैं चला जाऊंगा प्रमोद कृष्णन जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मैं चला जाऊं क्या? फिर आप बोलेंगे तो बोलिए, मैं जाता हूं। मैं चाहता हूं खुलकर बोले। स्वामी जी नहीं, कतई नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जाना, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं सुन नहीं पाया था आपके सवाल, एक तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, दूसरी बात है किसी सज्जन ने ये भी कहा है कि बीजेपी आज में चले जाना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्ण। कांग्रेस नेता, आप ही की पार्टी के नेता हैं अजय वर्मा। तो मैंने बीजेपी में जाने मैंने बीजेपी को अभी जाने के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस देश की जनता की बात उठाता है, उठाता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म विरोधी रास्ते पे कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक जमावाड़ा कांग्रेस पार्टी के भीतर हो गया है। कांग्रेस पार्टी जब तक अपने आप को इस समस्या से नहीं निकाल पाएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आखिर कारण क्या है? जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। हिमाचल में अभी भी हमें उम्मीद है कि हम सरकार फॉर्म करेंगे, लेकिन जो बीमारी है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो बीमारी ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है, कांग्रेस नेतृत्व को इस पे चिंतन करना पड़ेगा और इस बात को पार्टी फोरम पे हम लोग कई बार उठा चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी को 8 तारीख के बाद अगर 2024 की तैयारी करनी है तो किसी भी कीमत पर अपने ऊपर लगा हुआ हिंदू विरोधी ठप्पा हटाना पड़ेगा और राष्ट्र विरोधी तत्वों से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना इसी तरह हम हारते रहेंगे।
आचार्य, आपको पता है, आप अभी भी सोच रहे हैं, यही तो नरेंद्र मोदी ने तैयारी, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 10 बजे वोट डाला, 2 बजे 2024 के लिए बैठक हो रही थी दिल्ली में। यही दिक्कत है आपको। आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस यही नहीं समझ पाई है। 3 घंटे में गुजरात इलेक्शन में वोट डाल के ऐश्वर्या 2024 की तैयारी। एक मिनट ऐश्वर्या, जो बात इन्होंने कही है बहुत बड़ी बात है। खुलकर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क पर साइमलकास्ट प्रोग्राम पे कांग्रेस के इधर वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं, इस बात को समझने की कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी लोग कांग्रेस में, धर्म विरोधी लोग कांग्रेस में, हिंदू विरोधी सोच है कांग्रेस पार्टी में। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कुछ सोच समझ के इन्होंने बोला है। आचार्य जी, आप और बोले, आप आज खुलकर बोले, आप बोलने के मूड में हैं, आप बोलिए। देखिए, मुझे भी लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी सोच है कि हर चीज पर जो हम कहते हैं कि हमें सेक्युलर बनना चाहिए, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की जरूरत है। मगर आपके जो सबसे बड़े नेता है आजकल, आपके नंबर 1 नेता है राहुल गांधी, नंबर 2 नेता है जयराम रमेश, उसके बाद खड़गे जी वगैरह सब आते हैं। मगर नंबर 2 नेता जो है, जो पार्टी का लाइन डिसाइड करते हैं, उनका नाम है जयराम रमेश, है ना। वो तो कोई मास लीडर नहीं है। मुझे तो आप म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करें, सुचरिता कभी कोई म्युनिसिपल इलेक्शन भी जीती है क्या जयराम रमेश ने? कोई पंचायत चुनाव ने उन्होंने अपना नामांकन पत्र रखा है? नहीं रखा है। इसीलिए आज जो प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाए, जो लोगों की जो सोच है, प्रमोद कृष्णन जी ये बताइए, क्या ये पकड़ नहीं है इतनी पुरानी पार्टी में कि हमें इस खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए? कि भारत की जनता, सिर्फ हिंदू नहीं, सब चाहते हैं कि हिंदू ही नहीं, सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मगर आपके पार्टी ने तो लाइन रखी हुई है कि राम मंदिर था ही नहीं, भगवान श्री राम थे ही नहीं। और जब भी मौका मिले सावरकर जी को इस तरह से गाली देना। देखिए अर्णब, ये आप कहते हैं आपके पार्टी में लोग हैं, मगर आपके पार्टी के नेता तो वीर सावरकर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बात रखी और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने वीर सावरकर को धोखेबाज कहा। क्या ये सही था? कोई मापदंड होती है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ? कोई लक्ष्मण रेखा होती है? जी बोलिए, जी बोलिए। अर्णब, क्या मैं आपको जवाब दूं? हाँ, अर्णब गोस्वामी, जो कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजा राम से अपनी प्रार्थना सभा शुरू करती थी, जो कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम, भारत माता की जय जिसके मुख्य नारे हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े नेता वो हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? सवाल इस बात का है, सवाल एक कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश का भी है। अगर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुने हैं, तो उस प्रधानमंत्री का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बीजेपी को कहेंगे कि वो कम्युनल पार्टी है, तो फिर तो देश कम्युनल कहा जाएगा, फिर तो देश की जनता को हमें कम्युनल कहना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ने, अगर देश की जनता ने कम्युनल नेता को चुना है, कम्युनल पार्टी को चुना है, देश की जनता ने सांप्रदायिक पार्टी को चुना है, तो फिर देश की जनता सांप्रदायिक मानी जाएगी। और मैं इस देश की जनता को सांप्रदायिक मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस देश की जनता महान है, ये देश महान है, इस देश की मिट्टी महान है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं के खून का बलिदान इस देश की मिट्टी के लिए दिया, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर नीति बनाने वाले कुछ नेता देश विरोधी तत्वों से मिल चुके हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व को चिंतन करना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही हार के मुंह देखते रहेंगे। लेकिन मैं आपके एग्जिट पोल पर बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल ये सच ही होगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो कह रहा है वो उसका अपना अनुमान है। लेकिन हिमाचल में हम सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, मगर एक हिमाचल का सवाल नहीं है, सवाल इस देश का है। मेरा सवाल बड़ा है, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी को 2024 में नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व का मुकाबला करना है, तो उसको अपने ऊपर से हिंदू विरोधी ठप्पा हटाना पड़ेगा। उसको अपने कांग्रेस की लीडरशिप को, कांग्रेस के जो नेतृत्व और नीति निर्धारण नेता हैं, जो उनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनमें वो लोग शामिल हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव नहीं लड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो कभी चुनाव नहीं लड़े गांव की प्रधानी का, जो कभी चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का, वो देश के होने वाले लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाएंगे।
तो अंजाम यही होगा। और व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। अर्नब, मैं देश के पक्ष में बात कर मगर उनको नहीं कुछ कहना चाहते हैं अभिषेक जी, आप अभिषेक सुधीर भी कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं प्रमोद कृष्णन की बात? कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल सही बात विरोधी है, हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अर्नब जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पड़ोस के राहुल गांधी की इस पदयात्रा में फलिता लगा देंगे। राहुल गांधी आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, हजारों किलोमीटर पदयात्रा कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे देश विरोधी लोग घूम रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू विरोधी है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, ये सबको पता है। कौन हिंदू विरोधी? इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ही चेहरा बनना है विपक्ष का। राहुल गांधी नहीं बन सकते विपक्ष का चेहरा, अरविंद केजरीवाल ही बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ही इस देश की जनता वोट देगी। आप गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल ने 15% वोट हासिल किया है। इस एग्जिट पोल अगर देखे तो 20% भी आ जाएगा तो 5 गुजरातियों में 1 गुजराती ने आज अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। अगर 5 गुजराती में 1 गुजराती अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए तैयार है, तो अगर 5 हिंदुस्तानी में 1 हिंदुस्तानी अरविंद केजरीवाल को वोट देगा तो अरविंद केजरीवाल इस देश के 20% तो वोट नहीं आया जी। अरे भाई वोट नहीं आया, टाइम दीजिए। 10 साल की पार्टी है ये, एक स्टार्टअप पार्टी है, एक छोटी सी पार्टी है। आपने 3 चुनाव रखी है, एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के रिसोर्सेज है, हिमाचल पे नहीं कर पाए, ठीक है, पर एमसीडी जीत रहे और गुजरात में एक बहुत रेस्पेक्टेबल तीसरी स्थान पे आ रही है। भाई 16% वोट प्रतिशत कोई जोक है? 2017 में आम आदमी पार्टी को 100.1% वोट आया था, 100.1%, 1% भी नहीं, 100.1। अब 16% आ रहा है। यही है आज की हेडलाइन और बॉटम लाइन और टेल लाइन। आम आदमी पार्टी इज कमिंग 3rd इन गुजरात बट 16% वोट शेयर। मैं समझ नहीं पाता आपको अभिषेक सुधीर जी, और मैं अभिषेक सुधीर जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जी। आपको मतलब मैं क्या बताऊं, आप शुरू जैसा हो कोई गई व्यक्ति नहीं है अभिषेक सुधीर, नेशनल पार्टी, आप जैसा ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति, आप जैसा कोई व्यक्ति मैंने देखा नहीं। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति, आपको अगर मैं बोलूं कि पत्थर से भी पानी निकाल लीजिए तो आप उसको निचोड़ के पत्थर से पानी निकाल देंगे। यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन पुल वाटर आउट ऑफ अ रॉक। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे महान व्यक्ति हैं अभिषेक सुधीर कि आप कह रहे हैं कि देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप कह रहे हैं कि देखिए हम तीसरे स्थान पे हैं, हम तीसरे स्थान पे, आज हमारी पार्टी होगी, करिए पार्टी, कौन रोकेगा आपको? आप अगर खुश है तीसरे स्थान से और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से, हो जाइए खुश। 5 साल दीजिए, गुजरात में कहां बनाएंगे 5 साल में दिल्ली में सरकार बनाएंगे और हो सकता है गुजरात में सरकार। ये बात एग्जिट पोल है। संगीत रागी जी इस पर रेस्पॉन्स करें। संगीत रागी जी इस पर रेस्पॉन्स, वो कह रहे हैं कि शुरुआत कर रहे हैं 15% से। देखिए अर्नब, शुरुआत है ये। देखिए अर्नब जी, सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल ने सबको धोखा दिया है और हिंदुओं को धोखा देने की भी साजिश में केजरीवाल पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब आप एक बात बताइए कि जो आदमी दिल्ली के दंगों के साजिश में शामिल सारे उन रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को शरण देता हो, वो कहेगा कि हम हिंदूवादी हैं। नई दिल्ली में रहते हैं। सुन लीजिए, धैर्य रखिए। जो आदमी कब्रिस्तान के लिए कानून तोड़ करके जमीनें अतिक्रमण करवाता हो, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ बसवाता हो, उनका वोटिंग सुनिश्चित करता हो, वो आदमी हिंदू पक्ष में बात कर रहा है। वो आदमी, भाई सुनिए तो सही, यही केजरीवाल थे ना जो राम मंदिर के जगह जो है वो हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे। यही केजरीवाल है ना जो राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे। यही केजरीवाल है ना जो वक्फ बोर्ड के सामने जाकर के कहते थे कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में इतने पैसे वाली हो। इमामों को वेतन देने का काम किसने किया? अरे पुजारियों को भी जरा सा वेतन दे देते, पुजारियों को भी वेतन दे देते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को भारतीय
भारतीय राजनीति का काल मानता हूं। मुस्लिम विरोधी है, काल नेमी जो है वो हनुमान जी के सामने साधु का वेश लेकर गया। जब तक इस काल नेमी की दाढ़ी और पिछला ये जटा आप निकाल करके बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक आपको अरविंद केजरीवाल का असली राक्षसी प्रवृत्ति आपको नहीं दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल वो देश के साथ क्या कर रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल थे, यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए थे। यही अरविंद केजरीवाल है ना जो सेपरेटिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं। यही अरविंद केजरीवाल है ना। अरे प्रशांत भूषण तो पहले इन्हीं के दोस्त थे ना, प्रशांत भूषण इन्हीं के पहले दोस्त थे ना। क्या बात करते हैं? एमसीडी हमने जीता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन करने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल नहीं थे क्या? सर्जिकल मैं तो मान करके चलता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज ए पर्सन हु इज बीइंग फंडेड बाय आउटसाइडर्स। वो एक स्पॉन्सर्ड पार्टी के नेता हैं। मैं यही मानता हूं। असेंबली इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है जिसे प्रमोद कृष्णन जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया कि उस वोट बैंक का ये खतरनाक होगा देश के लिए। अरविंद केजरीवाल के भारतीय राजनीति में उदय इस देश के लिए खतरनाक कह रहे हैं कि अगले चुनाव तक सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक सुधीर, आपने सुना प्रोफेसर रागी वो क्या कह रहे हैं? अगले चुनाव तक सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। सरकार तो नहीं बनाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यदि कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ जिंदा रही, अजय जी सुन रहे हैं ना, विरोधी मानसिकता के साथ जिंदा रही, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल जरूर खत्म कर देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक तरफ अयोध्या में मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या दर्शन के लिए, रामलला दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसा दे रहे हैं, यहां से हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। और उधर जो सेपरेटिस्ट सरतन से जुदा करने वाली मानसिकता है उसको भी वो नर्चर करते हैं। दिल्ली दंगों के ताहिर हुसैन को भी मदद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उसमें गलती क्या है? अभिषेक सुधीर, आप कह रहे हैं उसमें गलती क्या है? खड़े होते हैं इन्हीं के मनीष सिसोदिया कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ। अजय जी जरा बताइए ना, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अंदर रहने वाले नेता ये कह रहे हैं कि भाई आप हिंदू विरोधी हैं। वो कह रहे हैं नहीं कोई नहीं, आज मैं कोई नहीं, वो कह रहे हैं आप हिंदू विरोधी हैं। वो कह रहे हैं आप राष्ट्र की बात नहीं करते। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक परिवार। आप सुनिए, देखिए उनकी भी आपको बता रहा हूं। बताइए, देखिए ये अभिषेक अजय जी ऑन एयर प्लीज। अभिषेक जी अपने विचार रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ना कभी हिंदू विरोधी थी ना कभी हिंदू विरोधी है। कांग्रेस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम जोड़ने का काम करते हैं। देखिए आचार्य जी साथी हैं हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीति जब करते हैं वो भी उनका अपना विचार हो सकता है पार्टी के बारे में। पार्टी बड़ी चीज होती है, आदमी बड़ी चीज नहीं होती। कांग्रेस ठीक कहा अजय जी, लेकिन यही बात जब बीजेपी कहेगी या फिर कोई और पार्टी कहेगी, एंकर सवाल पूछेगा आपसे तो आप कह देते हैं कि देखिए ये तो आप उसे सिरे से खारिज करते हैं। अब तो पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। आचार्य जी जब ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं, आचार्य जी जब ये कह रहे हैं कि ऐसे नेता हैं जो पार्टी का पलीता लगा देंगे। कांग्रेस पार्टी कभी ना हिंदू विरोधी थी, ना कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की वो आचार्य हैं, बात करते हैं। वो आचार्य हैं। देखिए अभी आधुनिक संत हैं, कोई नेता नहीं है, वो आचार्य हैं। आधुनिक संत है। वो कांग्रेस के पहले पदाधिकारी, प्रदेश में सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनकी अपनी विचारधारा है उनके साथ। और मैंने उनको ये कहा था कि उनकी इन चीज़ों को सुनकर जो चीज़ें चल रही हैं, आज अर्नब गोस्वामी और कृष्णम जी की नूरा कुश्ती चल रही है कुछ। अच्छा जी, कैसे ऐसे चल रही है कि वो मैं 10% वोट आपका गिरे, राहुल गांधी ना जाए तो आपकी, तो आप उस स्टेट में आगे बढ़ो, गुजरात में जहां जाओ 10% आपका खता, और आप कह रहे हो नूरा कुश्ती चल रही है। किसने कह दिया राहुल गांधी ना जाए तो वोट घट रही है? अरे भैया जनता कह रही है हिमाचल प्रदेश। राहुल गांधी वहीं से ही भारत जोड़ो की प्राथमिकता थी। चुनाव हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? गए थे क्या राहुल गांधी? हमारे 9 स्टेट 2023 में है। अजय जी गए थे क्या हिमाचल में? राहुल गांधी गए थे हिमाचल में? जोड़ो में राहुल गांधी गए थे हिमाचल में? गए थे। राहुल गांधी हिमाचल गए थे क्या? तो वहां नंबर गिर रहे हैं, जहां नहीं गए वहां बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, रियलिटी है, ऐसा नहीं। अरे जहां नहीं गए, प्रोफेसर रागी मैं गलत बोल रहा हूँ, सुचरिता फैक्ट्स देखिए। मैं आपको जहां गए वहां गिर रहे हैं, जहां नहीं गए वहां बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इफ राहुल गांधी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांग्रेस इज राइज, अवर टारगेट। अब मेरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंडिया पीपल, मेरे को बताइए प्रोफेसर रागी। ऐश्वर्या जी उल्टा है, टू द इंडिया। राहुल एब्सेंट है तो कांग्रेस
कांग्रेस बढ़ती है, मेरी क्या गलती है भाई? एक मिनट वापस आके आऊं। एक मिनट मेरी बात सुनिए अजय जी मैं वैसे कभी कोई व्यक्तिगत बात नहीं करता। मैंने वहां पे राजनीतिक विश्लेषण की। अब राजनीतिक विश्लेषण मेरा यह है कि आपकी स्थिति ना, ये दयनीय स्थिति है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिबल सिचुएशन, पैथेटिक सिचुएशन, उसको दयनीय स्थिति कहते हैं जब दया आती है आपको देखकर। मगर आप नाउम्मीद नहीं हैं, आप कभी नाउम्मीद होने वाले नहीं हैं। हिमाचल के जो रुझान हमने दिखाए, मान्यवर मेरी बात सुनिए, हिमाचल में तो अगर आप हारते तो हेडलाइन होती, अगर जीतेंगे तो नॉर्मल है भाई, इसमें कोई वहां पे डंका बजाने वाली बात नहीं है। आप आशावान हैं, आप उस तरह की बात करते हैं कि आप विफलता में भी अपनी जीत देखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आज, मेरी बात सुनिए अजय जी, मेरी बात सुनिए अजय जी, अगर आपको 40 से कम सीटें, वो नहीं होगा, अगर आपको 40 से कम सीटें हिमाचल में मिले, मैंने क्या कहा, अगर आपको 40 से कम सीटें हिमाचल में मिले, है ना, तो यह आपकी विफलता है। हम 40 प्लस के साथ सरकार, और अगर आपको फिर बैठेंगे, आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बनाई, तब तो मैं कहूंगा कि आप जीत गए, तब मैं कहूंगा जीत गए। ईश्वर देखिए आपकी, तब मैं कहूंगा जीत गए निकलेगी। और ये मत करिए कि मैं नूरा पुश्ती वगैरह करता हूं, मेरा स्टाइल ही नहीं है, मैं सीधे बात करने वाला आदमी हूं। 2024 के चुनाव होने वाले 15 महीनों में, आपकी ये दयनीय स्थिति है। आप पहले तो आप तभी मेरे पे बोल रहे हैं कि मैंने नूरा पुश्ती किया। अरे भाई, प्रमोद कृष्णन ने जो कहा उसको सुनिए। अरे आप प्रमोद कृष्णन ने जो कहा वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ये स्थिति है, अगर ये आपकी स्थिति है गुजरात में, तो आपके पार्टी के नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई छोटी बात है? देखिए, इस्तीफे की बात अमरिंदर सिंह, नहीं, आप मुझे बताइए, 77 सीटें मिली थी बीजेपी को, 99 सीटें मिली थी। आप कह रहे हैं आप 77 के हाफ हो जाएंगे, फिर भी आप कहेंगे कि दोष किसी और का है। आपको मैं बता दूं, देखिए सुन लो अभी अजय जी, मेरी बात सुनिए। ये पॉलिटिक्स जो होती है ना, मैं आपको कहता हूं, मैं जब छोटा था, जीवन में मुझे एक बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने पार्ट ली। मगर जब मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे गया था अजय जी, तब मुझे बोला गया था, याद रखिए अर्नब, तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए हो। संगीत जी आवाज क्यों रहे? मुझे बोला कि अर्नब, मेरी माताश्री ने कहा, अर्नब तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो, अपने आप को सीरियसली मत लेना, तुम ये बस ये कपड़े पहन के जा रहे हो और ये तुम्हारी वेशभूषा है। प्रॉब्लम है कि आपके जो नेता है ना, 55 साल के जो आपके वहां पे नेता है, जो घूम रहे हैं आजकल जयराम रमेश के साथ, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके लोग फिर एक तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन करेंगे और दूसरी तरफ वीर सावरकर को धोखेबाज कहेंगे। वीर सावरकर को धोखेबाज कहा कि नहीं कहा अजय जी, बताइए मुझे। और अगर कहा तो प्रमोद कृष्णन ने गलत क्या कहा कि आपके पार्टी में राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी सोच घुस गई है आपकी। हिंदू विरोधी सोच इस देश में, अर्नब जी इतिहास उठा नहीं, आप मुझे बताइए, हिंदू विरोधी सोच इस देश में जब तक आप रखेंगे, आपको बता दूं, आज गुजरात के चुनावों के नतीजे आप देखें, 32% वोट मिले हैं मान्यवर, 10% कम नहीं है ना। बोलिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, बोलिए। अब जी क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री नहीं बदली जा सकती, हिस्ट्री रहती है, आप अपने शब्दों में उसे परिभाषित कर सकते हैं। वर्तमान 2022 और 23 में आप इतिहास पढ़िए, इतिहास उस आजादी से पहले का, वीर सावरकर जी का क्या था और क्या नहीं था, विचार और सोच और धारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हर चीज आज तक मौका मिले तो वीर सावरकर को फिर से को लोग आज भी इस वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस तरह से टोल करते हैं कि हर जिम्मेदारी उनकी फिक्स करते हैं। तो ये एक टीम का आइडिया, एक प्रोपोगंडिक टीम बना रखी है और उसका एक तरीका ये है कि आप किस तरह से किसको कितना गिरा सकते हैं, किस तरह से किसको उठा सकते हैं। आप जीत सकते हैं चुनाव, सत्ता बना सकते हैं। जर्मन में आप पढ़ेंगे तो रोम में नीरो को पढ़ लीजिए, नीरो की मदर ने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था रोज सत्ता दिलाने के लिए नीरो को। आप
इसको पढ़ लीजिए, फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को, आप स्टालिन को पढ़ लीजिए, आप जर्मन में हिटलर को पढ़ लीजिए, आप बेनित मुसोलिन को पढ़ लीजिए। सत्ता ले सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, भीड़ ला सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं, लेकिन हश्र क्या होगा, अंत क्या होगा, ये पता चल जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, चलिए, आप अगर जनता को आपको जो चाहिए आपको मिल गया। आप मैं कह रहा हूं आज, दोस्तों मेरी बात सुने, कांग्रेस के नेता ने कहा अगर 30 सीटें भी मिल जाए मगर हमारी नैतिक जीत है। आपकी नैतिक जीत हो गई मान्यवर, आप जीत गए, आपकी नैतिक जीत हो गई। फिर लोगों को पूछिए, माइक लेके आप सड़कों पे निकलिए, पूछिए लोगों को कि क्या समझते हैं आपके बारे में। ये ट्विटर करके कोई चुनाव जीतता नहीं है। ये ट्विटर वाली राजनीति छोड़ दीजिए। जब आप एनीवे मैं तो अंग्रेजी चैनल पे जा रहा था, फिर से मुझे बुला दिया कि इन्होंने मेरी आलोचना की, मेरे पीठ पीछे आलोचना की। आटे की बात ऐश्वर्या सुचरिता पूरी ने मेरी आलोचना की, कहा कि मैंने कोई सेटिंग की है प्रमोद कृष्णन के साथ। मैं सेटिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ। 2014 में टाटा क्या नूरा पुष्टि, ये सब क्या कह रहे हैं आप मेरे बारे में? आटे की क्या कह रहे हैं नूरा पुष्टि? अरे आपके नेता तो आटा भी लीटर में ढूंढते हैं। नूरा पुष्टि की बताइए ना। अरे क्या आगे आपके नेता तो आटे भी लीटर वाली दुकान में ढूंढते हैं। चलिए, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में अंग्रेजी चैनल पे जा रहा हूं। यहाँ पर अजय जी प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम देखिए। अगर बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो इलाज नहीं। रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, मैं जाने से पहले कहना चाहता हूं दोस्तों देखिए, सुबह प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाएंगे हम 8 तारीख को। और मुझे पता है, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पता है कि जितने दर्शक हमारे हैं, जितने दर्शक म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें नहीं देखेंगे, वो तक देखेंगे, ये देखेंगे 9, 10, 11, 12, 7, 10 जो नंबर वाले चैनल है सब देखिए। मगर अगर आपको गुजरात और हिमाचल के बारे में सटीक, फास्ट, एक्यूरेट नंबर 1 खबर चाहिए तो आप रिपब्लिक भारत देखेंगे। मैं आपको 8 तारीख को मिलूंगा, प्रातः 6 बजे से मैं शुरू हो जाऊंगा। दोस्तों अभी मैं अंग्रेजी चैनल में जा रहा हूं। ओवर टू यू सुचरिता और ऐश्वर्या, आगे ले जाइए। हाँ, स्टार्ट। Okay, ladies and gentlemen, we're on. Okay, I've just come from the Hindi channel. We were having a lot of fun on the Hindi channel. You know, one second. I'm not getting the right audio right now. Can I have the Hindi audio down, English audio up, please? Thank you, producers. I'm getting the Hindi feed in the English channel. 1 second. Deepthi, you take it forward because I'm getting the Hindi feed on the English channel. Now I'm still getting the Hindi feed on the English channel. Ladies and gentlemen, please have some patience. I'm trying to fix this problem for a minute. 1 minute. 1 minute. Can I not? Deepthi, over to you, Deepthi. Deepthi, you take it forward. I'm joining you in a minute. Please, go ahead. Yes, sure. Yes, let's quickly say good evening to our panel of guests. And do remember, this is a non-stop rolling coverage. Arnab is just joining us back in a bit. The numbers are startling. You know, a party that has been in power in the state of Gujarat for the last 27 long years. Forget about anti-incumbency. Is the BJP going to better its record? Is the BJP going to be creating a new record? Exactly what the exit poll numbers are predicting. And the state of Himachal is no different. Do remember the Prime Minister said, Raj nahi, riwaz badlenge. तो हिमाचल में क्या रिवाज बदलने वाला है? The exit poll numbers, ladies and gentlemen, indicate that the BJP could be able to retain the state of Himachal. Without wasting more time, I quickly want to say good evening and thank you to all our panel of guests for their patience. Sardar R.P. Singh Saab is national spokesperson of the BJP. Ratan Sharda is a political analyst and an author. Venugopal Narayanan is a columnist. Binay Singh, political analyst, with us here in our studios. Kishore Chikhalia is the leader of the Congress and a former president of the Morbi District Panchayat, joining us. Narendra Verma, spokesperson of the NCP. Ravi Srivastav, political analyst. Kapil Madan, advocate and political analyst. And Arnab, welcome again. Yeah, thank you. Go ahead. What, according to you, is the biggest headline? Oh, I don't know. The biggest headline is that the AAP is flopping. I mean, that's the big headline. If you ask me, the biggest headline out of this is that the AAP really flops. Because if the AAP doesn't get over 25% in Gujarat after all this effort and does a complete flop show in Himachal, then I think it's a big blow. And they can try and say that, okay, 15% of a vote is an entry. But it's not the kind of entry that gives you the steam. It's not the kind of entry that takes you anywhere.
because it's an entry in a state election. Your big challenge is whether you can make a mark at a national level. It's not the entry. If you have an entry, if the AAP could have managed a 20% vote share in Himachal and in Gujarat, it could have been in the game. In my view, the AAP is out of the game with this kind of a performance this time, and it doesn't matter if the MCD election is hyped. That's a municipal election. So my big headline out of this is AAP is flopped. Now about the Congress. Kapil, remember, you will be enthusiastic about the Congress. If the Congress had lost in Himachal, it would be news. Because Himachal always goes up and down. The fact that Himachal is closed is actually close. The fact that Himachal is closed is bad news, terrible news for the Congress. First of all, I think if Himachal is close, it's bad news for the Congress, because the Himachal, they should be winning with over 40 seats and keeping the historical trend going there. So that's the second headline. Third headline here is, I think the Modi factor is pretty strong. Very, very strong, especially in Gujarat. Gujarat is where they needed to make a big win. If they win these many seats, they've made the mark there. So that's how I read it. Over to you, Deepti, and over to our guests. Yes, so is 2024 a done deal? Let's begin with Ravi Srivastava. Exactly what the Prime Minister said. 2024, Ravi Srivastava, the Prime Minister said, is a done deal. I don't believe his words. First of all, AAP has got nothing to lose. AAP is a gainer in every state. AAP enters and AAP makes the difference. Everywhere. Even Goa, they entered, they got the seats. Now Gujarat, they are entering, they are getting the seats. Punjab, they have made a government. Where are you getting Delhi, seats? they already have a government. MCD, BJP is routed. What else you want? AAP is a 10-year-old party. AAP is not a 40-year-old. I don't want anything. I'm more concerned about what you or the Aam Aadmi Party is wanting. Because for the longest time, Sardar R.P. Singh Saab, why don't you come in? AAP is an AAP. We've been told Arvind Kejriwal ही वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में लड़ेंगे. Today you're gloating over a possible MCD victory. Oh, what MCD victory? MCD victory is a done deal. I'm talking about Gujarat. Even Gujarat, they are going to do wonders. You watch it. They are going to winning make Gujarat. You're saying you're winning Gujarat. How many seats? See, I'm not saying the number of seats. I'm not into that game. What I'm saying, they are going to do very well. And the first time in a 5 years, last time they were 0.0001% vote. Now this time, if they are going to get 25 or 30% vote, it's a miracle. They are the new entrants on the board. You watch it. It's a miracle. Sardar R.P. Singh Saab, that's a miracle. They are bringing their Ravi Srivastava says in every state. Okay, let's get a view on that. The poll of polls, R.P. Singh Saab says 5 seats to the AAP. Though many believe even that is an exaggeration, but Ravi Srivastava says this is a miracle. Ravi Srivastava is saying AAP is AAP, AAP is BHAP. You understand BHAP? This team. When are we going to talk about Satendra Jain again? No, I'm asking a question. When are we going to talk about Satendra Jain again? अरे ये बीच में लोग जो की आदत छोड़ो, ये केजरीवाल ने जो आदत सीखी है ना, just tell me when there will be next debate on Satendra Jain. Don't be alarmed के समय debate. Ravi Srivastava, you're displaying Satendra Jain as a trophy today. Is he a trophy for you? Is he a trophy? Manish Sisodia, board, where are you in Himachal? When are we going to You should hang your heads in shame. The Aam Aadmi Party said, Ratan Chadha, हमें राजनीति में नहीं आती. You are playing an agenda. कौन से स्कूल में सिसोदिया के बच्चे पढ़े? मनीष सिसोदिया साहब के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े? कब होगी? Yes. Ratan Chadha. मनीष सिसोदिया चिल्ड्रन. दिल्ली में साफ. अरे बोलने दो भैया, रवि कुछ बोलने दो हमें भी. अच्छा चलिए अर्नब जी अर्नब सुनिए. हाँ बोलिए. मैं आज एक बात और क्या कर जा रहा हूँ. दिल्ली में मेयर हमारा बनेगा. क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप सर? क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कर जा रहा हूँ. दिल्ली में मेयर हमारा बनेगा. ये भी श्रीवास्तव साहब पकड़ कर रखना बात मेरी. आपका भाप जो कर रहे हैं ये सब आप ये वैसे ही है. केजरीवाल कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ.
दिल्ली मैं आज आपसे ये बाहर, कह रहा दिल्ली हूं। जाइए बाहर, 400 है AQI, 400। आप दिल्ली में हो गए साहब। मैं जरा मैं गुजरात पे आई वांट टू एनालाइज आई वांट टू एनालाइज द थैंक यू आई वांट टू ब्रिंग इन मिस्टर वेणुगोपाल नारायण एंड मिस्टर किशोर चिखलिया प्लीज ऑन द स्क्रीन. Mr. Kishore Chikalia and Mr. Kishore Chikalia, who is the former president of the Morbi district panchayat and a Congress leader. Congress के किशोर चिकलिया मोरबी से हैं और वेणुगोपाल नारायण is joining us from अहमदाबाद. किशोर जी मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूँ. ये आपकी किशोर जी आई डोंट थिंक किशोर जी आ रही है. किशोर जी आवाज ऑडियो इशू है. मैं इसको नेशनल पिक्चर पे देखता हूं. हाउ डू यू रीड द नंबर्स इन गुजरात मिस्टर नारायण? आर यू सरप्राइज्ड? It seems completely one way. I'm not surprised, Mr. Goswami. I can tell you one thing. I went out to vote today, and at my polling station, the Aam Aadmi Party didn't even have a stall. Neither did the Congress, actually, and it's a fairly large polling station with people coming in from across the spectrum. That's how Western Ahmedabad at least voted today. So there is no up wave. Second point, I looked at your exit poll. You're probably right on the BJP numbers and to some extent the Congress numbers. I have one issue with the others' vote share dropping to 3.8%. Why is that? That may not happen because if we look historically at the Gujarat elections, the lowest they've come to is 9.5. You don't think this could happen because of the shift of AAP pulling in the votes? I don't think so, because there's always a tradition of independents cutting the vote in at least a couple of dozen seats in Gujarat, particularly in rural areas. But you don't think that vote goes to the AAP this time? You know, the undecided fence sitter could go to the AAP? Maybe. But even then, I think the AAP vote is probably overestimated. And like you said earlier in your program, AAP is probably going to flop big time. We'll find out on the 8th, but as things stand, they didn't even have a booth in Western Ahmedabad. I get the point. I want to bring Narendra Verma in because Deepti started by talking about the national picture. Mr. Verma is the national spokesperson of the NCP. Mr. Verma, first of all, an overall comment from you. And the question from my side is, this result does not answer the question I have in my mind. Who is the main challenger for 2024? Every state election, that is the main question at a national level. Is that clearer to you? It's not clear to me or to Deepti, I'm sure. Well, Arnab, to answer your question of 2024, based on the result of Gujarat, that I will reply you. उससे पहले मैं अर्नब आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आपका जो एग्जिट पोल है और उसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, फिर वो ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उसके आंकड़े कभी सटीक बैठते हैं, कभी एक्यूरेसी में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं. आज आपका एग्जिट पोल ये दिखा रहा है बीजेपी को 128 से 148 के बीच में. अर्नब, मैं आपको याद दिला दूं, 2017 का चुनाव जब गुजरात में हुआ था, उस वक्त अमित शाह जी 150 पार की बात कर रहे थे. इस वक्त हम एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, उस वक्त हम गठबंधन में नहीं थे. उस वक्त अमित शाह जी 99-100 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे. उस वक्त हमने कांग्रेस से सिर्फ 5 सीट गठबंधन में मांगी थी जी. वो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए 2017 के, 16 से 17 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे एनसीपी के वजह से. उस बार गठबंधन होता तो 2017 में
गुजरात में कांग्रेस का सीएम होता और यह पहला चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में पहला चुनाव उन्हीं के राज्य में लड़ा गया था और वहां बीजेपी हारती और एक देश में एक अलग पॉलिटिकल मैसेज जाता। एक दूसरा, जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है कि 2024, अर्नब, इट्स टू अर्ली टू कमेंट and to jump to a conclusion the outcome of 2024 as far as general election of this country is concerned. अर्नब, मैं आपको बताना चाहता हूं 27 साल से गुजरात में बीजेपी सरकार है। 27 साल एक बहुत बड़ा एरा होता है। आपको मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो आए 6 महीने पहले, तब से अब तक कितने दौरे उन्होंने गुजरात के किए। अगर विकास का मॉडल होता तो देश के प्रधानमंत्री जी सीएम का चुनाव उम्मीदवार नहीं थे, वहां भूपेंद्र पटेल थे और वहां पर प्रचार ऐसे किया कि जैसे नरेंद्र मोदी जी है। एनीवेज, वो पार्टी के प्रमुख है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर आप विकास की बात करें, 27 साल का विकास का मॉडल, तो प्रधानमंत्री जी को 6 महीने निरंतर गुजरात जाना नहीं पड़ता। एक, आज वहां पर महिलाएं, आप रेशियो लीजिए पुरुष और महिलाओं का और एवरेज से कंपेयर कीजिए कि कहां पर गुजरात खड़ा है। दूसरा, बच्चे, माल न्यूट्रिशन, अर्नब, यानी 39% चिल्ड्रन ऑफ गुजरात आर अंडर वेट। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, आप इलेक्शन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, विकास पे लड़ा है आपने चुनाव, विकास पे लड़ा है। प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो की बात करने लग गए ना, प्रधानमंत्री को नहीं नरेंद्र जी, मैदान में मैनिफेस्टो की बातें क्यों कर रहे हो? ये दुख की बात है कि इस इतने बड़े देश में जहां महंगाई चरम बोल रही है, क्या मैं भी बात करूं? काफी बोल लिया आप रहा है और उस वक्त इस देश नरेंद्र जी, पहली बार एक राज्य में अगर ये सब कुछ कांग्रेस गुजरात में गलत था तो आप विषय क्यों नहीं पहुंचा सके? आपकी कम्युनिकेशन क्यों थी? अर्नब, इट इज अनफॉर्चुनेट। ये अपनी बात मैं कहता हूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी और सीएम साहब कहते हैं कि 2012 से अब तक कितना इन्वेस्टमेंट आया, मैं वो आंकड़े आपके सामने अर्नब जी रखना चाहता हूं कि 2012 में उनका 36,000 करोड़ अनाउंसमेंट और आया सिर्फ 30,000। 2005 में 1 लाख करोड़ आया सिर्फ 37,000। 2007 में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया सिर्फ 1 लाख करोड़। 2015 में 2009 में 12 लाख करोड़ आया सिर्फ 1 लाख करोड़ और 2011 में अर्नब 20 लाख करोड़ आया सिर्फ 20,000 करोड़। तो ये जब परिस्थिति होती है तो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगातार, जैसे कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, जाना पड़ता। और रही बात रिजल्ट का, 8 तारीख आप भी सुबह से शाम तक रहोगे। मुझे यकीन है कि जो हिसाब से महंगाई चल रही है, बेरोजगारी है, देश का वातावरण जिस तरह से दूषित किया जा रहा है, एक सेकुलर फैब्रिक को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उसका रिजल्ट गुजरात की जनता now, we have to get responses now. I have to get responses. Binay first. Let's get quick responses. Binay. Louder, please. World record that on your show somebody has talked to such a length. I think this is for the first time and it's a world record. But again, Arnab, when we talk about Gujarat election, the mandate is that the people have opted for Gatia, Dhokla and Phapda, and they have rejected the lollipop. The manifesto of Aam Aadmi Party, that was a lollipop, that was a pure lollipop, and people have opted for their own thing, Gatia, Dhokla and Phapda. And Arnab, from the very morning I can see that people are talking about model code of conduct and the moral high ground. So let me tell you that the election process, that is decided by the model code of conduct, but the leadership, that is decided by the moral code of conduct.
And I think BJP has a moral ground over here in Gujarat and Himachal, and that's why the mandate is in favor of BJP. And let me give you a simple example. The Aam Aadmi Party, they have a habit of taking everything on the moral high ground. Let me refer to the audit of MHA, 2012 audit of the NGO Kabir, which was run by Mr. Kejriwal and his associate, Mr. Manish Sisodia. And you will be surprised, Arnab, that these people, the leaders of Aam Aadmi Party who are taking moral high ground on everything, they got their Alto car, Wagon-R car repaired by the Ford Foundation Fund. This is the moral ground of these leaders, and when they came into power. Why you have been I was looking at the national picture. I was looking at the national picture, and I'd like to ask Kapil, see, recently there was a bypoll in Telangana, you know, to the Munugode assembly seat in the Nalgonda district. You know what happened, Kapil? You know what happened, RP? The Congress lost its deposit. The party lost its deposit. Now if you lose Gujarat like this, it was a wonderful opportunity for you. But if you lose Gujarat like this, and you just sort of manage to scamper about, just my struggle in Himachal, that's not a good lookout. The question will be, are you fit to be the main opposition? That question is going to be asked. Yes. Arnab, now let's get Kapil in. Let's get Kapil in first. Yeah. So yes, so Arnab, we've been hearing that Mr. Modi was a star campaigner. He was Gujarat, and you've been talking very loudly about the Gujarat results. So if Mr. Modi is the star campaigner, and if he was campaigning in the capacity of the star campaigner and not as a chief ministerial candidate of Gujarat, because of course he's the prime minister, then you should also take responsibility of the exit polls insofar as Delhi NCD exit polls are concerned. I mean, those results are, terrible. I mean, you can't simply say that, municipal Mr. election now on Republic? For one exit poll... You want to discuss a municipal election on Republic now? No, I know you're being cornered, Arnab. Allow me to make my point. No, you want to discuss a municipal election on Republic? No, I will discuss everything. Why not? Why not? Every election. Now, remember... No, did Narendra Modi campaign for the municipal election, Binay, RP? Allow me to now respond. I don't understand this. No, you have to answer my question. But where was their leader? Where was their leader? He campaigned in West Bengal very aggressively. Where was Priyanka Vadra? And there was a tacit understanding between Aam Aadmi Party and Congress Party. Did you see Aam Aadmi Party in Himachal? They started well, and after that, that Aap became Bhap in Himachal. And similarly, Congress was nowhere to be seen. No leader of the Congress Party was to be seen in Gujarat. No, was it a wrong strategy? I think today the question is more strategic. And my question is this, and I think Abhishek, you should spend some time on this, and Deepti, on whether the Congress Party's focus on building Rahul Gandhi's image, which has been an exercise which has on and off been on for 15 years. For 15 saalon se, they have dedicated themselves to building Rahul Gandhi's profile. Whether that is a wasted effort. I think, Mr. Venugopal, we are not tackling the elephant in the room. That's going to be reiterated, Mr. Goswami, on counting day. I can tell you three things today. One, the Bharatiya Janata Party is probably going to get about 50% vote share. Yeah. And you are going to be very surprised by their improved performance in the tribal belt of Gujarat. One. Okay. Two, the Congress is probably not going to do as badly as many of the exit polls suggest in Gujarat again on vote share. And three, the Aam Aadmi Party is probably not going to do anywhere near as well as many of these exit polls predict. We'll find out in 2 days. Mr. Verma is responding. Abhishek, you want to add to that before Mr. Verma comes in? I want to say something. In the run-up from now to 2024, there'll be 13 elections, 13 state elections. Yeah. Now,
I don't know what the Congress's plan even is. I mean, are they even going to be fighting those elections, or Rahul Gandhi is happy doing this yatra? Because the other day, Jairam Ramesh was saying after this yatra gets over, we are doing one more yatra. I think it'll be the yatra. I mean, why don't they just step out and just say that we are not a political party, just an NGO? Congress into NGO Congress has now. to get that clarity, absolutely. Yeah. Are they in the business of electoral politics or not? And if yes, are they not contesting elections to come to power? Political party which is not serious about election. What sort of political party it is? So he is converting the Congress into NGO. Okay, so someone was making this point about Aam Aadmi Party. I think Binay was making that point. If I can take this to the Aam Aadmi Party spokesperson, please understand, and the Congress Party spokesperson also, Congress Party representative or someone representing Congress voice also. See, the point is, the Aam Aadmi Party, the promises that it has made amount to almost rupees 30,000 per month, right? The Congress Party in both Himachal and Gujarat has promised bringing back the old pension system. Much was made of Aam Aadmi Party getting traction within the government employees community in Gujarat, if not in Himachal. Despite that, if we are getting these numbers where the Aam Aadmi Party is just about making an entry in Gujarat and the Congress Party is completely decimated, such fragile situation for the Congress Party in Gujarat that the Aam Aadmi Party gets a toehold and the Congress Party structure really collapses. I think this is in many ways is going to be a mandate on this freebie versus welfare debate that has been started by the Prime Minister and at present is happening in the Supreme Court of the country as well. Well, people also consider whether people make false promises. Representative to answer this. Scooty in Gujarat, was that not a freebie? Who promised the workers their salary and everything increased? Was that not the Bharatiya Janata Party? Who promised the freebies there in Gujarat? And who is behind? AAP is not for freebies. AAP is for welfare schemes. If we give rebates on water, electricity, and unemployment allowance in it, where is the freebie? What BJP is giving is not a freebie. So 2 cylinders every month is not a freebie. Who is giving that? Tell me, who is behind? Who is not giving the freebie in the cylinder? 2 cylinders every month is scooty to the girls. And a salary increase for the government employees. Are you not offering the freebies? How can you blame Aam Aadmi Party? Aam Aadmi Party does not. Ravi Srivastava, there's something called trust. There is something called trust. The voter has to trust someone to be able to vote them into power for 27 long years. Beat that. Take a deep breath. Just try and understand that if after 27 long years, the Prime Minister, the BJP is not just bettering the record, they continue to create a new record. And the Aam Aadmi Party, in spite of these tons of freebies, in spite of saying let's have pictures of Goddess Lakshmi and Ganesh on the currency notes, Ratan Sharda, if this is the fate that you are meeting, you need to rethink. You need to rethink. I think we still have lots to talk. Yes. No, Ravi Srivastava, I'm not giving you any more suggestions, but what we'll do, we have to quickly head into a break, Ratan. We quickly have to head into a break, gentlemen, with your permission. But on the other side, remember, we are keeping our focus on the big national picture, the big implications of these numbers if they hold true. On the other side, back with lots more. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years. With top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम आग से बचाए। मेरी नजरों से चुना
तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the 2 states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbala Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbala says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home.
When you look at that crowd, हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, एक दो सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate
from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The death anniversary of the former Chief Minister of Tamil Nadu, J. Jayalalitha. V.K. Shashikala, along with her cadres, have gathered here to pay respects to the former Chief Minister of Tamil Nadu. BJP's focus is now on 2024 Lok Sabha election, and before that, a two-day strategy meet is underway here in the National Capital at BJP headquarters. Will elections 2022 seal the Congress fate? As the polling ends, is Aam Aadmi Party a factor or not? Can the BJP defeat incumbency in two states? Debating tonight at 9 p.m. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 9. Presented by Amity University. Powered by RP Sanjeev Goenka Group, Century Ply, Havels and MYK Laticrete Tile Adhesives. Good evening and welcome, viewers. And here is my analysis of the exit polls, the PMARQ poll on Republic and the overall trend. I shall put forth my views in 6 points. 1. Most importantly, the Gujarat sweep for the BJP with the party projected to win around 50% of the vote is incredible. It's a perfect stage for a 2024 campaign. It puts the BJP in a very strong position and gives a distinct upper hand to the BJP in the run-up to 24. 2. Himachal. The Himachal cliffhanger, in my view, will swing one way on result day. Some exit polls say it's too close to call. But here's my analysis. The Congress should have put in a stronger effort and won more convincingly, given the fact that Himachal historically swings between the BJP and the Congresses every 5 years. So this is the Congress party's election to lose. I mean, there's no way the Congress party can lose Himachal. But even then, if it's 50-50, that shows how weak the Congress is. If the BJP wins in Himachal, I repeat, if the BJP wins in Himachal, then it's complete disaster for the Congress party.
If the Congress wins but does not win over 40 seats, then there is no reason to see any overall comeback for the Vadra Congress in Himachal. So don't let the Lutyens media feed you a story about, sliver of hope in Himachal. Himachal, the Congress is destined to win given historical record. Point number 3, ladies and gentlemen, Kejriwal. He's in serious trouble because he's raised the hype so much. The Aam Aadmi Party is in serious trouble. If the exit polls are correct, then the party is actually stronger in the media, specifically the Lutyens media, than on the ground. After all the hype, the party not crossing even 20% vote share in Gujarat means it's very, 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 very far from having a real national impact. And I'm not talking about presence on news channels. I'm talking about presence on the ground. Fourth, the very poor performance, in fact, shatteringly destroying performance of the Aam Aadmi Party in Himachal. The party is reduced to around 2% of the vote. Means that this party, the AAP, for all the hype, has been completely unable to establish any effective electoral leadership beyond Kejriwal. And Kejriwal has limitations of Delhi. Kejriwal has to have leaders who deliver votes on their own, or at least galvanize an election strategy. As of now, he doesn't have it, so I think Kejriwal is in big trouble. He's got to refocus. 5, Rahul Gandhi. His focus on rebuilding his image in his way through his yatra is damaging the Congress. The largely urban and social media-led promoted social media Twitter campaign on the yatra, YouTube campaign on the yatra has zero impact on voters. Gujarat results may be that wake-up call. And 6, there is also a message to the BJP. Himachal, whatever the result, is not a sweep for the BJP at all. We are projecting a just about victory. Some are saying too close to call. Now, the Himachal result, a scare for the BJP or a defeat, is a reminder that they have to prepare for anti-incumbency at the state level better. They can't only depend on the Modi factor. The Modi factor pulls them through in the most difficult circumstances. But depending on that alone cannot always work. So without doubt, the BJP will be looking at the Himachal results very, very closely. Ladies and gentlemen, I have one more thing to say. With these exit polls and the results on 8th, we as a nation have entered the pre-general election phase. We're going to see a huge campaign. The next year and a half, we'll see the whole country hooked on to news, politics, to news channels. And I sincerely hope, in fact, I'm totally sure, I'm convinced that you will make Republic your choice. And that's my key focus today. The exit poll results, I'm analyzing that 9 to 10. I'm looking at the national picture 10 to 11. It's going to be a great program, ladies and gentlemen. It's going to be a great debate. It's going to be a fantastic, fantastic series of news reports I have. And here are the headlines this Monday evening on The Debate Tonight. The Republic-PMARQ exit poll predicts super sweep for the BJP in Gujarat. Will the party break its own record? Almost a 50% incredible share in Gujarat. The Aam Aadmi Party could be restricted to just single digits. A close fight with the BJP narrowly in the lead. Will pro-incumbency help the BJP break the jinx in Himachal? From Himachal to Gujarat, who is the bigger loser, the Vadra Congress or the Aam Aadmi Party? Are the projections a setback to the Aam Aadmi Party's national plans? Is Team Kejriwal effectively restricted to being a Delhi NCR party? And with projections showing a possible double victory, is the BJP clearly leading nationally in the run-up to 24? And ladies and gentlemen, the exit polls are in, the indications are clear. The BJP is sweeping Gujarat and Himachal. It's a neck-and-neck fight. The numbers are clear. The poll of polls is now in. Take a look first before we begin the debate, the bigger picture tonight, at what the projections are, and then we shall debate. It's been a high-profile battle in Gujarat. A hotly contested fight in Himachal Pradesh. The polling has ended and the projections are in.
The PMARQ exit polls predict a record-breaking win for the BJP in Gujarat. पिछली बार 99 सीटें मिली थी, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को 128 से लेके 148 यानी कि 138 की हाफ पे मार्क है और उनको वोट शेयर वहां पे 48.2%, यानी कि हर दो में से हर एक वोट बीजेपी के लिए गई है और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। In Himachal Pradesh, the PMARQ poll establishes that BJP will duck the alternating party trend. 4.4% वोट बीजेपी के कम हुए हैं, मगर स्टोरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी तो वही 42 के 42 पर रही। वही कांग्रेस पार्टी को अगर और 3% वोट मिल जाते तो कांग्रेस सरकार बना लेती इजीली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात मैंने कही, ये आम आदमी पार्टी कहां है? बिल्कुल 2.8% वोट है, यानी कि पूरा सफाया हो गया। The projections from both states showing that the Aam Aadmi Party may have become a footnote this election after being projected to get a single-digit tally. The BJP is projected to be a clear winner. The real contest is to determine who's the biggest loser. Was it the Congress or the Aam Aadmi Party? Let's debate. At this 1 hour of the debate, I'm joined by Deepthi and Abhishek, co-anchoring this segment. And we have with us a nice panel, Gaurav Bhatia of the BJP, Sandeep Ghosh, political commentator M.R. Venkatesh, Saurabh Shah, who is a senior journalist, and he really understands Gujarat and the national picture very well. Good to see you, Saurabhji. Abhishek Sudhir is now, supporting the Aam Aadmi Party informally. Waris Pathan is AIMIM, Kamru Chaudhary is Congress, and Brijmohan Srivastav is NCP. Okay. I don't know if you saw my opening remarks out there. Saurabh Shah, I want to start with you. What is the headline you take out of today's exit poll? What is the big picture that you understand from the numbers that we've seen? Mr. Shah? Can't hear you, sir. Yeah. Yes, sir. Gujarat is the laboratory for India. Whatever Gujarat thinks, the nation thinks. Whatever Modi does in Gujarat, the whole of nation is going to follow it. So Gujarat is India and Louder, India is please. Gujarat is the headline. Louder, please, audio. Yeah, please. Yeah, can I just have the audio louder for Mr. Chaudhary? I'm asking our sound mixer. Can I have the audio louder for Mr. Shah, please? Thank you very much. Yes, Mr. Shah, can you repeat that? I had a problem with my audio mixer. Yes, please, go ahead. Sure. I would say the headline is Gujarat is India and India is Gujarat in one sentence. Whatever Gujarat is thinking today, tomorrow the whole India is going to follow. So India is Gujarat and Gujarat is India is the headline for me. Okay, that's the headline for you. I put that differently. What about Sandeep, what about Gujarat? What about Himachal? Should we not look at Himachal where it's pretty close? Can you unmute yourself, please? Audio again. I'm having an audio problem again. Can it? Yeah, it is unmuted. Louder, please. Thank you. Go ahead. Louder, please. Assuming louder. Yeah, louder, please. If Himachal Congress loses, it's beginning end game for Congress. They are Rahul Gandhi has come a cropper everywhere, including the Bharat Jodo Yatra. We have seen it's not making any difference politically. And in Himachal, they feel that Priyanka Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, if she doesn't make a difference, even if they get the number of seats which you are saying they get, in a situation when they should have had a cakewalk with the anti-incumbency, the kind of defections they have had in Himachal and all the problems, then, Congress is not cutting anywhere. I think it's a very, very worrying scene, and Aam Aadmi Party, you were saying, is getting wiped out in Gujarat. But essentially, if Congress goes this way, they are handing it over to Aam Aadmi Party. I'd like Deepthi and Abhishek to analyze Himachal with Kamru, please. Over to you, Deepthi and Abhishek, because I look at it a certain way, but I'd like to know your reading of it. Well, go ahead.
Okay, so essentially, Arnab, what we are seeing is that the Aam Aadmi Party, realizing that they don't have leadership, they don't have any base, decided to quit on Himachal. And Bhagwant Mann, for example, the Punjab Chief Minister, went to Himachal just once, travelled all the way to Gujarat 5 times. How can that you say gives us quit? an idea how can of you the say focus quit? of the Aam Aadmi Party. And that is the reason. That is the reason why the Congress still has some chance. No, are you giving that's a very easy exit option for a political party to say we knew we'd lose, so we quit. I mean, that's not the way it works. Deepti, you want to take that forward? Yes, it's an interesting take, Arnab. And before I answer that, I really want to look at, you've listed about 8 points when you began the show. I today want to know what a Nitish Kumar must be thinking, because Nitish Kumar went and met Sonia Gandhi. He went and met Rahul Gandhi. Is he still willing to do business with the Congress party? What is the DMK today thinking? In the state of Telangana, where the Congress today has been relegated to a position that I don't think it ever thought it would be. It lost its deposit. What about those people? The NCP, you have an NCP representative on this show. Oh, yeah. The Shiv Sena today, are they still willing to do business with the Congress party? Can I just come in? Well, we put that. Abhishek's getting provoked. Abhishek. Also on Himachal, just a bit on Himachal. Just a bit on Himachal. Business. Nobody wants to do business. Abhishek wants to come in. Yeah, Abhishek. No. Abhishek Sudhir. Abhishek Sudhir. Here, I want to say... Yes. What I wanted to say is, how can you say the Aam Aadmi Party, this is a bad day, if this is the actual result? You have gone from 0.1% in the last election to 15.4%. You have convinced 1 in 6 Gujaratis to vote for Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal has no ties to Gujarat. He has no ties to Gujarat. He is a new entrant in Gujarat. In 10 years, Arvind Kejriwal has formed the government in Delhi, formed the government in Punjab, has got recognition in Goa, and day after tomorrow, Aam Aadmi Party will become a national party in just 10 years. The Election Commission of India will declare Aam Aadmi Party a national party in 10 years. Nobody wants to do business with the Congress. The Aam Aadmi Party is the future face of the opposition. And I want to say one thing. Today, the Congress voter is moving towards AAP. Tomorrow, the BJP voter. Remember that Aam Aadmi is not anti-Hindu like Congress. Aam Aadmi is a pro-Hindu, it's a pro-India party, unlike the Congress. So that BJP voter will also move to AAP. You are like in Hindi, the Aam Aadmi Party will do business with the people of this country. You keep switching your ideologies wherever you go. In Punjab, you speak a different tone. In Delhi, you become different. You go to Himachal, but then you run out of the fight. You have, no replies on the alleged scams that you have tumbled out in Delhi. How do you become a national face? The Aam Aadmi Party's ideology is the ideology of governance. What governance? Aam Aadmi Party's ideology of governance. We will build great schools, great hospitals, great roads. We will give you free electricity. Hold it. Deepti Lady got you there. Okay, one second. Abhishek Sudhir. I'm getting Abhishek, 1 minute. See, the thing is, Deepti really got you there. You see, the fact is, I'll get Gaurav Bhatia in it right now. I think it's an incredible situation where the party which is number 3 in Gujarat is saying that, look here, we could have been number 3 with a bigger margin between number 2 and number 3, but we will sort of, what would you say? We console ourselves by saying that we could have lost worse. We've lost badly, but it could have been worse. What happened in Punjab in 2017? It took 5 years for the Aam Aadmi Party to form the government. And then you won, and then one second. You're not debating with me. I can debate with you, but I want to. Let me say this to you. You won Punjab in 2017. In that case, why are you getting 2% votes in Himachal where you said? You've constantly been saying, after winning Punjab, we're going to win Himachal, we're going to sweep Himachal, we're going to sweep this entire region, Haryana, Delhi, Himachal and Punjab. But it appears to me that your experiment in Punjab has proved to be, and your performance in Punjab has proved to be very disappointing for people across the border in Himachal. Now, question being here, who is the main challenger for 2024? On Republic, people are just asking that question. And many people, I know this afternoon would say, we were... Arvind Kejriwal. Okay. Many people would say we were really hoping that AAP is able to bring... Why were people looking at this election?
Viewers, tell me, why were you looking at this election? Can I tell you why? You were looking at this election not for the minutiae. You're looking at the election to say, does the BJP have a competitor in 24? And the answer is, they don't have one as of now. Over to Gaurav. That's the debate we should be look at. Arvind Kejriwal. No, you can say Kejriwal. No problem. Let Gaurav take it forward. So Let's take that debate He forward. is Kejriwal. Look at him. He is the one. Yes. You used Rahul to say Gandhi- the same thing about Akhilesh 6 months back. Gauravji comes in, can I have a 10 second? Arnab. Gaurav, 1 second. You know Mr. this Please. election, if the... Okay, Congress also wants to say something. One day. You can respond to everyone after Arnab, can I come in? Yeah. Yeah, what is it, Kamru? Can I? Yes, of course. Yeah, you know this. If these exit polls are considered to be exact polls, don't you think the incumbency of Narendra Modi has been dented out here in all the three places where elections we are discussing? Which in Delhi, three? whoever is the party that was I know governing the only NCT two. is supposed Which to be three? losing. In Himachal Pradesh, Which it is the Bharatiya Janata which Party three? that was governing. It is hanging on a balance. In Gujarat, if there was no Aam Aadmi Party, don't you think the BJP's vote share has come down? And we have fought the elections. Bharatiya Janata Party has fought the elections on the plank that you are voting none other than only Narendra Modi ji. So don't you think that if these exit polls are to be the exact polls on 8th of December, then don't you think the biggest casualty in this election is Narendra Modi's image himself? Why can't you discuss this? Arnab, Because now Congress may I was respond? nowhere in Himachal Pradesh, Kamru, why is the nowhere in Congress Gujarat, fighting nowhere in elections, Kamru? NCT, Delhi. Kamru, why is the Congress fighting elections? Yeah, why are you fighting elections? Why not? Why is the Congress Why not? fighting elections? We Kamru, have Congress is managed to unelectable keep our today. vote share The intact. Congress should walk away. You can become an NGO. Please become an NGO. Who said that? Who the said Congress that? Who is said ruining that? the Aam Who Aadmi said Party's that? prospects. It's No, not the who other way said around. that? You don't become have an to NGO. give us a You certificate of march what with we have Swara to do. Bhaskar. But the You march with simple Umar thing that Khalid. I've asked here, do you I'll have tell you any one reply thing. for that? I'll tell you one thing. I have a Kamru, listen to me. Kamru, listen to me. Kamru, listen to me. I'm a well-wisher. You fought an election on a comment by a political leader. I'm a well-wisher. You fought an election on Aftab. You fought an election on Ravan comments, but still that you will not discuss the dent of image of our great Narendra Modi ji. Why all the three places they were losing? Now your exit polls. Why are you making those comments? Kamru, why are you calling him Ravan? Losing at most 2 states. Yeah, why are you calling him Ravan? I mean, you did it. It is the fault You're of the Congress party that Narendra Modi is strong today. That's the flag that you have fought on. This is the fault of the Congress Ravan. party. You The never Congress fought party, on what's plaguing Narendra Saurashtra, Modi what's plaguing exists Central because Gujarat, the Congress what's party plaguing exists. unemployment See, problem. Gaurav is so happy right But now. you fought No, an one minute, election Gaurav, 1 saying minute. that No, 1 you minute. have to One. vote for Kamru and Abhishek Sudhir. Abhishek and Kamru. Abhishek, listen to me. You know the thing about false starts. You know the thing about false starts in athletics. You get a false lead, but then it's found out that you're on steroids. You're behaving like Ben Johnson on steroids on my program. Just take a break for a minute and listen to me. And as far as Kamru, you are concerned, I'm in a fantastic mood tonight. I do believe that when there is a campaign, allow me to complete, in which at the lead of the campaign you have Prashant Bhushan and Yogendra Yadav. In the middle, you have Jairam Ramesh, who has never fought even a panchayat or a municipality or a councillor election, but who in his mind knows everything. And at the end, you have Kamru, a YouTube comedian, who is interviewing Rahul Baba on spirituality in the middle of what is supposed to be a political yatra. You've got your recipe, my friend. You're sorted. Don't worry. Just don't worry. Don't worry. Leave it to between the AAP and the. And by the way, Kamru, you were supposed to sweep Himachal. What is the result that shocks
the wits out of me, the shock that it is the infinite capacity to lose. No, 1 minute. Kamru and Gaurav are on the debate. Kamru, listen. Kamru. You should have discussed that Kamru, BJP is losing 2 states. Kamru, you are also there. You are there. You're the spoiler. 1 minute. Kamru, I'll bring Gaurav in. Kamru, the point is, Himachal was supposed to be. Let the nation know our views, Mr. Goswami. Let them know our views. Okay, Arnab, now why are you shying away? Allow me to make my points. I very patiently waited. Usain Bolt doesn't wait, but Usain Bolt of politics, the Bharatiya Janata Party waited for its turn. While the drug-induced Ben Johnson was running all over the place, Arnab. So be fair to us. Okay. Now, Varis Bhai will listen to me also, please. Is your buddy, na? You two first of all, let me make it very clear. But you allow me to make my point after you complete, sir. Otherwise, my turn. Varis, खत्म करने दीजिए ना. Allow me to rebut. आप मुझे पता वारिस लेट हिम कंप्लीट. अरे खत्म कर दिया उनको. नहीं किया ना. आप कैसे डिसाइड 13 सीट पे तो लड़े हैं अर्नब. 13 सीट पे लड़े, उसमें भी कंपटीशन है जबरदस्त. We are in the fray, the people of Gujarat. वारिस भाई अपनी बात तो रख ले. इतना भी क्या Varis, let him speak, then you come. We don't want to waste time. There's huge viewership on the program tonight. Massive viewership, record-breaking viewership on the program tonight. Just let's listen to each other. Yes, please. Gaurav Bhatia and his party have again succeeded in polarizing the situation. Before I come to the poll of polls and to the exit poll, let me make it very clear. The Bharatiya Janata Party is very confident we are winning both the states, hands down. No, Himachal is too close, right? Himachal is close. I'll tell you. Himachal is close, very close. Let me make my very, point. Very close. You may come in with your viewpoint. I respect Himachal your is very viewpoint, close, but Gaurav. I was in Himachal. I was campaigning there. For their exit polls. Can I make my point, Arnab? It's okay. You feel it's close, and I'm telling you I don't feel it is close. Bharatiya Janata Party is winning. Now listen to me. First of all, Gujarat. After 27 years, polarizing. There is a pro-incumbency factor. The surveys are showing the biggest ever victory for the Bharatiya Janata Party in Gujarat. This shows how, through hard work, grit, determination and honesty, people will have faith in you. And people of Gujarat have faith in the leadership of Shri Narendra Modi ji. 2. Can you be quiet? Varis, don't do that. Varis, I don't want to do all this with you. Please, be quiet. Be civilized. Be civilized, I'm saying. That's all I'm requesting for. Second, if you look at the exit polls of your channel, Arnab, did you notice that Bharatiya Janata Party is gaining 34 seats? 34 seats over last assembly elections, and the Congress is losing 41. And the second important fact that can be culled out from the numbers that you've shown, that is the combined vote percentage of Congress and Aam Aadmi Party, which the people are calling Ayyash Apradi Party, is less than the Bharatiya Janata Party vote share. This itself shows that abusing Narendra Modi doesn't pay. जितना दोगे नरेंद्र मोदी जी को गाली, जनता कर देगी तुम्हारी झोली खाली. Now coming to Himachal. Himachal is like Uttarakhand. Arnab, you remember in Uttarakhand as well, everybody said every 5 years the government changes there. But we are very confident in Himachal as well, which is the home state of a national president. The Bharatiya Janata Party will form the government. And the reason is very simple. On one side is the double engine ki sarkar. On the other side is the trouble engine ki sarkar. The trouble engine is Rahul Gandhi, who decides to be in Madhya Pradesh when elections are going on in Himachal and Gujarat. And when there will be elections in Madhya Pradesh, he will be in Gujarat. This is Rahul Gandhi for you. And that is why I'm saying, be it AAP or Congress Party, nobody is there. It is only the Bharatiya Janata Party which believes in serving the people of the country, and that is why people repose their faith in us. We have a, I want to look at the national... Kamru, yes, you're saying something, Kamru. 1 second, I'm in trouble. That is surprising. Even Congress Party, despite all your propaganda, is still at 33% vote share. If you go with the exit numbers only. Now, if the Aam Aadmi Party was not in the fray, then Congress would have won handsomely. And the responsibility for the loss of the BJP in the 2 states would have rested solely and squarely with
जाना था, पहुंच गए मध्य प्रदेश। राहुल गांधी, आप बताइए, why are you so obsessed with my leader राहुल गांधी? पूरी हो गई आपको तो खुलेआम दे दिया, फिर भी आपको जनता ने, गुजरात की जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आप ये सोचकर ये मत करो, यहाँ पे आपको रूरल वोट और अर्बन वोट शेयर का डिविजन आप सोच लो, देख लो, रूरल और अर्बन वोट में सौराष्ट्र और हिंदी। Can I come in for a minute? Can I come in for a minute? Can I come in for a minute? One minute. A lot of people, God of a minute, please. And I can't hear in the studio. I'm having an audio problem in the studio. Can it be louder here, please? I'm just making a point here, please. Just a minute. Viewers, you've been telling me and you've been asking me that do we have an alternative political coalition emerging for 2024? And I would like our panelists to address that specific issue. Specifically, right now, MR has not spoken, right? I'd like to bring in MR. I'd like to bring in Saurabh Shah on the left. You haven't spoken, I'm completely aware. And there is our quarrelsome Waris Pathan and Brij Mohan Srivastav on the program. Analysis they do 30 seconds, but after that, aap log aiye. Viewers, people ask me, why do you think the BJP is doing well? And I tell them, MR, if after 27 years, if you come with a record victory, then how do you expect me to analyze it? And the Lutyens media is saying today, no, sliver of hope for Congress. I say they are looking at sliver of hope for themselves. Sliver of hope, little bit of hope in Himachal. They are saying little bit of hope for themselves, not for Congress party. Because Himachal is a done deal. Congress was supposed to win with 45 seats. This result of Congress 50-50 is very bad for Congress. So at a national level, what we have a situation is of BJP leading all the way. MR is on the debate and then we'll get the others. Yeah. Arnab, you must understand, if the exit polls hold true, the numbers hold true, I think this victory is all the more remarkable because in the absence of Rahul Gandhi, BJP has scored this spectacular victory. Had Rahul Gandhi campaigned in Gujarat, you must understand, you must do a counterfactual analysis, and then the number two, sir, Waris, don't be an indisciplined schoolboy. Listen to this. Aam Aadmi Party plus Congress does not exceed the vote share of the BJP. That means even had there been no Aam Aadmi Party and all the votes were belonging to that of Congress, BJP would have still roamed home. Point number three, very importantly, a brief spat between Abhishek and the other Congress gentleman. I'm sorry, I couldn't get his name. Kamru, Mr. Kamru. Reveals the fragility of the opposition unity, even on a television channel. That the Aam Aadmi Party spokesperson blames the Congress and the Congress representative blames the Aam Aadmi Party. So this is going to be the roadmap for 2024. Okay, let's get Mr. Srivastav in. Mr. Srivastav, now I want to analyze this further for you. Please understand. This is a simple question. Kamru, 1 minute. Do you think that the BJP is on a downhill because of these exit polls? Don't you think that Narendra Modi's image has dented because he is supposed to be losing? Sir, your hatred is palpable. Delhi and Himachal your hatred Pradesh. for Narendra Modi is palpable. Don't you think the entire cabinet that has campaigned in Delhi, entire cabinet that has campaigned in Himachal Pradesh is coming to a big Congress party, big zero? Don't you think that the vote share of Congress is maintained in Gujarat? Let me BJP has come down. The Congress party. Don't you want to analyze those points? Is nothing got to do with opposition unity. Opposition in India is Congress and will remain Congress. Kamru, 1 minute. MR, pull back. Let's get Sandeep and Saurabh on the left. And Kamru, thank you. Kamru, just keep it brief and breezy. You know, one of the things that you people should learn from us anchors. We keep it brief and breezy. We are quick.
So just keep it brief and breezy, my friend. One, sir. You need to give me some time. I only have time. Time hi time hai. Listen to me. The question is this. Who is the bigger loser? Brijmohan Srivastava. Congress was the key opposition in both the states, yet could not capitalize on double incumbency or anti-incumbency. AAP, despite all the hoopla, couldn't garner a single digit tally in Gujarat and has been wiped out in Himachal. So I am looking at the national picture. What's your take, Mr. Srivastava? अर्नब जी बोलिए, please. अर्नब जी देखिए कि ये आपने जो मुद्दा उठाया ये वाकई चिंता का विषय है कि मेजर पार्टी कांग्रेस है, वो सीन से गायब है। आप पार्टी के बारे में आपके जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि उनको वोट ही नहीं मिलने वाले। तो वोट ही नहीं मिलने वाले नहीं कहा है हमने। हम कह रहे हैं जितने वोट मिल रहे हैं, जितने बटोर रहे हैं, पार्टी वो काफी नहीं है। जी ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं ये इससे इसी से प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुनाव लड़ किससे रहे थे? वहां पे कांग्रेस थी नहीं, आप पार्टी है नहीं, तो फिर नरेंद्र मोदी जी इतने पिछले 15 रोज से 53 किलोमीटर का उन्होंने मैराथन जनसंपर्क किया। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले को अगर मैं राजनीतिक रूप से देखूं तो ऐसा लगता है जैसे लायक पिता ने अपने बहुत सारे नालायक बेटे इकट्ठे कर दिए हों। व्यक्तिगत लेवल पे आ गए, संघर्ष करना पड़ रहा है। गौरव भाटिया को लाना पड़ेगा। सीन है, ये सीन खाली गुजरात का नहीं है। ये लायक नालायक वाली बात आपने कही। एक मिनट, नहीं, आपने इस डिबेट को आप स्तर गिरा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, ये नालायकी, ये फिर नालायकी लायकी, ये सब क्या हो रहा है? पार्टी के हर राज्य में है ये खाली। तो प्रश्न ये उठता है, आपने जो 2024 की बात की कि 2024 में आदरणीय मोदी जी ने गुजरात तो संभाल लिया, पूरे भारत में जब वो प्रचार करेंगे तब क्या होगा? क्या वहां पर वो अपने आप को गुजराती के रूप में पेश कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो क्या वहां कहेंगे कि मैं गुजराती हूं? आप एक मुझे अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहेंगे क्या मैं गुजराती हूं? आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा मैं उस पर खासतौर से फोकस कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री ना कहीं भी जाएंगे। एनीवे, गौरव भाटिया को रिप्लाई करने दीजिए। मुल्क को जाने कहा क्या उनको? पर मैं ये कह रहा हूं, देखिए अर्नब जी, सबसे पहले तो यही तो प्रश्न है। अरे मैं जाने कहा था, आपको भी है, मुझको भी है, सबको है। प्रियंका गांधी नहीं, वहां पर कांग्रेस का और कोई नेता नहीं, खाली आप पार्टी से लड़ाई कर रहे थे वहां, इसके अलावा कोई नहीं था। तो आप सोचिए कहां से क्या स्तर आ गया है। आप तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आप राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी पार्टी, आप कहां थे? जनता पार्टी को भी देना होगा। Anyway, let Gaurav respond, please. अर्नब जी, then I'm pulling back. Let the other co-anchors take over. अभी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पे बात करना चाहते हैं। कराइए भाई अर्नब, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। ये लोग क्या है, वर्बल डायरिया है क्या? चुप कराइए इनको। अपनी बारी में बोलेंगे, उसके बाद भी बोलते रहते। चुप करिए। अब गलत सलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे प्रधानमंत्री जी के लिए। आपके लिए वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है जो 49 चुनाव में 39 हटा लेता है। इतनी जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं। बीजेपी इज लूजिंग। इतनी जल्दी गुस्सा आने लगता है आपको। देखिए अर्नब, आई एम टेलिंग यू, दीस लूजर्स कम टुगेदर एंड इनके लिए मैं एक बात बताता हूं। जल्दी पेशेंस खो देते हो आप। इनकी हालत क्या है देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए। क्या तस्वीर? सुनिए, इन्होंने हिमाचल में क्या कुछ दिख नहीं रहा है। ये हर बार इस तरह से एक साथ आते हैं। हिमाचल, that's why BJP is losing। क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? हाथ उठाते हैं अर्नब ऐसे। क्या मुझे दिखने क्या है? देखिए इनकी हालत मैं बताता हूं। देखिए ये क्या है? ये तस्वीर है। ऐसे आते हैं सारे लूजर्स, नालायक बेटे इकट्ठे होते हैं, ऐसे हाथ उठाते और उसके बाद चुनाव हार जाते हैं। ये क्यों होता है? अर्ज किया है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। तो ये तो मोदी जी को क्या हटाएंगे? मोदी जी ने दिखा दिया। ये कह रहे थे डाउन हिल है। डाउन हिल 99 से 135 सीट दिखा रहा है आपका प्रोजेक्शन। 36 सीट बढ़ गई हैं, लेकिन ये डाउन हिल है। ये लोग क्या है ना, इनकी आंखें खराब हैं और उसके बाद ये इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। यहां पे अय्याशी अपराधी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जेल में मसाज करा रहे लीडर। 6 महीने से भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन को हटाया नहीं है और उसके बाद आके आप बातें करते हैं। सीटें आ रही हैं 3 और 4 और अरविंद केजरीवाल और अर्नब
साइन कर रहे थे 92 सीट से ज्यादा लाऊंगा। Why is Manish Sisodia not named in the charge sheet? 2 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात। Why haven't you named Manish Sisodia in the charge sheet? Don't speak in between. Why have you not named Manish Sisodia in the charge sheet? Answer the question. First, become a spokesperson. You campaigned in Himachal, that's why BJP is losing. First, have the merit to be a spokesperson. Nadda ji should have never allowed you entry into Himachal. Then come and Nadda ji has made a big blunder. You've campaigned in Himachal and BJP is losing because of you. बेचारे जुगनू की लाइट बंद हो गई है। Arnab, do you have a torchlight or a flashlight? अरे जुगनू की लाइट बंद है। जैसे ही सूरज आता है ये जुगनू बिना लाइट के कूदने लगता है। ये जुगनू को चुप कराइए। अर्नब जी मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने की बात करती थी, क्या हुआ? Then come. Why haven't you named Manish Sisodia in the charge sheet? Can I complete myself, Arnab? There is a coterie of people who are suffering from verbal diarrhea. Okay, I'll request, because I'm a patient. Acha, suniye. I have a patient observer right now. There's Deepti and Abhishek out there. They can kindly intervene. You know, sometimes it's great fun to just watch from a distance. But I have Waris walking out. Waris, come back. Waris got angry. Waris walked out of the program because Abhishek Sudhir did not let him speak. Let him go. Please, let's call Waris back. I don't know. I see no reason for Waris to be angry. What was the MIM vote share in? जैकेट खोल के। I don't know. अर्नब, आपके स्टूडियो में ना आ जाए। वो कहते हैं 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है। Saurabh Bhatia has made me laugh. Okay, Sandeep is on the debate on a serious question of the impact at the national level. Sandeep. For a change. Sandeep. See, first of all, as I said about Himachal, after the, Rahul Gandhi's so-called moral victory in 2017, this was again an election in Gujarat for there to be taking. The kind of results they had at that point in time and 27 years of anti-incumbency, they should have had a walkthrough here. And instead, from a moral victory, they just gave it a walkover to BJP. And whatever Aam Aadmi Party is finally getting is also thanks to, they should send a thank you note to Rahul Gandhi and also one to Mallikarjun Kharge for his 2 self-goals which he scored there. Himachal we discussed earlier, they should have got it again because of this whole But the Gujarat I want to focus. You know why I want to focus on Gujarat, I'll tell you. Just allow me a minute. You see, okay, they bolted, as Abhishek said, Deepti said, they bolted from Himachal. I mean, they realized they are going to get shattered, and they were right. They are saying 2%, they may not even get 1%. But Deepti and Abhishek, Gujarat, they made this, young journalist Isudan Gadhvi their face. Isudan Gadhvi covered 1 lakh kilometers across Gujarat. Saurabh, am I correct? Kejriwal left Delhi and based himself in Gujarat and traversed the whole state. Punjab was burning, Saurabh ji, but Bhagwant Mann gave up Punjab. He abandoned Punjab and started campaigning in Gujarat. Raghav Chadda stationed himself entirely out of Gujarat. After all of this, Saurabh ji, please put it in. See, AAP has done phenomenal amount of work in Gujarat. Phenomenal amount of work in Gujarat. After this, the result is more stark. So it tells you something else, that we may sit in Delhi, people may sit in Delhi and Bombay and say AAP is the obvious alternative. That's not how people are seeing it on the ground. In fact, the Himachal result shows that people are still saying Congress has an X factor to it, but not AAP, which is also crumbling. How do you view it, Saurabh? Arnab, actually, the AAP and Kejriwal and Isudan Gadhvi or Gopal Italia and Raghav Chadda, etc., they just spoke in the public forums like social media and some public meetings. They have not done a single paisa of work in Gujarat. The Gujarat people, they do not trust Kejriwal's bakwas on the social media or in the print media. They don't just trust. Number one. Number two, AAP has no cadres at any level. 1 in 6 Gujaratis, according to this exit poll. Everybody so. 1 in 6 everybody Gujaratis says. are voting for the AAP. I can give you an idea. Abhishek Sudhir.
What is the Abhishek Sudhir? Let me complete, please. I can give you an idea. Let me complete. Let me complete. The point that is being made by the panelist. Abhishek Sudhir, listen, it will help you. It will help you. You know, Aam Aadmi Party made an entry in Gujarat, is going to get some vote share, fine. Might get a seat here and there, fine. But, you know, your understanding of Gujarat, no cadre. Your Chief Minister face, Isudan Gadvi, is contesting from a seat where his community has no role in deciding who becomes the MLA. It's essentially an Ahir seat, Jam Khambalia. Also in Jamnagar, your Jamnagar South candidate happens to be from Western Uttar Pradesh. You don't have people. Politics. You know, that is the situation. Does not play caste that politics. Is the situation for the Aam Aadmi Party as it stands today. Why are you bringing Isudan Gadvi's Tremendous caste? amount of effort made. The Aam Aadmi Party does not give candidates tickets on the basis of caste. Aam Aadmi Party does not do caste calculations. Aam Aadmi Party has never been a model. You are making an entry, you are beginning. You have to understand the local dynamics. That's the point I am making. You are still far from understanding the local dynamics in Gujarat. Aam Aadmi has got 16%. Please ask him. Saurabh Shah is saying something. Saurabh, what are you saying, Saurabh Shah? You're saying Isud, the chief ministerial face. Arnab, Saurabh Shah. The chief minister face of Isudan Gadvi has no popular base. He is losing. No, of course not. There is no caste equation. There is no caste equation. He has no basis. He has not done any work. He is losing from his seat. You are saying Gadvi. I am not talking about caste. You are bringing in the caste inside. I am not talking about caste. You have that poison in your mind. You have that poison. Caste क्यों ला रहे आप? Of course not. Have I said that? Why are you bringing caste? He has not mentioned caste even once. You are saying that he has not. He just said he has not mentioned caste. Caste will not decide. He has not mentioned caste. Caste will not decide who will win. I think Saurabh should be allowed to speak, please. Abhishek said it, na? Not done any work in his constituency in Gujarat. And he is going to lose if he can save his deposit. It will be a very big moral victory for him. School has no caste. Hospitals have no caste. I can't even see him on screen. I can't even see him on screen. You just don't understand Gujarat. That there are Sir, you don't understand what Gujarat is. I can't see Abhishek Sudhir on screen. Important seat, and the caste poison is in your mind, in your party's mind. Okay. Go back. No, I don't think. To be fair, Deepthi, can you take it back? Can you take it back to the national picture, please, Deepthi? Yes. We have 3 minutes left. Yeah. Yes. And when it's in the national picture, I have one question to ask of Gaurav Bhatia. You know, Gaurav, if today you have an Aam Aadmi Party who even picks up a vote percentage of, say, a 15.4, how will the next Gujarat election look like? You know, correct. Because Congress you can handle. Congress is being defeated. But what about the Aam Aadmi Party? Is that not going to be a prick? Because the moment they enter the opposition, you know what they'll do. We will form the government. Next election. Deepthi, I would love to answer your question. First of all, remember one thing. Let's listen to Gaurav. The next election, as Arnab is discussing, would be the 2024 general elections, and never forget that even when AAP had a landslide victory in the assembly elections, when the Lok Sabha elections came, they lost all 7 seats in Delhi. What the does next it Gujarat show? election. Yeah, I know. I will come to that. I'll come to that as well. See, one thing is clear, Deepthi. A party that came on the plank of fighting corruption today is the most corrupt party in India. And that is the Apradhi Rajat Party, as we call him. And 2 cell goals during the Gujarat elections. You're getting wiped out. We have seen. One was Gopal Italia calling temples Mahilaon ke Shoshan ka adda. And the second is Arvind Kejriwal going to Gujarat and saying कि कंस का वध करूंगा. And आज भ्रष्टाचारी कंस खुद अरविंद केजरीवाल है. So before the 2027 elections, you will see there will be no goodwill left with Arvind Kejriwal because he is released on the promises that he's made. He is left with no credibility. He is not sacking the corrupt minister who is behind bars for 6 months.
and people are fed up of Arvind Kejriwal and his brand of politics. Okay, may I just say one thing? May I say one thing here, Gaurav? What are you doing? Gaurav, can I say one thing? First of all, Abhishek Sudhir, don't heckle. I'm very curious about this. I want MR to come in on this. No, one minute. He's not even the official spokesperson. No, but that's okay. No, the point is, the point being, he'll stand exposed. the point being here, can I go back to the previous windows, please? The point being here that I find it incredible that we were only talking about AAP at a national level, MR. And the AAP itself started this campaign called Make India Number One. Sounds very Donald Trumpish, Make America Great Again kind of thing. And the positioning for Mr. Kejriwal was a principal challenger individually to Prime Minister Narendra Modi. National ambition, right? He made the speech in April this year. Now, he went to Varanasi. Yeah. So now, and it's not. See, 1 minute. No, the question. There's nothing wrong with challenging Prime Minister Modi or anyone, and I think there should be a healthy and a very strong opposition in this country, so that policy is argued better. Yes, our question, however, is we find it strange. He himself is giving the mileage. Yeah, but sir, please understand that today on the 5th of December 2022, sir, today on the 5th of December 2022, we are sitting on the debate and the AAP people are saying we are winning the municipal council elections in Delhi. In April, they were saying we are winning India. What is wrong with that? There's nothing wrong. Democratic setup. Oh, Baba, there is nothing wrong with winning even a housing society election. Democratic setup. Though you can't do that either. What? It's not embarrassing for the BJP that they can't win in Delhi. But you know, the question was your national and not your municipal plans. The chief minister will be from AAP. But you had national ambitions, not municipal ambitions. You've forgotten that? Amit Shah sahab can Rome go to the isn't built in a day. Rome isn't built in a day. Massage kara rahe, Spa and Massage Party of India. Wait. It's not the Aam Aadmi Party, Arnab, it's the Spa Massage Party. You lost and very in soon MCD, Arvind Kejriwal will also be getting... Okay, I thought MR wants to say something to that. Yeah, go on MR, don't be so patient. This election shows one thing, that the hemorrhage of the Congress is not giving a concomitant rise to the Aam Aadmi Party or for that matter anybody else. So to that extent, the Aam Aadmi Party can say they are pretenders to the throne and they can go on getting laurels or kudos about winning MCD and housing society elections. But they are nowhere near the national horizon to be seen as some sort of a remote contender for challenging Narendra Modi in 2024. The Aam Aadmi Party is going to be a national party day after tomorrow. Relax. Yeah, day after tomorrow. We'll see, sir. We'll see day after tomorrow. Day after tomorrow? Day after tomorrow. You mean on Wednesday? Day after tomorrow. No. Wednesday or Thursday? I don't know what is he smoking. I have absolutely no idea. The PAP Party. Anyway, the AAP does well, whether in the Surat municipality or the Delhi municipality. Thank you very much for joining me on this part of the debate. Ladies and gentlemen, a lot of questions coming to us on national impact. People want to know what is the national impact. The Republic viewer wants to know what's going to happen in the national elections. And ladies and gentlemen, when we come back on the other side, I'll go deeper into that. Not just the numbers of the exit polls, but the national impact in a few minutes. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years. With top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा। फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए।
truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is. मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, खासतौर से गुजरात के मामले में। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए।
The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate.
Ladies and gentlemen, 17 months from now, we'll see the general elections, which mean the run-up has started. BJP has already started holding serious strategy meetings for it today. Now is the time for all parties to be playing the long game. Every election, every move from now is a step to 24. So the question really is this: where do the exit poll predictions of this evening leave the opposition? Let's debate. Hours after casting his vote in Ahmedabad, the Prime Minister got down to strategizing for the bigger challenge, the 2024 general elections. With the Republic-PMARQ exit poll projecting a thumping victory in Gujarat, 128 से लेके 148 यानी कि 138 के हाफ पे मार्क है और उनको वोट शेयर वहां पे 48.2%, यानी कि हर दो में से हर एक वोट बीजेपी के लिए गई है और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई. and projecting that the BJP could buck the trend in Himachal with a return to power. 4.4% वोट बीजेपी के कम हुए हैं, मगर स्टोरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी तो वही 42 के 42 पर रही. कांग्रेस पार्टी को अगर और 3% वोट मिल जाते तो कांग्रेस सरकार बना लेती इजीली. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात मैंने कही, ये आम आदमी पार्टी कहां है? बिल्कुल 2.8% वोट है, यानी कि पूरा सफाया हो गया. In another 5 months, India will be into the election year, and if Gujarat, Himachal exit poll numbers are to go by, the BJP could be in the lead in the semi-finals to 2024. उस मॉडल के आधार पर ही आज देश भर के अंदर 8 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है. गुजरात की जनता को मालूम है कि पूरे देश में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका नींव गुजरात में है. The exit polls could come as a wake-up call for the opposition. The Congress seems to be nowhere in the picture on the ground as per the projections. अब कांग्रेस पार्टी को 8 तारीख के बाद अगर 2024 की तैयारी करनी है तो किसी भी कीमत पर अपने ऊपर लगा हुआ हिंदू विरोधी ठप्पा हटाना पड़ेगा और राष्ट्र विरोधी तत्वों से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना इसी तरह हम हारते रहेंगे. The Aam Aadmi Party has failed to make a mark so far. एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, खासतौर से गुजरात के मामले में. गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा. And with fragmented regional parties, is it advantage BJP for 2024? Let's debate. Sucharita is joining me on this part, and I actually feel terrible for the Lutyens media because, you know, the way in which they move from hope to hope, you know, and come crash landing. After the Vadra Congresses, you know, whatever they've been doing over the last few years, they then latched on to Mamta Banerjee. You know, they said, Mamta Banerjee is the hope. She brings us hope. And after the Bengal results, they said, no, Didi is going to see us through. And Manojit knows, for a while there was this, you know, Mamta Banerjee went to Mumbai, the lobby people met her, you know, whatever. Then when that didn't take off, then they said, no, Kejriwal is our guy. How did it plague you? I don't understand. Pardon Why me? is it plaguing you? No, it's not plaguing me at all. It's just an observation. Then they went to AAP. How Mamta Banerjee is going to Maharashtra is actually bugging you? I don't understand. Absolutely not bugging me at all. My question is, that then I'm talking about the Lutyens media, not you. Yes. Then they said the Lutyens lobby. Then they said that Kejriwal is the guy. Definitely bugging you. In that, no, not at all. The question of Mamta Di. Not at all. No. Then 1 second, Manojit. Let me. Absolutely. I'm just going to speak at the beginning, and I'll be unnaturally quiet. Psychologically, Arnab, you have been a student of sociology. It proves psychologically that you are scared of Mamta Di. You may continue to feel the way you want and speak the way you want. I'll just tell you one thing. I'm talking about people, you know. People then went to Kejriwal and they said that, listen, Kejriwal's the guy. Kejriwal will save us. Kejriwal is, you know, the political messiah we want. So I think, Smita,
Kejriwal's performance is of greater concern to them than BJP doing well or a 50-50 fight in. The problem for the lobby will be that unless Kejriwal emerges, what is going to be their line for 24? And these exit polls aren't really seeing a Kejriwal emergence in any way, are they? No, they aren't. Absolutely. I mean, the exit polls, it's going to be disappointing for the Aam Aadmi Party other than what has been projected for the MCD polls. The AAP was hoping to make some kind of an impact of sorts so that they can be reckoned with as a national party and they can put the BJP on a back foot. But certainly these polls have shown that the BJP juggernaut cannot be stopped. And the Aam Aadmi Party taking on the BJP in its own stronghold. And in the BJP, it became a ki ladai, you know, that they have to defeat the Aam Aadmi Party and show them the door. And I think the exit polls show that there is no option to Modi in BJP, and the people of Gujarat don't see any option to Modi. They might have their issues, but they feel in Modi Shah combined, in these sons of Gujarat is where they feel that their problems will be resolved sometime or the other, even if they do have some. So I think the BJP winning both states as per the exit polls, it just shows one thing, that nor is Mamta going to be the chief minister of any state other than West Bengal, isn't it? That doesn't mean that she is not going to try. So let's get down to it. You can try your psychological mumbo jumbo on Arnab. Please don't try it on me. It's not going to work. So let's talk about because Modi and Shah delivering a victory in Gujarat is obviously troubling you so much. You didn't even try in Gujarat. So why are you getting so upset? Firstly, I don't understand why you are so. I am not a psychological analyst as you are, so I am not going to try and analyze your mindset in trying and attacking Modi and Shah in Gujarat. This is a question about Aam Aadmi Party, not about Mamta Banerjee. So you pipe down for heaven's sake. This is not about your political party, right? And it was a question asked to me about Aam Aadmi Party. I think you should just wait for your turn. There is just one thing here, you know. He's not going to understand that he is not in this reckoning at all. His party is not in the reckoning anywhere. There's just one thing here, and Sucharita can take it from here. See, AAP is basically... we are in the reckoning? Why are you shadowboxing? Then you don't need to shadowbox. Why are you shadowboxing? We have not said that we are in Gujarat. What? What was this about shadow boxing? I didn't understand that. Okay, so the most active spokesperson on the debate today is someone who hasn't been part of these elections. She is discovering teams in Gujarat. We'll just take have we ever claimed that we are in Gujarat? Let at least Smita complete her point. Let at least Smita complete her point. We have time for this debate. People are really watching. You want to be right from the start. I was very humbly, I was asking her a question. She said that there is no alternative to Mr. Modi in Gujarat. I want to know, is he becoming the chief minister of Gujarat? He is apparently not. So who is the chief minister of Gujarat? Do you have a chief ministerial candidate in Gujarat? You did not have any chief ministerial face in Bengal last year. Everyone knows. You projected Mr. Modi as an alternative to Mamta Di, and Mr. Modi was completely trounced democratically by the people of Bengal. And then you are saying the same thing in Gujarat. No, I'm just saying. There is no alternative to Mr. Modi. I'm just saying, Monojit, Ratan Sharda is coming in on the debate on the left. Just a minute, please. Politics, not about Bengal politics. Excuse me. It's not. Right. As I understood the debate, it is about national politics. It is. Now, what are the national trends? Trends are clearly from the observation that your people made on the panel. Very interestingly, Harsh Sanghvi said, this election was not about Satta, it was about Sambandh. So understand that Modi has been able to create a kind of bond with citizens of India, with his people. That is the reason people unquestionably laud him, support him for whatever he undertakes. Point one. Point two, AAP clearly said we have nothing to lose, which means whether they can defeat Modi or not, whether opposition comes together or not, doesn't matter to them. It is their own politics of gaining some foothold somewhere. They will sacrifice any other common opposition ideal, which means there is no common opposition. If there is no common opposition, I want to analyze the face Modi anyway. Then there is also politics.
Gujarat clearly rejected the trade No, politics. we need to spend some time, Ratan Sharda, on the AAP. So I'll just bring it back to Sucharita. Sucharita, next 5 to 10 minutes, let's focus on AAP. Because I personally feel AAP is a media party. As in, if you see the coverage on the media, and I had once, I remember Mr. Reddy told me on a debate, you give disproportionate time to AAP. I don't, Mr. Reddy, but let me tell you, the Lutyens media spends as much time on AAP as it does on BJP. You would have a feeling that the AAP is a national party. Already has a full presence because you see everybody who lives in the 10 kilometer to 10 kilometer circle, you got to understand psychology. For them, AAP is everything. For them, a discussion on mohalla clinics in Delhi is a national debate. They're not understanding the country. They're out of touch with the country. It's like the people. Yeah, no. Let's get others also on the left, please. I'm getting Ajay Alok because he hasn't spoken. Mr. Reddy, everyone in, please. I'll tell you a couple of things about AAP. Can I get 1 minute, 30 seconds for some little analysis? I'm saying this. Sandeep Shastri, I want you to come in. AAP is today a Delhi party. AAP will win Delhi municipality. It will be thrashed in Gujarat. It cannot even win one assembly seat in a state which sends just 4 MPs to the Lok Sabha. Himachal was a great opportunity. Party goes down to 2%. I also want to tell you where Lutyens media is cheating the people of India. They are so AAP focused. Some of them should join AAP. Honestly, I don't know what they want. Some of these honorary members have already got unofficial posts in AAP selected bodies. They lost all the seats they fought all the seats in Telangana, Sucharita, in 2018. And they're still planning to launch a party there, which means in 4 years they have gone nowhere. They lost all the contested seats in the last elections in Telangana, hoping to achieve national prominence. So they keep hopping. Telangana, Goa, Gujarat, Himachal. And they've got this lobby behind them constantly in Delhi. Everyone on, oh, go for it, go for it, go for it. This time we're after you. This time you'll win. We're right there after you. Excellent. And it's bizarre today. It's bizarre today, Mr. Shastri. There was more discussion going on Delhi municipal elections than on Gujarat's in some Lutyens channels. It's almost they took responsibility. They won only how many seats did they get in Goa? 2 seats. Less than Congress. 10 times behind BJP, who won 50% of all Goa seats. They won 4 Lok Sabha seats in 2014 and only 1 in 2019. But the Lutyens media says, no, Kejriwal's the guy. On what basis, Mr. Shastri, you're the political analyst, you tell me. And then it's over to you guys. Yeah. Arnab. Can't hear you, unmute yourself, sir. Arnab, that's a set of wonderful points you made. I think the discussion on the national mood requires us to ask ourselves the question that is the national mood about Delhi? Yeah. Is the national mood about a section of Delhi? Or are we looking at Gujarat, Himachal, and maybe MCD to tell us as to where the national mood is building up? I think the polls that you have come up with and all other polls are clearly, categorically making the point that the BJP seems not just home, but way forward home in Gujarat. The AAP has tried, but I think as is being shown by the exit polls across channels, the Congress is still emerging as number 2 and may have done a better number 2 if there was a two-corner fight in Gujarat. So I think there is no question, no shadow of doubt from the exit polls as to where Gujarat is heading. Himachal seems to be a tougher fight. And here again, a three-cornered contest may have resulted in or could result in an advantage for BJP. MCD has its own specific politics that we need to talk about. So I think when you are talking of a national mood as of this evening, I think there seems to be a national mood which clearly puts the BJP at an advantage. No doubt. Of course, 18 months is a long time in politics. The Republic TV has time and again shown that one day can be a great amount of time in politics for a
advantage. But as of today, yes, there seems to be a clear advantage for the BJP, and one would be in a world of illusion if they were to think otherwise. Sucharita. May I come in, Arnab? And I think it's also important if you could just go across to Sanju Verma. Sanju, do you think it is really, there is an effort not just by the Aam Aadmi Party but also certain sections of the media to portray Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party as the opponent to Narendra Modi and the BJP for 2024? There is a clear-cut effort, and do you see that? First and foremost, when my we're talking apologies, about MCD elections, when we're talking about Gujarat, Himachal and this as a step to 2024. Yes. First and foremost, my apologies. I missed the introduction, especially Arnab's introduction. I've been doing marathon debates. My apologies for joining in late. I just want to say a couple of things to you, Sucharita, and to the viewers of Arnab Goswami's show. Arnab is very right that there is this constant narrative that is being built by vested sections of the media, and I'm not going to hold back my punches, that Arvind Kejriwal has arrived. Arvind Kejriwal is on record stating इस बार बीजेपी गुजरात से साफ हो जाएगी. And I just want to say one thing. People need to acknowledge the fact that today, under the double engine sarkar of Narendra Modi, anti-incumbency has actually turned into pro-incumbency. And without taking too long, for everybody who waxes eloquent about the Gujarat model without really understanding basic arithmetic needs to know Gujarat today has a GSDP of more than 19.4 lakh crore, accounts for 20% of India's industrial production, accounts for 28% of India's merchandise exports, accounts for 40% of India's seaborne trade. Of the 6 crore MSMEs that are in the country, more than 4.7 million people are employed in these MSMEs from Gujarat alone. But go into the political... Gujarat. Go into the politics of it, Sanju. And just I'll quickly come to the politics of it. Yeah. The politics Mr. of it Reddy is simple. and we'll have Mr. The Reddy politics of it, I'll just take 20 seconds. The politics of it is simple. While the exit polls predict that Himachal Pradesh will be a closely contested fight, I beg to differ. We are romping home to victory. We need 35 seats to win. We will get between 38 to 40. And I think this again proves that Priyanka Gandhi Vadra is a lost cause. She campaigned in Himachal Pradesh, but she failed to connect, and her campaign refused to resonate with the voters there. But then it should have been so easy. I always say, I began by saying, Sanju, I began by saying today, Sanju, that I'll tell you my analysis of Himachal. Himachal is actually, I'll tell you, Ajay and Sanju can be your... Yes, it's the Congress's election to lose. There is no question of the Congress losing Himachal, Ajay. Congress has to win Himachal by historical record. Gujarat is a different story because for 27 years BJP has been entrenched there, it has been in power. But I would be shocked if the Congress were not to sweep Himachal and not win. It has to sweep Himachal because the Himachal voter moves this way or that every time. So if the Congress is in a 50-50 situation, it's really bad news for the Congress. I think the Congress should be winning with at least 40 seats. If that does not happen, what is revealed? Ajay Alok versus Pankaj. And then I'll go back to national picture. Ajay. Arnab, I'll tell you, with this all exit polls coming up and whatever the final tally will come up on 8th, one thing is for sure, what is reflecting the country's mood? Well, BJP is not losing its popularity, nor the Prime Minister. But here, Congress is losing its sheen. MCD wiped off. Himachal, you are giving that up 2.8% votes. Who are these votes? Which are these votes? These are anti-Narendra Modi, anti-BJP votes, which AAP has gathered. Just add it to the Congress kitty, and the Congress gains around 45%. In Gujarat, 15.8% vote. What are these votes? These are anti-BJP, anti-Narendra Modi vote. I am predicting a future of 10 years from down the line, which BJP has already foreseen it. And they are working right from today.
that in coming 10 years, AAP will eat into Congress. And BJP will have to ultimately fight Aam Aadmi Party in few states. Because Congress is losing its sheen. Just imagine a party winning 77 seats is coming down to 19. Courtesy Aam Aadmi Party. Because the trust in the opposition vote, the trust factor, the Congress is gradually losing it because of the reluctant politician who's heading the Congress. Because of the reluctant family who's not interested in doing politics. He's not reluctant at all now. And they are being faced by He's not reluctant at all. He wants to be Prime Minister. He's positioning himself. Arnab, may I just add to what Ajay Alok said? You don't get the Prime Minister now. You don't. May I quickly comment? Okay, let Sanju speak. Yeah. No, I want to. Sanju, just wait a minute. I want to get Pankaj and Mr. Reddy to come in because they haven't spoken at all. See, Pankaj and Mr. Reddy, I really believe that this country without an opposition is not in a good situation. But Mr. Reddy, you see the reality. 2019, okay? The lobby, the Lutyens lobby, you know what they said, and they they believe in themselves. The amazing thing about the Lutyens lobby, Mr. Reddy, I'll tell you, they say something, they make themselves believe it. Then they meet in one party, then they go to some coffee shop, then they go and sit in somebody's drawing room, then they go for some little afternoon lunch, and they talk to each other, and they make themselves believe. BJP won't do well, BJP won't do well. What happened? What happened in 2019? And they have this poisonous touch, you know. Whoever they support loses badly. Sucharita, let me tell you, you covered UP closely. In UP, they said this time, Akhilesh is finishing them off. And Samir got so excited. Samir is national spokesperson of Samajwadi Party. Samir, before 2019 elections, you just needed to go from Noida, right? Hop across and go to Lodi Garden. Everybody in Lodi Garden had made Akhilesh win. Everybody between Lodi Garden and Nehru Park, they were convinced. They wrote articles analyzing Akhilesh's victory. Why are you looking so serious? No, I'm telling you. And what happened? In fact, I'll tell you, I have a very good experience of this, I'll tell you. Because you see, Uddhav Thackeray put me in jail. When I was in jail, Ajay, I'll tell you, when I was in jail, you know, I saw the results of the Bihar election. Bihar election, they said, you remember what they said, Mr. Reddy? They said, this time though in Bihar, we are done. We are sorted. Congress Alliance, Mahagathbandhan is back. My point is, you think about Uttarakhand. You think about how the BJP won Uttarakhand. You think about how the BJP won UP. You think about 2019. You think about Bihar. You see actual reality. Mr. Reddy, are you understanding? Samir? Exactly. Actual reality, every victory of the BJP has been record-breaking. And you can't just say, oh, Modi factor, Modi factor. Now, yes, Mr. Reddy, over to you, please. Yeah, thank you. No. Arnab, yes. first of all, you are talking about the national mood. This is the reflection of national mood. One state in the west, which is a home turf of Modi and Amit Shah, and one state in the north, which is a close contest between Congress and BJP, and one municipal election. Probably AAP will be winning it. Which municipal election? Why are you people going on about what municipal analysis, election analysis? No. Since did I ever do analysis of Hyderabad municipal elections? I saw three. No, what are you doing? You know, this Lutyens obsession. I will talk about my municipal election next time. We should also do analysis of a housing society election. No, we're talking about the national picture, sir. What are you doing? There are three predictions. There are three exit polls which have come up. Two have come. I don't know which is the third. I've never done an exit poll on a municipality. I've never heard of one. Fine, okay. Except Lutyens media, I don't know what's going wrong with them nowadays. Today it is two state election exit polls have come. Two states. Okay, let me come to your two states only. One state in west, one state in the north cannot just reflect the national mood. Okay. While you are talking about Uttar Pradesh, Uttarakhand and other states for your convenience, I also would like to remind you that what happened in Bengal.
Bengal, everybody said. I don't know what about details media, but all other predictions have come up saying that, Madam, you spoke for a long time. Kindly No, but listen Mr. to us. Reddy, why does a victory in UP and Uttarakhand become a Bengal, victory you of have predicted a convenience? huge win. Mr. Reddy, I think I am not trying to belittle the victory in UP. Denial, sir. I am saying why would you call when it a victory you're talking about one side. convenience? No. I am saying when you're talking about these 4 or 5 states, you conveniently forgotten Bengal, Kerala, Tamil Nadu, where Honorable Prime Minister also has gone there for hundreds of road shows and public meetings, but he could not show any impact. Even in Telangana in 2018, No, that's Prime absolutely Minister, right, as well Mr. as Reddy. Shah But when we are speaking of the national scene, many we're public talking about meetings, the national they could get only scenario. one assembly seat. Who has My emerged point here, as the biggest electoral let me complete. force in the country today, sir? I think let's just look at it that way. No, I think we need to look at it that way. I go specific. Can you allow me to finish? I go specific. Can you allow me to finish? No, Mr. Can Reddy. you allow me to Mr. finish? Reddy. Mr. Can Reddy. you allow me to finish? Mr. Reddy, my one point. Can you please allow me to finish? Mr. Reddy, tell me one thing. Let's be honest with each other. Mr. Reddy, remember one thing. I'll give you a picture. Visakhapatnam. Narendra Modi visited after 2 years. Isn't it true there were 2 lakh people to attend a public meeting? The meeting was organized by the YSRCP government. Next, now, Mr. Arnab, I need to respond to him, please. Even when there Modi is a come Modi to factor. Hyderabad. Okay, I'll ask Even Monojit. when Modi come to Mission Bhagirath inauguration, lakh of people have come. Let me finish my statement, Arnab. One thing is clear. See, all these predictions, okay, even in 2017 in Gujarat, nobody predicted less than 122. You can't allow this guy a monologue. And more than let's give the opposition some space. My question here is, let them be optimistic. Let them be, telling their own story. But this is not going to reflect the national mood having 17 months more for the national elections. What is the national Parivartan which Amit Shah is speaking. If we could just go across I am to not Professor rappling, I am Mandal. speaking facts. This You is are not confused. let's get- allow this man to make allegations. That One minute. Sanju, let the allegations be made. It's not good to you. May I come in? This man has been making reckless allegations at the BJP. Allow me 30 and I want to make this very clear, Professor Mandal. It is not reckless allegations. You will have to Sanju, where is accept the that allegation today here? in the I country, have just said facts. Narendra Modi You are not seems able to to be, bear the has facts. once again emerged as one of the biggest electoral force. It's the biggest electoral force in the country. He is And retaining as his so own much so turf. that the biggest He is retaining his electoral own state. issue in Gujarat was Narendra He is Modi. retaining People the were same coming out to government vote so that which was running Narendra for the Modi past and 27 BJP don't years. lose. I don't know, Arnab, why you They can't don't give me lose. some time to speak. Professor Mandal. Now, if One by the same logic, if you go by the same logic, national elections, you say that. Just 1 minute. it reflects No, you don't know. I Can I was telling you speak, because we were on please? the ground, sir. If you don't We talk were about watching go it by from the Bengal. same logic I that was on the ground in Mr. Modi was the factor in Gujarat, then by the same logic, I can tell you last year, not just in Bengal, but even in Tamil Nadu, he lost very badly. Especially in Mr. Bengal and Monoji, Tamil Nadu. in Kerala. BJP didn't lose in Bengal. Two of the biggest states in the country. Okay, Mr. Monoji. One minute. Bring me in, please. One second. Monojit, a counter to you. Monojit and Samir on the right, please, have not spoken, and I'm anchoring the program. I want to anchor the program. I want to anchor the program, Mr. Mandal. Mr. Mandal, I know you want to anchor, but I won't let you. Ratan Sharda, please don't add to this. Just give me a moment. Okay, let's say. I'm going by your logic. If the state's assembly elections are fought on the image Wait, of Sanju, wait. Let me ask the question. Wait a minute. Then he lost terribly in the last year. See, okay, in 2 elections. Mr. Mandal, let's say for once. And it's very Mr. Mandal, did you hear me take your name? Now that's a cue that you should. Okay, Mr. Mandal. Okay, Mr. Mandal. Now this polite approach is not working, so I'll go full on. Now my question to you, Mr. Mandal, is this. Let us go by the assumption. Let us go by the assumption that the BJP is a very fascist party. Narendra Modi is a terrible person. But listen to me.
1 minute. Can I please? Ultimately lost in Bihar as well. No, I don't want to. No, Mr. Mandal, why? See, I'll tell you. Of all the questions I asked today. He's going to lose Karnataka next year. 1 minute, just 1 minute. Ajay, he's going to lose Rajasthan next year. Okay, now when you stop, I'll continue. He's going to lose Madhya Pradesh next year. Okay, I'm getting up. I won't anchor if you continue like this. This is so bad. So that terrible. will be the national mood. No, I've given an example of last year. I'm giving you the history of future. Okay. Now I have to. People, should I start a poll? Then 2024. Political analysis is Bharat versus Bharatiya Janata Party. What kind of political analysis is this? With me. You keep getting annoyed with the BJP, but I'm not annoyed. I'm just trying to get a word in edgeways. You have been appointed by the BJP for JDU. Why are you talking even on TV, sir? What JDU? What are you doing? Arnab, why can't you Why getting personal with Ajay? Even beyond reasonable doubt. Smita, what's going on here? He's getting 9:45. It's 10:30 in the night and he's becoming insane. Nothing else. I mean, he's talking about Bengal. Okay, I'm bringing Smita in. Smita, you had a comment, Smita. Come on now. I'm terrible. Sucharita, come in, please. Why don't leave me like this, Sucharita, come on now. Sucharita and Smita come into the debate. I want to make a point, and please. Yeah, Smita, come in, Smita. We're giving you full credit to Mamta Didi for Bengal, but let's look at the national picture, Professor Mandal. We're giving full credit to Mamta Didi for Bengal, but let's look at the national picture, and I'm sure Mamta Didi is not going to take it. No, if he wants to, Sucharita, Smita come in, Smita and Monojit. I'll take him on right now. Smita, in that case, my question is, Monojit, increase the television audio in his house, please. Somebody increase the audio in his house. I don't know who's he speaking for. Why is he going to Tamil Nadu? Now suddenly he's become a specialist on Tamil Nadu politics. Because he doesn't want to talk about Bengal. Tamil Nadu, Bihar No, next is what? Where are you going to? Kashmir now? He doesn't want to talk about Bengal. That's what you are saying. He doesn't want to talk about Bengal. No. In Bengal, I don't understand who Smita, he doesn't want to tell me why almost half the seats in Bengal in the 2019 elections went to the BJP. Let him ask why almost half the seats in the 2019 elections in Bengal went to the BJP. Out of those half, two have already jumped ship. No, I'm asking you why 18 out of 42 seats went to the BJP. Why you lost? Why you lost 18 seats? You tell me. Very soon you'll be down. You tell me why did you lose 18 seats? Abhishek, also, no. Why are you asking him about Mamta? He doesn't want to talk about Mamta. Now you're 16. He doesn't want to talk about Mamta, so don't ask him about Mamta. No, ask him about Aam Aadmi Party. He only wants to talk about Aam Aadmi Party. Why? Because Mamta Banerjee has given up the fight for 2024. She has given up the fight for 2024. She is no longer the leader or projected leader of the united opposition for 2024. Monojit, I think you should shift to Aam Aadmi Party. You will probably either shift to Tamil Nadu or shift to Aam Aadmi Party. I think that is what is necessary. No, you need to go to Aam Aadmi Party or you need to go to Tamil Nadu because Mamta Banerjee is not the united opposition's candidate for 2024. She has given up the fight for 2024 already. That is why she has told you to come on Arnab's channel and talk about Tamil Nadu. Not your Rottweilers, CBI, ED. Rottweilers? The moment you lost, you cannot digest Bengal. Rottweiler Sanju is on the debate right now. CBI is a Rottweiler. This is crazy. CBI is a Rottweiler. You are still unable to digest Bengal. That's why I was talking about Tamil Nadu and Bihar. Parrot, it has become a Rottweiler now. CBI, ED. You are not able to moderate the debate. This guy is speaking utter gibberish. Okay, you now give the BJP a chance to rebut. Thrown us on the opposition, especially on the TMC leaders. The caged parrot has now become a Rottweiler for you. You are driving them. Can you rein this man or not? It's very difficult. Believe me, it's very difficult. Right now, Monojit is not listening. Okay. Right now, Monojit is not listening. I just before Sanju, 1 minute, please. May I just say that I want Pankaj on the right? Sanju is on the left right now on the debate. Yeah. 1 second. Please stop For the BJP.
for the BJP, do you think sometimes that you're taking things a little too easy, assuming that you're making inroads, and that parties like the Aam Aadmi Party may be doing it gradually, and you may be happy that they are not being able to convert into seats right now? But let me tell you, for example, you have swept Assam this time, where Himanta Biswa Sarma leads an interesting coalition. But it took you 15 to 20 years of this kind of vote share, 15%, 18%, 19%, to come to that situation. Do you think this sustained vote share that the AAP is gaining, though not converting to seats, might help them in the long term? Incrementally. Arnab, let me be very clear with you. BJP is a relatively young party. In its present form, it came into existence on the 6th of April 1980. We are barely a 42-year-old party. Now, Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party have been in existence for 10 long years. They contested Goa this time. They barely got 6.3% vote share and 2 seats. They contested Goa last time also, and they managed to get 6% vote share and got 0 seats. Now Kejriwal is on record saying इस बार तो बीजेपी गुजरात से बीजेपी का सफाया हो जाएगा. The exit polls show they will end up with 23 or 24% vote share. They may get 2 seats, they may get 9 seats or even 10 seats. My simple point is this: why is the media making Arvind Kejriwal into a demigod when this is the same Kejriwal who in Surat won 27 seats, but the media refuses to acknowledge he lost deposits in Rajkot, all their candidates lost deposits in Ahmedabad, all their candidates lost deposits in Bhavnagar, all their candidates lost deposits in Jambusagar, all their candidates lost deposits in Ahmedabad. There were the local body elections in Gandhinagar in last October. Out of 44 seats, BJP won 41 with a 93% strike rate. How many seats did the Aam Aadmi Party win? It got just 1 seat. That's a strike rate of 2%. The limited point I'm making is Arvind Kejriwal is a hoax. There is nothing called the Kejriwal model. The Kejriwal model manages to get the BJP spokesperson calls Arvind Kejriwal a hoax on the program. That itself is breaking news. Arvind Kejriwal is a hoax. She says he's a hoax. The Kejriwal model is a hoax. Hoax created by BJP. I want to ask you one Hoax thing, created by BJP, he says. 1 minute. 1 minute. Responding right now. Listen to him. He's countering you. Pankaj, go ahead, counter her. Anyone can see through that there was a tactical understanding between Aam Aadmi Party and BJP in Gujarat and in Himachal also. But in Himachal, Kejriwal realized in the beginning that he has no scope. So he packed his bags. So please don't jump to any conclusion on the basis of the exit polls of these 2 states which have only 30 Lok Sabha seats. As per exit polls. And you are sitting here and giving me a lecture on BJP's prospects? Your Priyanka Gandhi. No, we are sitting here to listen to your lecture, to hear your lecture. Himachal. Priyanka Gandhi Vadra said, "Ladki hu, lad sakti hu." You got just 2 seats in Uttar Pradesh. You said we will win Manipur. You were reduced to 5 seats in Manipur. Aam Aadmi Party is BJP's B team. It is still BJP's B team. And there was a clear-cut tactical understanding between BJP and Aam Aadmi Party. Okay, opening this up, Samir Singh is spokesperson of the Samajwadi Party. Samir, as we move closer to 2024, is there still time to make an alternative strategy? Let me bring Ajay Alok in on this, please. Ajay Alok, do we have enough time? I mean, as an opposition leader, is there enough time to build a strategy to take on the Modi, the Modi factor, or even bring in a national strategy, or is everything lost for 24? Definitely. 24 they shouldn't think. 24 is gone. Ajay says 24 is gone. I think that's premature to say that 24 is to plan gone. for 29. Because as rightly pointed by one of the panelists, 15, 16, 17 months is a long time when it comes to politics. We have seen the national mood changing in lesser time. If we see the 2014 general elections, then what happened with the UPA 2 government back then, so that was something that nobody could have predicted.
So saying that all hope is lost is too premature, especially in a volatile situation like today when our country, whether we talk about, I'm again digressing from the topic, the current topic, but still, yes, if you talk about the economy, if you talk about rising inflation, if you talk about the unemployment, if you talk about the dipping INR as compared to dollars, then all these points will make an impact definitely, and we can't. It's too soon to say that everything is lost or the BJP is all set to come back in 2024. Yeah. Open your video again. But haven't we as seen far that? as strategy, is concerned, we still have a united alliance that what needs to be done as in the strategy needs to come up. Yeah, exactly. We do have Samir, you're saying you still have time for a strategy. Ajay Alok, in the last 8 years, we've seen that the opposition has been trying very hard to form a strategy which is to counter Modi, and they've not been able to devise one. And now Samir says the 17 months is long enough to devise a strategy. Well, they have been trying to stop Modi and BJP, and they did try it in 2019, and that was the formidable alliance of Bahujan Samaj Party and Samajwadi Party, which carried the chunk of Uttar Pradesh. Nobody could have thought that they will lose, but that happened. What happened today in Rampur Assembly constituency, in Mainpuri, what we are seeing, I mean, Akhilesh Yadav is on a back foot when he says that this election is gone. When Azam Khan starts crying, they are not in the same page with the Congress party. Don't forget that the Congress is the only party right now which can fight BJP nationally. But it's not, you see, that's the point. Congress is losing its sheen. Ajay, it's not sheen. Because of lack of leadership. No, it's not sheen. I want to bring in Smita here. Just one line, Smita, I'm handing it over to you. I don't think it's sheen about the Congress. I think it is about the fact that there is the Congress under Rahul Gandhi believes that NGO types, Medha Patkar, that's what I'm saying, because of the leadership. YouTube comedians are the way to do politics. I think it's not. I think there are genuine problems with. They don't understand India. I'll put it as simply as that. They don't understand the heart of the country. They're in their own la-la lands. They don't understand. They don't. There's no doubt about it. They don't understand electoral politics. They don't understand electoral politics, and I don't understand if you don't figure out electoral politics, why are you in the business of fighting elections or winning it for your party? You know, before 2024, I want to say this, before you bring in Dr. Shastri, I just want to bring one point. Before 2024 is 2023. And the BJP is not going to rest easy. There's Karnataka, there is Rajasthan, there is Madhya Pradesh, and there is Chhattisgarh, there is Tripura. And in all this, it is basically the BJP versus the Congress. Yes, regional parties might be there, like saying Karnataka, but they are not significant. And in all these states, we will see whether Rahul Gandhi's Bharat Jodo had any impact or not. Has he managed to bring his cadres together, patch the differences between a Gehlot and a Pilot, between a Siddaramaiah and DK Shiv Kumar to fight the election? Where are they ready in these elections? Now Manodeep is going to become Karnataka specialist. First he was Tamil Nadu specialist, and now he's going to talk about Karnataka elections. Can I just complete the point before he starts about Karnataka? I think, you know, what is important is that what Ajay was saying is that, you know, for 2024 the other parties have to get together. You don't see that happening. No, I just saw this picture. I want to run the pictures full frame and then go to Shastri. No, you just leave Bengal, please. You cannot talk about Bengal anymore. Can I run the pictures of Narendra Modi this morning full frame? And then I'll get a view on this. See, this is the Prime Minister. And the Prime Minister has come out to cast his vote. And then he walks across and then he gives a media bite. And all he says is, I want to thank the people. I want to congratulate the Election Commission. And you had the Congress going ballistic. Oh, Prime Minister is campaigning. I just do not understand. Rahul Baba was nowhere in the campaign. Right? And the party president called Narendra Modi Ravan. Then Narendra Modi walks 10 steps. And they go crazy. They say, oh my God, Election Commission rules have been violated. So that really tells me, Sandeep Shastri first and then Sanju, that really tells me they are psyched about Narendra Modi. They're just psyched about him and his possible impact and his growing popularity. Sandeep, can you unmute? Arnab, politics is about trying to make every
opportunity count. I think there is no denying the fact that as a voter, the Prime Minister goes to cast his vote. And this has been done by every political party which has been in power. People talk about something similar done by AAP leader in the MCD thing yesterday. So I think, and in the past, you see, there are privileges of being in power. There are privileges of being in a position of power. And those are used across the board. And to see them as a violation of rules, to see them as a violation of a code of conduct, I wish that better things had been chosen to be able to I agree with you on this. Now, you have a choice. So, sir, one Mamta appeal to the minorities, SCs and STs. Why did the election commission ban her? Is minority is a religion? She's countering. Religion in this country? Okay, she's countering. We still want an answer. While Mamta was appealing to the STs and minorities, the election commission banned her because she was appealing to a particular religious community. Okay. I want to know under which provision of law minority is a religion in this country. Okay, you made the point. Sanju's responding. It's an interesting run-up to the national elections, ladies and gentlemen. Very fascinating run-up. Sanju. Okay. Arnab, please ask this man to stop rambling. I did not heckle him. No, go on. Don't stop. Limited time. Continue. The election commission has to apologize to Mamta or they have to justify that. You know, I don't understand. Why can't you know the fader of panelists when they Continue. Yeah, Manojit, we heard you. Arnab, have you seen the irony of it? When BJP raised its tally from 3 seats to 77 seats in Bengal, which is a 2,466% rise. TMC dismissed it. Oh, you got 77 seats, so what is the big deal? I want to ask TMC, outside Bengal, does Mamata Banerjee have any national footprint? The answer is zero. Outside Telangana, does TRS have any footprint? Answer is zero. Outside Uttar Pradesh, does Akhilesh Yadav have any national footprint? Answer is zero. The point is BJP is the only pan-national party today. Mamata Banerjee is not a national leader, nor is she fit to be one. KCR is not a national leader. Akhilesh Yadav is not a national level leader. Tejaswi Okay, then. is not a national leader. Okay, then on that fascinating note, with a request to all Republic viewers, remember viewers, it's the run-up to the general elections. And when you know it's election time, it's Republic time. Election time, Republic time, election time. I shall see you 9 o'clock tomorrow and very, very early in the morning on the 8th. So we seek your support and your viewership. It's so energizing, bringing the elections to you. Till tomorrow, 9 o'clock. Good night and goodbye. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests.
YSRTP Chief Vice Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the 2 states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, खासतौर से गुजरात के मामले में। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा। फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम्प लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to
to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus, post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic-PMARQ exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief YS Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. YS Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Good evening and welcome viewers, and here is my analysis of the exit polls
the PMARQ poll on Republic and the overall trend. I shall put forth my views in 6 points. 1. Most importantly, the Gujarat sweep for the BJP with the party projected to win around 50% of the vote is incredible. It's a perfect stage for a 2024 campaign. It puts the BJP in a very strong position and gives a distinct upper hand to the BJP in the run-up to 24. 2. Himachal. The Himachal cliffhanger, in my view, will swing one way on result day. Some exit polls say it's too close to call. But here's my analysis. The Congress should have put in a stronger effort and won more convincingly, given the fact that Himachal historically swings between the BJP and the Congresses every 5 years. So this is the Congress party's election to lose. I mean, there's no way the Congress party can lose Himachal. But even then, if it's 50-50, that shows how weak the Congress is. If the BJP wins in Himachal, I repeat, if the BJP wins in Himachal, then it's complete disaster for the Congress party. If the Congress wins but does not win over 40 seats, then there is no reason to see any overall comeback for the Vadra Congress in Himachal. So don't let the Lutyens media feed you a story about, sliver of hope in Himachal. Himachal, the Congress is destined to win given historical record. Point number 3, ladies and gentlemen, Kejriwal. He's in serious trouble because he's raised the hype so much. The Aam Aadmi party is in serious trouble. If the exit polls are correct, then the party is actually stronger in the media, specifically the Lutyens media, than on the ground. After all the hype, the party not crossing even 20% vote share in Gujarat means it's very, 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 very far from having a real national impact. And I'm not talking about presence on news channels. I'm talking about presence on the ground. 4th, the very poor performance, in fact, shatteringly destroying performance of the Aam Aadmi party in Himachal. The party is reduced to around 2% of the vote. Means that this party, the AAP, for all the hype, has been completely unable to establish any effective electoral leadership beyond Kejriwal. And Kejriwal has limitations of Delhi. Kejriwal has to have leaders who deliver votes on their own, or at least galvanize an election strategy. As of now, he doesn't have it, so I think Kejriwal is in big trouble. He's got to refocus. 5. Rahul Gandhi. His focus on rebuilding his image in his way through his yatra is damaging the Congress. The largely urban and social media-led, promoted social media Twitter campaign on the yatra, YouTube campaign on the yatra has zero impact on voters. Gujarat results may be that wake-up call. And 6, there is also a message to the BJP. Himachal, whatever the result, is not a sweep for the BJP at all. We are projecting a just about victory. Some are saying too close to call. Now, the Himachal result, a scare for the BJP or a defeat, is a reminder that they have to prepare for anti-incumbency at the state level better. They can't only depend on the Modi factor. The Modi factor pulls them through in the most difficult circumstances. But depending on that alone cannot always work. So without doubt, the BJP will be looking at the Himachal results very, very closely. Ladies and gentlemen, I have one more thing to say. With these exit polls and the results on 8th, we as a nation have entered the pre-general election phase. We're going to see a huge campaign. The next year and a half, we'll see the whole country hooked on to news, politics, to news channels. And I sincerely hope, in fact, I'm totally sure, I'm convinced that you will make Republic your choice. And that's my key focus today. The exit poll results, I'm analyzing that 9 to 10. I'm looking at the national picture 10 to 11. It's going to be a great program, ladies and gentlemen. It's going to be a great debate. It's going to be a fantastic, fantastic series of news reports I have. And here are the headlines this Monday evening on The Debate Tonight. The Republic-PMARQ exit poll predicts super sweep for the BJP in Gujarat. Will the party break its own record? Almost a 50% incredible share in Gujarat. The Aam Aadmi party could be restricted to just single digits. A close fight with the BJP narrowly in the lead. Will pro-incumbency help the BJP break the jinx in Himachal? From Himachal to Gujarat, who is the bigger loser, the Vadra Congress or the Aam Aadmi party?
Are the projections a setback to the Aam Aadmi Party's national plans? Is Team Kejriwal effectively restricted to being a Delhi NCR party? And with projections showing a possible double victory, is the BJP clearly leading nationally in the run-up to 24? And ladies and gentlemen, the exit polls are in. The indications are clear. The BJP is sweeping Gujarat and Himachal. It's a neck-and-neck fight. The numbers are clear. The poll of polls is now in. Take a look first before we begin the debate, the bigger picture tonight, at what the projections are, and then we shall debate. It's been a high-profile battle in Gujarat. A hotly contested fight in Himachal Pradesh. The polling has ended and the projections are in. The PMARQ exit polls predict a record-breaking win for the BJP in Gujarat. पिछली बार 99 सीटें मिली थी, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का 128 से लेके 148 यानी कि 138 के हाफ पे मार्क है और उनको वोट शेयर वहां पे 48.2%, यानी कि हर 2